Government of India. A very warm welcome. आपका हार्दिक स्वागत है. Also welcoming on stage Mr. R.J. Agarwal, Chairman FICCI, Crop Protection Committee and Chairman Dhanuka Group. Warm welcome to you, sir. Welcoming Mr. Manab Majumdar, Deputy Secretary General FICCI. Once again requesting everybody to be seated, all mobile phones put on to silent mode. Thank you. Namaskar and good morning. Guest of honor, Shri Vijay Samplaji, Honorable Chairman, National Commission for Scheduled Caste, Government of India, eminent dignitaries on the dais, special invitees, officials from the ministries, distinguished policy makers and regulators, participants from the industry and academia, farmers and stakeholders, delegates, respected members of the press and media, ladies and gentlemen. I have the proud privilege today in welcoming you all to the inaugural session of the 11th Agrochemicals Conference 2022, organized by the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, FICCI, which is being supported by Department of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, and Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, on the theme Policy Landscape for Flourishing Agrochemicals Industry. And ladies and gentlemen, as is customary, we begin by lighting the ceremonial lamp and invoking the gods and goddesses to guide and bless us for the success of our endeavors. May I now request our guest of honor and dignitaries on the dais to kindly do the honors of lighting the ceremonial lamp and formally inaugurating the 11th Agrochemicals Conference 2022. And ladies and gentlemen, also joining us virtually in this session is Dr. Soumya Mitra, APAC Regional Marketing Director, Corteva Agri-Sciences Agrochemicals. We also welcome you, sir. Thank you, sir, for doing the honors of formally inaugurating the conference. Ladies and gentlemen, I would now request Shri R.J. Agarwal to kindly do the honors of welcoming our guest of honor with a green initiative. The Green Certificate is the green initiative of FICCI, where they plant trees for tigers at Sundarbans National Park at West Bengal. Requesting Shri Agarwal to kindly welcome our guest of honor. Thank you very much indeed, sir. Shri R.J. Agarwal, Group Chairman, Dhanuka Agritech Limited, is a passionate leader who has established himself as the architect of the Dhanuka Group by mastering many domains to see his companies grow step by step from scratch. He is committed towards food security of the nation and is concerned for the betterment of farming community. Graduated from Sri Ram College of Commerce, Delhi University, with BCom honors in the year 1968 and with established family business of cloth. He persuaded his passion of creating the enterprise for agri community. And ladies and gentlemen, I now have the proud privilege in requesting Shri R.J. Agarwal ji to kindly begin the proceedings of the conference with his welcome address and the opening presentation. Please put your hands together to welcome him.
मित्रों, मैं सबसे पहले फिक्की की तरफ से और अपनी तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं 11th एग्रोकेमिकल कॉन्फ्रेंस में, जिसकी थीम जो हमारी है पॉलिसी एंड रेगुलेटरी लैंडस्केप ऑफ एग्रोकेमिकल्स इन इंडिया। सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि विजय सांपला जी, जो चेयरमैन हैं शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन के, और बहुत उनका एक्सपीरियंस है। वो इससे पहले होशियारपुर से एमपी भी रहे हैं, पिछली मिनिस्ट्री में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर रहे हैं। तो मैं उनका खास तौर से हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। फिर आज के बीच हमारे बीच में बहुत से वैज्ञानिक हैं जो पूरे देश से आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच किसान भाई हैं, हमारे इंडस्ट्री के कलीग हैं, कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और ख़ास तौर से मीडिया। मैं सभी का अपनी बात शुरू करने से पहले सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और उसके बाद आज बात हम एग्रोकेमिकल्स की कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट हमारा काम एग्रीकल्चर के साथ होता है। मतलब मेजर एग्रोकेमिकल्स का यूज एग्रीकल्चर में होता है। जैसे आप और हम बीमार होते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही खेती के अंदर एग्रोकेमिकल या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग पेस्टिसाइड के बारे में गलत परसेप्शन रखते हैं। तो आज जो सच्चाइयां हैं, वो इतने लोग यहाँ पे हैं, हर फील्ड से लोग हैं, तो आपस में चर्चा करके आप सच्चाई को समझ सकते हैं और मेरे प्रेजेंटेशन में भी आपको कुछ सच्चाई जानने को मिलेगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी का, उनकी लीडरशिप में एग्रीकल्चर में, और हमारे कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए और उसमें लेटेस्ट रिफॉर्म है ड्रोन्स का। आज विश्व में जहां ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे थे, अभी रिसेंटली ड्रोन्स के पेस्टिसाइड स्प्रे की पॉलिसी क्लियर की है। और जो दूसरे बहुत से काम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना जिसका फायदा किसान को जाता है डायरेक्ट, सॉइल हेल्थ कार्ड, ऐसे कई और भी बहुत सी स्कीमें हैं जो इस सरकार ने किसानों के हित में शुरू की है। इंडियन एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है देश में, हम सब जानते हैं। वी आर द सेकेंड लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट we produce 7.39% of the total global agriculture output। ये हमारे लिए गर्व की बात है और वैज्ञानिकों के लिए कि पूरे विश्व में जितनी क्रॉप्स नहीं उगाई जाती, हम 544 क्रॉप्स हमारे देश में उगाते हैं। और हमारा आरेबल लैंड 156.42 मिलियन हेक्टेयर है, विच इज 11.2% ऑफ द वर्ल्ड आरेबल एरिया। India's total annual utilized water resources is 1121 BCM and India has 4% of the world availability of fresh water. By using minimum pesticide and fertilizer, focus on the word minimum, still India is the second largest producer of the agriculture produce. 16% of the world population reside हमारे देश में रहती है, जबकि विश्व का सिर्फ 2.8% ऑफ द वर्ल्ड लैंड हमारे देश में है। ये एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी का 1980 से आप देखें, जहां 38% था, वो अब करीबन 20% के पास आके स्टेबल हो गया है और सर्विस सेक्टर का शेयर काफी बड़ा है। आज विश्व में जहां सिर्फ 6.4%
एवरेज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर है, वहाँ हमारे देश में कृषि प्रधान देश होने के नाते 20% करीबन एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूशन है। और सेम थिंग, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ये कुछ प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की फिगर है कि हमारे देश में जहाँ 16-17 में 275 मिलियन टन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था, वो बढ़कर 303 मिलियन टन हो गया। इसी तरह क्रॉप वाइज हमने आउटपुट दिखाई है। आज 2021 में इंडिया की हाईएस्ट फूड प्रोडक्शन 303 मिलियन टन हुई है, जो पिछले साल से करीबन 2% ज्यादा है। और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे गौर करने की बात है, पिछले साल भी करीबन 20% से हमारा एक्सपोर्ट बढ़कर $50 बिलियन को क्रॉस कर गया और आने वाले सालों में ये $100 बिलियन को भी क्रॉस करने की कैपेसिटी रखता है। पिछले साल जहां 17.66% ग्रोथ थी और करीबन 41 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था, आप देख सकते हैं किस तेजी से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये इंडिया की हमने हॉर्टिकल्चर क्रॉप की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दिखाई है। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन सीरियल्स को भी क्रॉस कर गया है और आज देश में करीबन 334 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का उत्पादन हो रहा है। और 2021 के दौरान करीबन हमने 10,000 करोड़ का फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट किया। अब ये तो बात हुई एक तरफ पॉजिटिव, दूसरी तरफ हमारी कृषि में क्या समस्याएं हैं। आज पीछे IRI ने एक पेपर पब्लिश किया था 2008 में। उनके हिसाब से उन्होंने अलग अलग क्रॉप में लॉस एस्टिमेट किया था और उनका एस्टिमेशन था 8 से 90% तक क्रॉप का नुकसान हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन and due to non-use of agri inputs which include pesticides also। सन 2002 में एक स्टैंडिंग कमेटी बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में। उन्होंने 90,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट किया था क्रॉप लॉसेज और उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी फंगीसाइड और वीडीसाइड का इस्तेमाल इंडिया में बढ़ाया जाना चाहिए। आज अगर हम अपने देश में यील्ड गैप देखें, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है और वर्ल्ड की एवरेज है, अगर हम उसको कंपेयर करें तो सभी क्रॉप्स में वर्ल्ड के एवरेज से हम काफी पीछे हैं। और शुगर केन एक ऐसी क्रॉप है जिसमें हम वर्ल्ड से आगे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विज्ञान भवन में 26 मई 2015 को एक सेमिनार में कहा था, किसान का जेब भरे ना भरे, देश के नागरिक का पेट भरने में कमी नहीं रखी हमने। उस समय उन्होंने कहा था कि हमारी एवरेज पैदावार 2 टन प्रति हेक्टेयर है पैडी की, जिसको हमें बढ़ा के कम से कम वर्ल्ड एवरेज 3 टन के ऊपर ले जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि तहसील लेवल पे हमें कंपटीशन करना चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी उन्होंने उस टाइम नाम लिया था कि लाल बहादुर शास्त्री ने जो मंत्र दिया जय जवान जय किसान का, वो आज भी मेरा ख्याल है कृषि की कोई मीटिंग हो और उसमें बात उठे ना, ऐसा नहीं है। और इसी मंत्र में हमारे 2002 में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात जोड़ी थी, जय विज्ञान। और 2019 में हमारे विजय सांपला जी भी मौजूद थे जालंधर LPU में, बोलते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें एक और नई चीज जोड़ी थी, जय अनुसंधान रिसर्च। आज कोई भी कंट्री बिना अपनी रिसर्च के आगे नहीं बढ़ सकता। एक ये हमने कंपेयर करने की कोशिश की है इंडिया वर्सेस चाइना। आज चाइना का खेती का रकबा है करीबन 20 मिलियन हेक्टेयर, हमारा देश का करीबन 156 मिलियन हेक्टेयर। जहां चाइना में 645 मिलीमीटर बारिश होती है एवरेज, वह हमारे देश में 1083 मिलीमीटर बारिश होती है।
इन स्पाइट ऑफ 30% ज्यादा चाइना से एरिया, 60% करीबन ज्यादा बारिश, फिर जीडीपी फ्रॉम एग्रीकल्चर पे गौर फरमाएं कि जहां चाइना की जीडीपी एग्रीकल्चर की 1040 बिलियन डॉलर थी, वहां हमारी 460 बिलियन डॉलर थी। अब पेस्टिसाइड के कंजम्पशन में शोर मचता है कि हमारे देश में पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। हम 340 ग्राम प्रति हेक्टर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि चाइना में 13 किलोग्राम पेस्टिसाइड प्रति हेक्टर का इस्तेमाल है। जहां हमारे देश में 161 किलो फर्टिलाइजर प्रति हेक्टर यूज होता है, चाइना में 346 किलोग्राम प्रति हेक्टर यूज होता है। अगर हम अपनी एग्रीकल्चर का फुल पोटेंशियल लें और क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल, फर्टिलाइजर, अच्छे सीड्स का इस्तेमाल करें, तो जो प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो 2024-25 में, जिसमें 1 ट्रिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन कृषि से हो, अगर कृषि को सही पॉलिसी और सपोर्ट मिल जाए तो कृषि 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा एग्रीकल्चर को कंट्रीब्यूशन कर सकता है। वो देखिए कैसे। इसमें मैंने चाइना वर्सेस इंडिया का कंपैरिजन किया है कि प्रति 120 मिलियन हेक्टेयर से चाइना में कितनी जीडीपी है और हमारे देश में इन 156 मिलियन हेक्टेयर से कितनी जीडीपी है। अगर ये जीडीपी चाइना के बराबर हो जाए तो इट कैन बी 1.31 मिलियन डॉलर और मोर देन 1.3 ट्रिलियन डॉलर potential is in our country. I'm talking about potential. If all things are set right, then we can achieve this much, because our farmers are very hardworking. Chinese farmers have not come from some different planet. They are also from this planet only. But I will come in next slide. What is the challenges to farmers? आज हमारे फार्मर्स की द बिगेस्ट चैलेंज इज नई टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे देश में पूरे इस सेमिनार में पूरे देश से आए वैज्ञानिक हैं और हमारे फ्रंट में डॉक्टर सीडी माई साहब सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट बैठे हैं। 75वां जन्मदिन पिछले साल नागपुर में उनका गडकरी जी को उपस्थिति में मनाया था। तो आप देख सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है। वैज्ञानिक और दूसरे वाइस चांसलर्स और दूसरे साइंटिस्ट पूरे देश से आके बैठे हैं। ये प्रश्न है, ज्वलन प्रश्न है। हम सबको सोचना चाहिए कि किसान को न्यू टेक्नोलॉजी क्यों नहीं पहुंच रही। आज प्रश्न है, हाउ टू सेव फार्मर्स हार्ड ग्रोन क्रॉप्स इन एब्सेंस ऑफ न्यू पेस्टिसाइड्स। और आप न्यू पेस्टिसाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं डेटा दो, बिना डेटा के कोई बात नहीं है। तो जहां पूरे विश्व में आज 1175 पेस्टिसाइड्स रजिस्टर्ड हैं, वहां चाइना में 950, यूएसए में 800, यहां तक कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, वियतनाम में भी 450 पेस्टिसाइड हैं। वहां हमारे देश में सिर्फ 294 पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड हैं। तो ये कुछ हमने पॉइंट लिखे हैं। लैक ऑफ क्वालिटी एग्री इनपुट्स, ये भी बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में। कल नोएडा में रेड हुई, परसों मुजफ्फरनगर में रेड हुई। अगर अखबारों में देखें तो रोज कहीं न कहीं पेस्टिसाइड नकली के खिलाफ रेड होती रहती है। लेकिन उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया। पहले ये बेलेबल ऑफेंस था। ये किसानों का इसका नुकसान देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया है। तो क्वालिटी एग्री इनपुट्स कैसे किसानों तक पहुंचे। आज हमारे यहां इतना पानी है, अगर हम इजराइल की तरह ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी यूज करें तो उस पानी से पूरा एरिया को हम सिंचाई कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि जहां सिंचाई हो जाती है तो वहां पैदावार दुगनी हो जाती है। एक ये पॉइंट समझ नहीं आता कि एक तरफ सरकार का सब्सिडी बजट इस साल 2 लाख करोड़ को पार कर रहा फर्टिलाइजर के ऊपर,
जो अच्छी बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश के किसानों को सपोर्ट ना हो, लेकिन पेस्टिसाइड जो ऑटोमेटिक इंश्योरेंस का काम करता है, सरकार एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को भी प्रमोट करी है, लेकिन आज पेस्टिसाइड्स जो एक इंश्योरेंस का काम करता है उसके ऊपर 18% का टैक्स बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और मार्केट में बहुत सारे अनरेगुलेटेड प्लेयर्स हैं, बहुत से तो ऐसे हैं जिनके पास ना कोई लाइसेंस है ना रजिस्ट्रेशन है। और ये देखिए अगली स्लाइड में कि इन अनरजिस्टर्ड रेगुलेट प्लेयर्स से इंपैक्ट क्या है। एज पर CIBRC वेबसाइट 1 मई 2022 को जो हमने डेटा लिया उसके हिसाब से 6,831 कंपनियों को उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिए हुए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पब्लिक नोटिस आए और उस समय के एडिशनल सेक्रेटरी ने मीटिंग कॉल की कि भाई सारी कंपनियां जिनके पास भी रजिस्ट्रेशन है अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सेल परचेज का डेटा दें। और 2018 में जो मीटिंग हुई थी, 8th इंटरफेस मीटिंग विद द मिनिस्ट्री एडिशनल सेक्रेटरी, 314 कंपनियों ने सिर्फ अपना डेटा दिया था। और ये पब्लिक नोटिस मिनिस्ट्री ने 3 बार दिए हैं कि जो डेटा नहीं देंगे उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं दिए जाएंगे। उसके बावजूद लाखों रजिस्ट्रेशन ऐसी कंपनियों को मिले हैं। 2020 में पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज हुआ था जिसका आंसर हमारे कृषि मंत्री जी ने दिया था कि भाई हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से देश में 2403 कंपनी हैं जिनको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इशू किया गया है। एक गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन था जनवरी 22, 2010 में, जिसका नंबर 166E था। उसके हिसाब से 2 कंपनियों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए थे जो इंसेक्टिसाइड एक्ट और CIB की गाइडलाइंस को पूरा नहीं कर रहे थे। उसके बाद कितनी कंपनियां पूरा नहीं कर रही, लेकिन किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ 2010 के बाद। आज इंडस्ट्री में कंफ्यूजन है, किसानों के पास कंफ्यूजन है कि कितने प्लेयर हैं, कौन जेन्युइन है, कौन डुप्लीकेट है। इस समस्या का हल निकालना बहुत जरूरी है। पीछे कर्नाटक से भी यहां लोग हैं। मैं कर्नाटक सरकार की तारीफ करता हूं कि उन्होंने बायोसीमेंट के 250 सैंपल उठाए और वो अपनी लेबोरेटरी NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में टेस्ट किए और उन सब में, डॉक्टर साहब गौर करने की बात है, 10-12 पेस्टिसाइड की कोकटेल पाई गई। अगर 10-12 कोकटेल अगर शाम को ड्रिंक करेंगे, अगर हम 10-12 ड्रिंक्स मिला के पिएंगे तो क्या असर होगा। तो इसी तरह एग्रीकल्चर में अगर 12 पेस्टिसाइड, 10-12 पेस्टिसाइड की कोकटेल यूज हुई तो क्या असर हुआ। सारे पेस्टिसाइड बेकार हो गए, सबकी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई और कोई पेस्टिसाइड काम नहीं किया। हमारे डॉक्टर माई साहब ने भी पीछे से सैंपल लिए थे, डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी साहब ने भी लिए थे और सब में ये लफड़ा पाया गया। 9 लाख एकड़ मिर्ची की फसल बर्बाद हो गई। 9 लाख एकड़ में अगर 1 एकड़ में लाल मिर्ची निकाली जाए तो आप वैज्ञानिक लोग ज्यादा समझ सकते हैं, 50,000 करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान हुआ। और ये कोई न्यूज नहीं बनी, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली। आज बड़े शहर में कहीं आग लग जाए, 2-4 मौत हो जाए तो टीवी सुबह से शाम तक वो न्यूज चलती है, अखबारों में न्यूज होती है। ये एक दफे न्यूज आके खत्म हो गई कि सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली। अभी दिल्ली लुटियन जोन से 20 किलोमीटर दूर 6 रेड हुई, 6। एक मैंने बताया कल नोएडा में, परसों मुजफ्फरनगर। डेली पेपर देखेंगे तो ऐसी रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें देखने की आवश्यकता है, अगर कानून में कुछ संशोधन की जरूरत है। और पाथ फॉरवर्ड क्या है आगे इन चैलेंजेस को दूर करने का। हमारी सबसे बड़ी कहना है कि जब तक फार्मर को क्वालिटी इनपुट जिसमें फर्टिलाइजर भी है, सीड भी, पेस्टिसाइड भी नहीं मिलेंगे, तब तक उसका लॉस नहीं रुकेगा। यील्ड गैप जो है डेवलप कंट्री और हमारे कंट्रीज के बीच में, उसको हमें घटाने की आवश्यकता है। जो नई टेक्नोलॉजी के पेस्टिसाइड इंपोर्ट हो रहे हैं,
जो इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है उनके इंपोर्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 5% की जानी चाहिए, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी जो आज सिर्फ यूएसए, जापान, यूरोप में है, और क्योंकि एक नए पेस्टिसाइड के रिसर्च के ऊपर 2000 करोड़ से ज्यादा खर्च होता है, तो इसी वजह से ड्यूपॉन्ट, बायर, मोनसेंटो, कितना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ विश्व में। और एक सबसे बड़ी समस्या एग्रीकल्चर में नीम हकीम खतरे जान। अरे भाई ये साइंस का विषय है तो साइंटिस्ट लोगों को डिसीजन लेने दो ना। आज नॉन साइंटिफिक लोगों को इस क्षेत्र में आ जाते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये डिसीजन होना चाहिए। मेरा कहना है कि एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है और साइंस के साथ खेल करेगा कोई भी तो फायदा होने की जगह नुकसान होगा, और ऐसे लोग कभी कभी अपने नुकसान के साथ साइंस से मजाक करके देश का भी नुकसान करते हैं। हमारे देश से, जैसे मैंने कहा, पीछे एक्सपोर्ट बढ़ के $50 बिलियन हुआ और जो $100 बिलियन हो सकता है, इसमें सपोर्ट की जानी चाहिए। अभी हम 30,000 करोड़ का पेस्टिसाइड करीबन एक्सपोर्ट करते हैं और सरकार ने इसको चैंपियन सेक्टर डिक्लेयर किया है। ये एक्सपोर्ट बढ़ के 60,000 करोड़ का हो सकता है। सिर्फ कुछ नीतियां इस हिसाब से बननी है कि बाहर से इस क्षेत्र में हमारे न्यू टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट आए। और जो लास्ट में हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि एग्रीकल्चर क्या कर सकता है, $5 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन से ज्यादा में सपोर्ट कर सकता है। ये हमारी लास्ट स्लाइड है। ये रिक्वेस्ट है फॉर रिफॉर्म्स, नीड फॉर टोटल रिफॉर्म्स इन CIB-RC फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी पेस्टिसाइड्स विच इज अर्जेंटली नीडेड बाय अवर पेस्टिसाइड। हमारे वैज्ञानिक बैठे हैं, उनको वो जानते हैं हमसे बेहतर कि पुराने पेस्टिसाइड की कितनी रेसिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, और आज रेसिस्टेंस मैनेजमेंट के लिए नए पेस्टिसाइड बहुत जरूरी है। GST की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से। बड़ी स्कीम जो सरकार की आती है उसका फायदा सिर्फ बड़े किसानों को मिलता है। अगर ये GST कम होगा तो इसका फायदा छोटे और मार्जिनल किसानों को भी मिलेगा। हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल की लैब है, CIL, RPTL, SPTL, ये सब NABL एक्रेडिटेड होनी चाहिए। बहुत सी लैब में तो ना तो सही मैन पावर है, ना इंस्ट्रूमेंट्स है, ना केमिकल है, और वो रिपोर्ट देते हैं। जो NABL कंपनियां जिनके पास वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी है, जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं, वहां उनका आज तक कोई सैंपल नहीं फेल हुआ। ये कंफर्म किया था जब लास्ट कॉन्फ्रेंस थी, राघवेंद्र राव साहब सेक्रेटरी केमिकल थे, उन्होंने डायरेक्ट से कंप्लीट किया, कंफर्म किया था कि आज तक एक्सपोर्ट में हमारा कोई सैंपल फेल नहीं हुआ। लेकिन उन्हीं कंपनियों के सैंपल इन लेबोरेटरी में फेल होते हैं। और FSSAI एक्ट में सरकार ने ये कानून बना दिया कि कोई भी लेबोरेटरी जो NABL एक्रेडिटेड नहीं है, कोई फूड सैंपल टेस्ट नहीं करेगी, और माइनर वेरिएशन होती है तो उसको कंपाउंड करके खत्म कर दिया जाता है। आज आवश्यकता है इस क्षेत्र में भी ऐसे ही कानून बने। दूसरा, सरकार बहुत से क्षेत्र में PLI बेनिफिट दे रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। आज इस क्षेत्र में भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मिलने चाहिए, तब ये इंडस्ट्री वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री बन के वर्ल्ड में कंपटीशन कर सकती है। और एक्सटेंशन, हमारे सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं कृषि से, उनको पता कि एक्सटेंशन का क्या हाल है। आज गांव में जाके किसी किसान से पूछो कि आपके पास कोई आपको बताने आता है, तो यही कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लोग कभी कभी आ जाते हैं, बाकी उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचती है। तो सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए कि जिससे ये टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच सके। और पीछे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था पैडी के लिए 2015 में तहसील लेवल पे कंपटीशन हो। अगर सरकार पॉलिसी बना के इंडस्ट्री को साथ लेती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन कराती है और कुछ स्कीम प्राइस मोटिवेशन करती है और कुछ बजटरी सपोर्ट करती है, तो उससे देश में बहुत तरक्की हो सकती है। लास्ट, धन्यवाद। यूनाइटेड नेशन ने 2022 को इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया ऑफ बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। और हमारा देश मिलेट में बहुत स्ट्रांग है, तो ये हमारे लिए बड़े साइंटिस्ट के लिए फख्र की बात है कि जो आज न्यूट्रिशियस फूड माना जा रहा है मिलेट्स, उसके लिए 2023 में
इंटरनेशनल ईयर यूएन मनाएगी और पॉलिसी एंड रेगुलेटरी लैंडस्केप का जो फिक्की ने इस साल थीम रखा है एग्रोकेमिकल्स इन इंडिया, मैं समझता हूं कि आज की डेलिब्रेशन से सबको बहुत फायदा होगा। आपने मुझे बहुत पीसफुली सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Hardik Dhanyavad, sir. Thank you very much indeed for the warm words of welcome and for setting the context for today's day, today's conference. And now, ladies and gentlemen, we have our very distinguished guest who has joined us virtually, Dr. Soumya Mitra, APAC Regional Marketing Director, Corteva Agri-Sciences. He is based in Singapore, and prior to his marketing role, he was the APAC head of Field Sciences, IFS, within the Crop Protection Discovery and Development R&D based in Singapore. He comes from a diversified technical and commercial background. Before joining Corteva, he had short stint at Adama as the regional head of development and registrations. He spent 12 years with Syngenta, where he held several roles in R&D, technical support, and marketing based in Switzerland and Singapore. And ladies and gentlemen, I now invite Dr. Mitra for his presentation on agrochemicals, a global perspective. Can you hear us, sir? Yes, I can. Thank you so much for the warm welcome. Over to you, sir. Respected Vijay Sampla ji, Haji Agarwal ji, and Param Majumdar ji, namaste. It's an honor to be part of the panel and being able to share some thoughts with you. So thank FICCI for giving me the opportunity to be part of the 11th Agrochemicals Conference. It gives me immense pleasure to be part of the discussion today as we deliberate on the policy landscape for crop protection solutions to address the growing challenges and meet the demand for sustainable future of farming. Can I have the slide, please? Can I have the next slide, please? Thank you. Food insecurity is on the rise globally, in part because climate change gives pests and diseases increased opportunity to breed, feed, and proliferate. There's an urgent need to address food insecurity by creating new and sustainable food systems that can support the world population. Is going to mean rethinking the fundamentals of farming, from the resources used to where it happens and its basic relationship with nature. But in calling out climate change, environmental and resource challenges, we also need to recognize the potential for agriculture innovation to improve food security by strengthening food system resilience. With sustainable and science-based agrochemicals that help farmers maximize crop yields while minimizing resource inputs, potentially reversing the downward trend in food security. Crop protection solutions are a backbone for farmers to produce a healthy and a higher yield. The need of the hour is effective seeds and crop protection products that the market demands today, and the solutions that will optimize that profitability for tomorrow. Farmers are the first to feel the impact of climate change, changing consumer demands, and the strain of a growing population. They face new crop diseases and new pests such as fall armyworm and locusts. According to a survey commissioned by the CropLife Asia, it's clear that the challenges farmers face is growing. The looming threat of climate shocks, water scarcity, soil degradation, and salinization poses a formidable threat to food security for all of us. When we walk into a produce section of a neighborhood market, you'll see customers looking at all the produce, with strict quality control before carefully selecting some of the vegetables or fruits and putting them in the baskets. We're getting choosy because most of our fruits and vegetables are of great quality. We're now not looking for one good head of lettuce that looks good, but the best one with a plethora of display of worthy candidates. This ability to be choosy in a luxury enabled by farmers who are perhaps even more obsessed with quality than consumers. One of the biggest threats to the quality is destructive insects, which farmers must work constantly to control in defense of their harvests. As
Mr. Agarwal just shared with us the challenges that we pose and the gap in productivity in India and what we can do for farmers. Recent reports on pest infestation, be it in Ropar, Bihar, where fall armyworm destroyed more than 4,500 acres of maize or corn, or pink bollworm attacking cotton in Maharashtra, or the locust attack which we experienced last year. Climate change and extreme weather events have had a major impact on crop production and increased infestation of agricultural pests. Crop protection chemicals are an active ingredient, are an important part of our agriculture sector, which can prevent crop losses. Sustainability, intensified crop production solutions within the confines of a stable, predictable regulatory framework is the need of the hour to make food production environmentally friendly and above all effective while optimizing input. Can I have the next slide on screen, please? Integrated Pest Manager, or IPM, is an effective and environmentally sensitive approach to pest management, which involves proactive monitoring of pest populations, preventing them from growing to unprecedented damaging levels without causing irreversible toxicity to the environment or cause any harm. It comprises an integrated approach where the use of non-chemical tools and digital technology or platforms should be all encouraged. Because of its uncompromising focus on minimizing the use of agrochemicals, a greater adoption of IPM practices can lead to a long-term decline in major classes of crop protection chemicals, including herbicides. However, because IPM focuses on natural pest control mechanisms, the demand for biologicals can increase to a great extent and command higher premiums than conventional crop protection chemicals. In fact, over the last 2 decades or so, the growth of biologicals or biopesticides has outpaced that of overall crop protection chemicals. Despite this increased interest and demand for biologicals, they still only constitute less than 10% of overall crop protection sales. Agrochemicals and biotech companies should make biologicals more effective over the life cycle, which can increase their sales potential. Can I have the slide 4, please? Developed with sustainability in mind, our unraveled pipeline of crop protection innovations is designed to address resistance, reduce residuals, and work in synergy with our seed products. So Corteva Agrosciences works on R&D with molecules and formulations which feature properties such as low effective use rates, favorable environmental impact, and minimal toxicological profile. We continue to build on these 2 decades of leadership in green chemistry, which Mr. Agarwal had introduced in his slides, with products such as Gemvelva, Rinscore, Adavelt, and others. We will soon be launching Rinscore in India. Gemvelva is already a product which helps to control resistant insects which are resistant to diamides and other groups of insecticides. We are taking a commitment on sustainability even further. A conducive policy environment would enable more investments in these innovations. And I would like to reiterate what Mr. Agarwal said. We should be given an opportunity to bring in new technologies so that the farmers can have access to green chemistries and reduce risk products. Can I have the next slide on screen, please? We have seen successful case studies in other parts of the world where regulatory frameworks have encouraged investment and adoption of innovation. For example, in Brazil, approval for low-tox products was prioritized given its excellent tox and ecotox profile. So the product I mentioned, Rinscore, got an early registration in Brazil because of its low-tox potential compared to everything else which is available for farmers to use as a selective herbicide. In the US, EPA's reduced risk pesticide program is being adopted where acceptance of an application for review under reduced risk program reduces the timeline from 36 months or 3 years to 2 years and results a sizable cost savings in terms for the companies and also the government agencies. The time spent to review these is a lot less. Today, the Indian agrochemical industry holds a prominent position on the global stage.
India is the second largest producer of agrochemicals in the world. And Mr. Agarwal just showed the statistics, and the industry has a huge unrealized potential to grow further. India has fundamental advantages with the right technology, investment, and policies. And I strongly believe there's tremendous opportunities to unlock for the industry. India has moved rapidly over the last 5 to 7 years into becoming the trusted partner for all major countries and a friend in need to support the global agrochemical requirements. In addition to the current thrust on manufacturing, the industry should also focus on addressing the environmental issues. The sheer size of the India market means industry can look at new age molecules with lower environmental footprint, lower doses, and safe for humans and animals. This would lead to increased investments in new technology, R&D activities, and make production and supply systems in and agricultural operations in India more sustainable. To achieve this, however, we need a policy environment that incentivizes these investments in sustainable technologies in India. This would also require changes to the registration and licensing processes for new age molecules, bigger protection, and above all, a stable and predictable policy environment so that India continues to be a responsible and a reliable supplier. Can I have the next slide on screen, please? I would like to congratulate the Ministry of Agriculture and the Farmers' Welfare for working towards introducing the fast-track mechanism for registration of new molecules and a much-awaited 3D reforms in the crop protection registration process. We as an industry really welcome this. Industry is keenly looking forward to a swift implementation. And of course, we recommend the registrations continue to be based on predictable, science-based regime and that safe molecules are not banned on trade considerations. In closing, for India to acquire its rightful place in the global supply chain, it is important to view the global supply chain as a continuum from manufacturing and import of technical to manufacturing and import of formulations. The solution lies in the convergence of technology, innovation, policy changes, and regulation. Moreover, clever chemistries with favorable environmental impact and minimal toxicological profile can help get more products to stay on target, drastically reducing any chances of pollution and off-target movement. I believe that together the government and the private sector plays collectively a role in addressing these challenges, and we can together pave the way towards long-term sustainable economic growth for the agrochemical industry. Thank you for this opportunity to be able to address the esteemed audience, and I look forward to working with the government agencies, and our teams are looking forward to working with the government on several fronts. Thank you so much for this opportunity to connect. Thank you very much indeed, sir, for sharing the global perspective with the August House today. And ladies and gentlemen, we are honored to have with us as our guest of honor, Shri Vijay Samplaji, is the chairman of the National Commission for Scheduled Castes since February 2021 and is the former Minister of State for Social Justice and Empowerment in India from the year 2014 to 2019 and a former Member of Parliament from Hoshiarpur Lok Sabha constituency, and he has worked as farmhand, laborer and plumber earlier in his life. And ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome our guest of honor, Shri Vijay Samplaji, for his address. तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय अतिथि श्री विजय सांपला जी का, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन डॉक्टर हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र आर.जी. अग्रवाल जी, जो क्रॉप प्रोटेक्शन कमेटी फिक्की के चेयरमैन भी हैं और धानुका ग्रुप के भी चेयरमैन हैं और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। मानव जी जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल फिक्की के हैं,
और आप सभी सामने बैठे भाइयों बहनों और बहुत सारे विद्वान, क्योंकि आप सब बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं और इसमें तो मुझे इंट्रोडक्शन में बता दिया कि मैं तो लेबर से शुरू हुआ, इसलिए हिंदी में ही बात करूँगा। क्योंकि आज एग्रीकल्चर का ये 11वां एग्रोकेमिकल जो है ये अधिवेशन हो रहा है और उसमें आप सबके रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी आरजी अग्रवाल जी ने भी, सौम्य मित्रा जी ने भी बहुत डिटेल से आपको अपने विचार भी रखे हैं। पेस्टिसाइड का उपयोग भी कैसे कितना होता है, कितना है, इसके बारे में भी डिटेल चाहिए मगर बताई है। मगर हमारे हिंदुस्तान में जहाँ पे ये सब चीज़ें अनलिमिटेड होती हैं, शुरू करते हैं तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती। हमारे तो पंजाब से आते तो दारू भी पीने लगते तो अनलिमिटेड पीते हैं, तो यहाँ पे कोई भी काम लिमिट से नहीं होता और इसीलिए देश में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ भी अनलिमिटेड पंजाब हमारे पूरे देश में है सबसे ज़्यादा, क्योंकि काम करने के लिए बीच में कोई देखा नहीं जाता, इतना समझा भी नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर समझने और समझाने की है कि हम पेस्टिसाइड बनाते हैं। आरजी अग्रवाल जी ने भी कहा कि हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसका हमारे ऊपर प्रभाव भी है। और पंजाब में तो एक ऐसे एरिया भी हैं जिनको कैंसर एरिया का डिक्लेयर भी कर दिया गया है। बाउंड्री वॉल भी एक जगह पे की हुई है कि वहाँ कोई आ जा ही नहीं सकता, कि इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर लिया है कि अब वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं वो भी पेशेंट हैं, किसान भी पेशेंट है और जो उनका प्रोड्यूस खाता है, प्रोडक्ट खाता है, वो भी पेशेंट है। और पंजाब से एक गाड़ी चलती है, उसका नाम ही कैंसर गाड़ी रखा है। मानो गाड़ी का लोगों ने नाम ही, उसमें बैठते ही कैंसर के पेशेंट है। जब बैठोगे तो सब, अगर 100 आदमी बैठे हैं तो 80 आदमी उसमें कैंसर के पेशेंट होंगे, इसलिए उसका नाम ही कैंसर गाड़ी रखते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई आफत आ गई, उसका कारण यही है कि बिना सोचे समझे और उसकी ज़रूरत को भी बिना सोचे समझे हमने इतना पेस्टिसाइड डाल दिया कि वो उनको शायद लगता है कि जो है, जैसे पहले गांव में खाना खाते थे तो माता उसमें घी के 2 चम्मच डाल देती थी, उसको लगता है कि ये घी डालने से और ताकत आएगी। और इसी तरह उन्होंने कहा कि ज़रा 1 किलो की जगह 1.5 किलो भी डाल दो तो कोई बात नहीं, बढ़िया फसल हो जाएगी। तो ये सिस्टम, ज़रूरत उसकी जब सबसे ज़्यादा उसको समझाने की है। और ये हम जानते हैं कि किसान भोला भाला है, उन सब चीज़ों को उतनी जो बारीकी से नहीं समझता जितनी बारीकी से आप लोग उसमें रिसर्च करते हैं। और उसके कारण भी हैं, क्योंकि मेरे पास जब मैं मंत्री था तो बहुत सारे लोग आते भी थे कि ये हमने एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च की है, ये फलां फसल के ऊपर रिसर्च की है, और उस सारी की रिसर्च की सारी वो इंग्लिश में होती थी। अब जो गांव में बैठा भोला भाला और उसको ये पता ही नहीं कि इसमें करना क्या था, तो ये मेरी ज़रूर निवेदन है कि आपका रिसर्च, क्योंकि मैंने अक्सर सभी को सुना है, आपके लेवल पे तो अक्सर होता होगा कि भाई मैं हिंदी अच्छी बोल लेता हूँ मगर मेरी तैयारी है वो इंग्लिश में, इसलिए मैं अपनी बात इंग्लिश में रखूँगा। ये मैं अक्सर सुनता हूँ। तो हिंदी अच्छी बोल सकते हैं तो जिनको समझाने की ज़रूरत है उनको तो समझाने के लिए पहले हमें भी उस बारीकी तक जाना होगा। जब हम इस होटल में बैठ के इस प्रांगण में बात करते तो जिस मर्जी भाषा में कर सकते हैं, मगर जब गांव में किसान तक जानी है तो उसको भाषा उसकी स्थानीय भाषा में ही समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी बहुत बड़ी कमी मुझे देखने को मिलती है। और इसी कारण जो है हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति किए बिना ही हम लक्ष्य के विपरीत काम करना शुरू कर देते हैं, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हमें हो भी रहा है। और आशाएं जो जताई जा रही हैं कि हमारा क्रॉप बढ़े, ये बढ़ने में कोई बात,
अगर ज़्यादा पेस्टिसाइड डालोगे, ज़्यादा उससे भी होगा, तो उससे नुकसान ही होगा, फसल का भी होगा। अब ये एक छोटी सी बात है, हम किसान को समझा समझा के, मेरा हाल पंजाब में तो बहुत जगह बोर्ड भी लगे, पूरे हिंदुस्तान में लगे कि पराली को मत जलाओ। जब आप फसल काटते हो तो वेस्ट को आप जला देते हो, चाहे वो धान की हो चाहे वो गेहूं की हो। अब उससे सभी कह रहे हैं कि इसका नुकसान भी है, तो मगर उसको समझाने की जो बात है वो हमने नहीं कर रहे। कानून बना दिए, उसके ऊपर धाराएं लगा दी कि अगर करोगे तो। कानून बनाने से भी कुछ नहीं होगा, धाराएं लगाने के साथ सख्ती, कानून को सख्ती से लागू करोगे तब भी कुछ नहीं होगा। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि मुझे जानते हैं कि देश की जनता बहुत बढ़ गई, तो एक बार एक पार्टी ने ये डिसीजन लिया था कि सबकी नसबंदी कर दो, और वो जो भी कोई बस स्टैंड पे जा रहा था उसको भी पकड़ के, कोई रेलवे स्टेशन पे भी गया उसको भी पकड़ के उसकी नसबंदी कर दी। मगर उसका नतीजा क्या हुआ, लोगों में आक्रोश बढ़ा, और जब चुनाव आए तो वो पार्टी स्विप कर गई, ऐसा हुआ। मगर वही बात को जब हमने प्रचार के माध्यम से लोगों की मानसिकता को चेंज करने में लगाया तो बहुत बड़ा अंतर आया। जब हमने बोर्ड लगा दिए, दो ही काफ़ी और से माफ़ी, छोटा परिवार सुखी परिवार, दो ही बच्चे होते हैं अच्छे, ऐसे कुछ लगाना शुरू कर दिया और समझाना शुरू कर दिया। यानी उसमें समय बहुत लगा, निस्संदेह कि समय इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं आया। मगर आज आप जितने भी इस प्रांगण में बैठे होंगे तो आप इस चीज़ को भली भांति समझते होंगे कि परिवार नियोजन जबरदस्ती नहीं, आपको अपनी मानसिकता के रूप से आज कर रहे हैं। और मेरा हाल कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देगा, बहुत सारे आप मिलते होंगे, किसी के एक है किसी के दो हैं, ज़्यादा नहीं है। तो पहले तो बहुत लंबी लिस्ट होती थी, ये तो हम सब जानते हैं। मगर वो मानसिकता को जब चेंज किया तब उनको आज किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप ऑपरेशन कर लो, वो खुद ही जाके कर लेता है। यहाँ उसके अपने प्रिकॉशन जो लेने होते हैं वो सभी महिलाएं हों या पुरुष हों, सभी प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया। मगर जब उसकी ज़बरदस्ती की, कानून बना दिए, ये कर दिया वो कर दिया, तो उसका विरोध हुआ। आज ज़रूरत जो है हमारे समाज के लोगों को मानसिकता को चेंज करने के लिए, मानसिकता चेंज करने के लिए आपको दूसरा रास्ता, प्रचार का रास्ता, उनके बीच में बैठने का, उस तंत्र को, जितना पैसा आप दूसरे कामों में खर्च रहे हैं उतना पैसा अगर इसमें 2-4 लोगों को रोज़गार दे के इस काम में लगाएंगे तो मेरा ख्याल किसान तक आपकी बात पहुँच है। नहीं है तो आप ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे थे, अभी पंजाब में स्पेशल कनेक्शन दिए गए बिजली के, क्योंकि पावर के कनेक्शन तो बिजली फ्री होने के लिए कनेक्शन बहुत कम मिलते हैं। मगर स्पेशल कनेक्शन दिए गए कि जो क्रॉप जो है ड्रिप इरिगेशन से काम करेगा उसको हम प्रायोरिटी पे कनेक्शन देंगे। मतलब तो ये था कि उनको चेंज करने के लिए, मगर उनकी मानसिकता को चेंज किया, मगर जितना उसके ऊपर समय देने की जरूरत थी वो नहीं दे पाए और कनेक्शन फटाफट बांट दिए। तो कनेक्शन तो सबने ले लिए, मगर बाद में कहा ये ड्रिप इरिगेशन से कुछ नहीं होता, ये तो फ्लड इरिगेशन से हमारा काम चलता है, हमारे यहाँ पे कामयाब नहीं। और जितने लोग थे जिन्होंने कनेक्शन बांटे वो सब इस चीज़ की वकालती करते नजर आए, नहीं नहीं जी यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन कामयाब नहीं, यहाँ तो फ्लड इरिगेशन है। अरे भाई फ्लड इरिगेशन की क्या जरूरत है, पूरी दुनिया में अगर ड्रिप इरिगेशन कामयाब है तो फिर पंजाब में क्यों नहीं या बाकी जगह पे क्यों नहीं और कहीं नहीं। मगर मानसिकता जिन्होंने तब्दील करनी थी उन्होंने ही अपनी मानसिकता बना के रखी थी कि ये ड्रिप इरिगेशन हमारे पंजाब में कामयाब ही नहीं है। और फिर आज पूरा हिंदुस्तान में देख रहा हूँ कि डार्क जोन की ओर जा रहा है, पानी नीचे कम हो रहा है। मैंने तो अखबार में पढ़ा कि चेन्नई में एक पोर्शन जिसको वाटर है ही नहीं है ये डिक्लेयर कर दिया, पानी रहित पानी डिक्लेयर कर दिया। अब पंजाब में हमारे फूड प्रोसेसिंग के यूनिट हमने लगाए, ये करके कि भी क्रॉप के साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग को ही आगे बढ़ावा देना होगा। तो जब लगाने लगे तो ये वो बीच में रुकावट बनी रही कि यहाँ तो ये तो ब्लैक डार्क जोन में है। अब डार्क जोन में लेके कौन गया? हम। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो नीचे से पानी निकालने का काम कम करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
मगर हमारे यहाँ पर ज़्यादा किस चीज़ के पे काम कर रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज पे कम कर रहे हैं। और जो हमारे पास जो दरियाओं का पानी है, वो बारिश का पानी, उसका इस्तेमाल नहीं करते। और बाकी जगह पे तो ट्यूबवेल, मैंने देखा कि विदेशों में तो ट्यूबवेल लगाने के लिए परमिशन ही नहीं मिलती, बोर करने के लिए परमिशन नहीं मिलती। और यहाँ पर तो हमारे अभी लगाओ 2 घंटे बाद आपको वहाँ पे मान लो 2 दिन बाद बोर का पानी निकलता हुआ वो दिखा देंगे, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए हमने उसका पानी में भी चला गया और धीरे धीरे हमारी तो खेती के लायक ही नहीं ज़मीन बचेगी। अब अगर चेन्नई में ऐसा हो गया, पंजाब में ऐसा हो गया, हरियाणा में ऐसे हो गया, यूपी का भी कुछ क्षेत्र ऐसा हो गया है, और इसमें फिर खेती करोगे कहाँ, किससे करोगे? तो आज रिसर्च जो करके आप जितनी रिसर्च करते हैं, जब तक वो नीचे खड़े व्यक्ति के, तो सबसे निचले व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को उसकी अपनी मानसिकता तब्दील करने के लिए उसकी लोकल भाषा में बात नहीं करेंगे, तब तक शायद ये काम नहीं हो पाएगा। आज मोदी जी का भी जिक्र आया कि मोदी सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई, और क्योंकि मैं तो पिछली सरकार में मंत्री रहा हूँ और किसानों के लिए कितनी बड़ी चिंता रखते हैं और कितनी गंभीरता से, तो मैंने तो उनको बड़ी नज़दीकी से देखा है। जब कोई किसानों की बात होती थी, बड़ा बारीकी से समझना और उसके ऊपर बारीकी से काम करना, और उनका ये मानना था कि किसान अगर प्रफुल्लित होगा तभी ये देश प्रफुल्लित होगा, ये मानना उनका। मगर ये आज देश में परसेप्शन क्या बना, उन्होंने पॉलिसी बनाई तो सब तो वहाँ के उनके खिलाफ बैठे थे। और जितने लोग थे, किसी को ये नहीं पता था कि विरोध किसका कर रहे हैं, किस चीज़ का कर रहे हैं, किसी को नहीं पता था। कारण शायद उसमें मानसिकता के वो जो तब्दीली थी वो नहीं समझा। आज हर चीज़ का विरोध करने के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशनें खड़ी हैं। वो तो मोदी जी ने एक शब्द दिया था, आंदोलन जीवी भी उठे। तो आजकल तो वो बहुत सारा काम चलना शुरू हो गया। मगर जहाँ पर हमें अपने दिमाग पे भी जोर देना चाहिए, जिनको पढ़े लिखे बहुत बड़े हम प्रोफेसर हैं, वही हम कह सकते हैं कि ये समाज को कुछ दे सकते हैं। अगर वो भी ऐसी बातें करेंगे और दूसरों को गुमराह करेंगे तो उससे जो है मैसेज बहुत गलत जाएगा, और जिसका उनका भी कोई भला नहीं हुआ। आज जब प्रोक्योरमेंट का टाइम आया तो जो अडानी अंबानी को गालियाँ निकाल रहे थे, सबसे ज़्यादा उन्हीं की वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, और बाद में यही कह रहे थे कि यही पॉलिसी अच्छी है। तो फिर इतना विरोध क्यों? बिना सोचे समझे हमारे यहाँ पर विरोध बहुत करते हैं, और वो उसका कारण भी नुकसान खुद किसानों का हुआ। आज ये किसान को भी पता है कि आग लगाना, जो आपकी वेस्ट को आग लगाना आपके खेत का नुकसान है, मगर वो किसी न किसी अड़ी के कारण मैं भी करूँगा, मुझे कौन रोक के दिखाए। यानी अलग तरह की एक मानसिकता जो है उसको तब्दील करने की बहुत ज़रूरत है, और उसको सख्ती से नहीं किया जा सकता, उसको प्यार से ही किया जा सकता है। आज ज़रूरत जो है, जहाँ मुझे तो ये भी है कि फिक्की अगर इतनी ज़्यादा बारीकी से जाकर एक ये कॉन्फ्रेंस करा रही है, 11वीं कॉन्फ्रेंस करा रही है, तो मेरा इसमें ये रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि ये थोड़ा सा फिक्की अपने तौर पर गांव में भी जाके थोड़ा सा करेगी तो मुझे इसका ज़्यादा लाभ भी नज़र आता दिखाएगा। और ये है कि जब मैं एक बात कहता हूँ, मान लीजिए कोई एक राजनेता करता है, मंत्री कहता है, तो दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ उसका विरोध करने के लिए खड़ी होती हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि ये अच्छी है या गलत है, मगर एक जब ऑर्गेनाइजेशनें काम करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि फिक्की ने कौन सा वोट लेने आना है, फिक्की ने कौन सा हमारे रास्ते में रुकावट बनना है, कल को हमारी सरकार आएगी तो फिक्की भी हमें सपोर्ट करेगी, ये सबको मालूम है। तो इसलिए आपका विरोध नहीं होगा और आपकी बात का वजन ज़्यादा भी होगा। और इसलिए मैं आपसे निवेदन ये भी करूँगा कि ये अच्छी बात है कि यहाँ पर साइंटिस्टों को बैठ के एक चर्चा करना, ये एक बहुत बड़ी बात है, मगर इसका फ़ायदा कहाँ लेना है, वो तो नीचे ग्राउंड पे लेना है। तो जिस ग्राउंड पे लेना है उस ग्राउंड तक भी पहुँचे, इसके लिए मैं ज़रूर निवेदन करूँगा, और मुझे आशा है कि इसके ऊपर शायद आप काम भी करेंगे। मैं ज़्यादा समय भी ना लूँ, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है। और आरजी अग्रवाल जी का हमारा प्रेम था, तो उन्होंने कहा कि आपको आना ही आना है। मैं तो आज कहीं और प्रोग्राम थे मेरे, आउट ऑफ दिल्ली थे, मगर आरजी साहब ने कहा कि
तो राम गोपाल जी का तो प्यार होने के कारण मैंने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ पहुँचा हूँ और आप सबके रूबरू हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस देश के गरीब किसान, भोले वाले किसान की मानसिकता भी चेंज करेंगे, उसको सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे एक कहानी याद है ना कि वो एक शेरनी का जो अपने पीरियड में थी, तो वो जब छलांग लगा के शेर जाने के लिए एक पहाड़ी से छोटी पहाड़ी पे कूदी, तो क्योंकि उसके पे बच्चा होने वाला था, तो वो बच्चा वहीं जब जोर लगाया तो बच्चा उस पहाड़ी के बीच में से नीचे गिर गया और नीचे कहीं वो बकरियों का झुंड था। तो बकरियों के झुंड में वो शेर का बच्चा गिरा तो उसकी आंखें भी उसी झुंड में खुली और जब वो देखा तो उसने बकरियां मह मह कर रही थी तो उनकी तरफ देखा देखी वो भी मह मह करने लग गया और जैसे बकरियां कर रही थी वैसे ही वो भी शेर का बच्चा भी करने लग गया और उन्हीं के साथ खेलना घूमना फिरना शुरू किया। तो एक दिन जब बकरियां जंगल में घूम रही थी तो शेर की दहाड़ को सुनकर सब भाग गए और उसको लगा कि ये क्या हुआ। जब उसने सामने देखा तो उसने कहा कि जिसका सामने जो आया उसकी बॉडी तो मेरे जैसी है, वो मेरे जैसा ही है, मगर ये मेरे साथी लोग सब क्यों भाग गए और मेरी जो है आवाज़ वो बकरियों की जैसे मह मह करती हैं वैसे है, जबकि ये शेर तो दहाड़ रहा है, जब इसकी आवाज़ है तो मेरी क्यों नहीं। और शेर भी बैठा सामने सोच रहा है कि ये शेर का बेटा है, ये बकरियों में क्या कर रहा है। और उसको चैलेंज के लिए उसने थोड़ा 2 बार दहाड़ा तो शेर के बच्चे को भी लगा कि मैं भी क्यों नहीं ऐसा कर सकता। तो जब वो उसका देखा देखी उसने भी दहाड़ना शुरू किया तो शेर ने उसको बुलाया कि तू शेर का बच्चा है, अपने अंदर की जो है आत्मा को पहचान, अपने आप को पहचान, तेरी पहचान ये यहाँ नहीं है, तू तो शेर का बच्चा है और जंगल का राजा है और तू बकरियों में क्या घूम रहा है। और उसको ये समझाया और बाद में वो भी शेर के साथ निकल गया और अपने जंगल में राजा की उपाधियों को जैसे उन्होंने बाकी को संभाला उसने। आज ज़रूरत है, आज उन कमज़ोर लोगों के बीच में उस छुपे हुए शेर की उस अंतरात्मा को जगाना और उस अंतरात्मा को जगाकर उनको शेर की उसकी प्रवृत्ति, उसकी असलियत बताना कि आप किस काम के लिए आए हो। आप मानवता की सेवा करना किसान का काम है, मानवता को खत्म करना शेर का मानव आपका काम नहीं है, आपका सेवा के लिए भेजा है। आप किसान फसल उगाता है जो जरूर है कि उसका पैसा कमाता है, मगर उसमें भावना जो है वो सेवा की जुड़ी है, मानवता उसमें है। और आज जब मानवता बीच में से निकाल दोगे तो फिर ख़त्म हो जाएगा। और इसमें आप सब ने सहयोग करेंगे और आप उस सोई हुई अंतरात्माओं को जगाकर मानवता के लिए काम करेंगे, फिर ये अपने आप का आपका जो मिशन मुझे ज़रूर उम्मीद है कि कामयाब होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद सर, आपके प्रेरणात्मक संदेश एवं आपने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला और यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए आपके तहे दिल से धन्यवाद। And now, ladies and gentlemen, I request our guest of honor and dignitaries on the dais to do the honors of releasing the knowledge paper prepared by PwC and FICCI. PwC is our knowledge partner for this event, and I would also request Mr. Ashok Verma, partner PwC, to kindly grace the stage for the release of the knowledge report, knowledge paper. And ladies and gentlemen, let's put our hands together for the release of the knowledge paper which was being prepared by PwC and FICCI. Thank you very much indeed, sir, for doing the honors. And ladies and gentlemen, may I now invite Mr. Manab Majumdar, Deputy Secretary General FICCI, for the concluding remarks and to kindly propose the vote of thanks. Good afternoon, everyone. It's my privilege to propose the vote of thanks. We are most thankful to Sri
Vijay Sampla, Honorable Chairman, National Commission for Scheduled Castes, Government of India, for kindly gracing the occasion and addressing the conference. Sir, आपने हमारे बीच आए और आपने बहुत विस्तार से बारीकी से बहुत सारे विचार विमर्श रखा, हम आभारी हैं आपके लिए। एंड हमने ये भी नोट किया, आप चाहते हैं हम दिल्ली या मेट्रो छोड़ आगे जाके गांव में या ग्राउंड में जाके ये चर्चा जारी रखें। वी हैव नोटेड दैट सर, तो हम उस पर भी काम करेंगे। एंड थैंक यू वंस अगेन। My sincere thanks to Dr. Soumya Mitra for sharing the global perspectives. Dr. Mitra, your presentation was very comprehensive and it was excellent. Thank you. Thank you for joining. Our thanks are also due to the Department of Chemicals and Petrochemicals, DCPC, and the Department of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, for their continuous support and valuable guidance. We are thankful to all the esteemed dignitaries, eminent experts and speakers, our knowledge partner, diplomats, sponsors, hotel staff, and of course, our friends from the media. Last but not the least, in addition to thanking our chairman, and of course, chairman is one of us, but still I would like to appreciate his untiring efforts for the cause of the FICCI committee as well as for the sector. Thank you very much, sir. We value your contribution. And as I was saying, last but not the least, our sincere thanks to all the participants, each one of you who have kindly taken your time off to attend this conference. Without your participation, without your being here today, this conference would not have looked as bright and as exciting. I'm confident with your active participation in the sessions to follow, this conference will turn out to be a great success. Ladies and gentlemen, thank you so much for patiently listening to me. And I would request all of you to carry out this vote of thanks with acclamation. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Thank you very much indeed, sir, for the concluding remarks and kindly proposing the vote of thanks. I'm sure it is being seconded by each one of us present here. And once again, thanking our guest of honor and other dignitaries for sparing their valuable time and gracing this occasion. Ladies and gentlemen, we now close the proceedings of the inaugural session and break for tea. The tea break is of 20 minutes only. We will commence with the proceedings of panel discussion 1 sharp at 12:30. We would request everyone to be kindly seated back for that. Thank you. Indian chemical and petrochemical sector is a key pillar of the economy. This sector accounts for 7% of India's GDP. India is the 6th largest in the world in chemical sales, and it contributes nearly 3% of the total global chemical industry. Indian chemical and petrochemical industry is highly diversified, and it covers more than 80,000 commercial products. Plays a vital role in facilitating the growth of several downstream industries, employs more than 2 million people. It has witnessed a healthy growth over the years and is expected to surpass $300 billion by 2025. To highlight the true potential of Indian chemicals and petrochemicals industry, and to showcase the investment opportunities in petroleum, chemicals and petrochemicals investment regions, Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry are jointly organizing 12th Biennial International Exhibition and Conference, India Chem, from 6th to 8th October 2022 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai.
Vision 2030, Chemicals and Petrochemicals Build India, theme of India Chem. India Chem is one of the largest composite events of the chemicals, petrochemicals and process and plant machinery industry of the Asia-Pacific region. The key highlights of India Chem 2021 were Global CEOs Forum, India-US Chemical and Petrochemical Forum, India-Japan Chemical and Petrochemical Forum, India-EU Chemical and Petrochemical Forum, Conclave on Specialty Chemicals, Conclave on Petrochemicals, Conclave on Agrochemicals, more than 100 plus national and international exhibitors, 10,000 plus business delegates from 25 plus countries, and FICCI Chemicals and Petrochemicals Awards. 12th Biennial International and Conference India Chem from 6th to 8th October 2022 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai. See you there. And for more information, visit www.indiachem.in. Indian chemical and petrochemical sector is a key pillar of the economy. This sector accounts for 7% of India's GDP. India is the 6th largest in the world in chemical sales, and it contributes nearly 3% of the total global chemical industry. Indian chemical and petrochemical industry is highly diversified, and it covers more than 80,000 commercial products. Plays a vital role in facilitating the growth of several downstream industries, employs more than 2 million people. It has witnessed a healthy growth over the years and is expected to surpass $300 billion by 2025. To highlight the true potential of Indian chemicals and petrochemicals industry and to showcase the investment opportunities in petroleum, chemicals and petrochemicals investment regions, Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry are jointly organizing 12th Biennial International Exhibition and Conference, India Chem, from 6th to 8th October 2022 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai. Vision 2030, Chemicals and Petrochemicals Build India, theme of India Chem. India Chem is one of the largest composite events of the chemicals, petrochemicals and process and plant machinery industry of the Asia-Pacific region. The key highlights of India Chem 2021 were Global CEOs Forum, India-US Chemical and Petrochemical Forum, India-Japan Chemical and Petrochemical Forum, India-EU Chemical and Petrochemical Forum, Conclave on Specialty Chemicals, Conclave on Petrochemicals, Conclave on Agrochemicals, more than 100 plus national and international exhibitors, 10,000 plus business delegates from 25 plus countries, and FICCI Chemicals and Petrochemicals Awards. 12th Biennial International and Conference India Chem from 6th to 8th October 2022 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai. See you there. And for more information, visit www.indiachem.in. Indian chemical and petrochemical sector is a key pillar of the economy. This sector accounts for 7% of India's GDP. India is the 6th largest in the world in chemical sales, and it contributes nearly 3% of the total global chemical industry. Indian chemical and petrochemical industry is highly diversified, and it covers more than 80,000 commercial products. Plays a vital role in facilitating the growth of several downstream industries, employs more than 2 million people. It has witnessed a healthy growth over the years and is expected to surpass $300 billion by 2025. To highlight the true potential of Indian chemicals and petrochemicals industry and to showcase the investment opportunities in petroleum, chemicals and petrochemicals investment regions, Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry are jointly organizing 12th Biennial International Exhibition and Conference, India Chem,
from 6th to 8th October 2022 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai. Vision 2030, Chemicals and Petrochemicals Build India, theme of India Chem. India Chem is one of the largest composite events of the chemicals, petrochemicals and process and plant machinery industry of the Asia-Pacific region. The key highlights of India Chem 2021 were Global CEOs Forum, India-US Chemical and Petrochemical Forum, India-Japan Chemical and Petrochemical Forum, India-EU Chemical and Petrochemical Forum, Conclave on Specialty Chemicals, Conclave on Petrochemicals, Conclave on Agrochemicals. More than 100 plus national and international exhibitors, 10,000 plus business delegates from 25 plus countries, and FICCI Chemicals and Petrochemicals Awards. 12th Biennial International and Conference India Chem from 6th to 8th October 2022 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai. See you there. And for more information, visit www.indiachem.in. Indian chemical and petrochemical sector is a key pillar of the economy. This sector accounts for 7% of India's GDP. India is the 6th largest in the world in chemical sales, and it contributes nearly 3% of the total global chemical industry. Indian chemical and petrochemical industry is highly diversified, and it covers more than 80,000 commercial products, plays a vital role in facilitating the growth of several downstream industries, employs more than 2 million people. It has witnessed a healthy growth over the years and is expected to surpass $300 billion by 2025. To highlight the true potential of Indian chemicals and petrochemicals industry and to showcase the investment opportunities in petroleum, chemicals and petrochemicals investment regions, Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry are jointly organizing 12th Biennial International Exhibition and Conference, India Chem, from 6th to 8th October 2022 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai. Vision 2030, Chemicals and Petrochemicals Build India, theme of India Chem. India Chem is one of the largest composite events of the chemicals, petrochemicals and process and plant machinery industry of the Asia-Pacific region. The key highlights of India Chem 2021 were Global CEOs Forum, India-US Chemical and Petrochemical Forum, India-Japan Chemical and Petrochemical Forum, India-EU Chemical and Petrochemical Forum, Conclave on Specialty Chemicals, Conclave on Petrochemicals, Conclave on Agrochemicals. More than 100 plus national and international exhibitors, 10,000 plus business delegates from 25 plus countries, and FICCI Chemicals and Petrochemicals Awards. 12th Biennial International and Conference India Chem from 6th to 8th October 2022 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai. See you there. And for more information, visit www.indiachem.in. Indian chemical and petrochemical sector is a key pillar of the economy. This sector accounts for 7% of India's GDP. India is the 6th largest in the world in chemical sales, and it contributes nearly 3% of the total global chemical industry. Indian chemical and petrochemical industry is highly diversified, and it covers more than 80,000 commercial products, plays a vital role in facilitating the growth of several downstream industries, employs more than 2 million people. It has witnessed a healthy growth over the years and is expected to surpass $300 billion by 2025. To highlight the true potential of Indian chemicals and petrochemicals industry and to showcase the investment opportunities in petroleum, chemicals and petrochemicals investment regions, Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry
are jointly organizing 12th Biennial International Exhibition and Conference, India Chem, from 6th to 8th October 2022 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai. Vision 2030, Chemicals and Petrochemicals Build India, theme of India Chem. India Chem is one of the largest composite events of the chemicals, petrochemicals and process and plant machinery industry of the Asia-Pacific region. The key highlights of India Chem 2021 were Global CEOs Forum, India-US Chemical and Petrochemical Forum, India-Japan Chemical and Petrochemical Forum, India-EU Chemical and Petrochemical Forum, Conclave on Specialty Chemicals, Conclave on Petrochemicals, Conclave on Agrochemicals, more than 100 plus national and international exhibitors, 10,000 plus business delegates from 25 plus countries, and FICCI Chemicals and Petrochemicals Awards. 12th Biennial International and Conference India Chem from 6th to 8th October 2022 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai. See you there. And for more information, visit www.indiachem.in. Indian chemical and petrochemical sector is a key pillar of the economy. This sector accounts for 7% of India's GDP. India is the 6th largest in the world in chemical sales, and it contributes nearly 3% of the total global chemical industry. Indian chemical and petrochemical industry is highly diversified, and it covers more than 80,000 commercial products, plays a vital role in facilitating the growth of several downstream industries, employs more than 2 million people. It has witnessed a healthy growth over the years and is expected to surpass $300 billion by 2025. To highlight the true potential of Indian chemicals and petrochemicals industry and to showcase the investment opportunities in petroleum, chemicals and petrochemicals investment regions, Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry are jointly organizing 12th Biennial International Exhibition and Conference, India Chem, from 6th to 8th October 2022 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai. Vision 2030, Chemicals and Petrochemicals Build India, theme of India Chem. India Chem is one of the largest composite events of the chemicals, petrochemicals and process and plant machinery industry of the Asia-Pacific region. The key highlights of India Chem 2021 were Global CEOs Forum, India-US Chemical and Petrochemical Forum, India-Japan Chemical and Petrochemical Forum, India-EU Chemical and Petrochemical Forum, Conclave on Specialty Chemicals, Conclave on Petrochemicals, Conclave on Agrochemicals, more than 100 plus national and international exhibitors, 10,000 plus business delegates from 25 plus countries, and FICCI Chemicals and Petrochemicals Awards. 12th Biennial International and Conference India Chem from 6th to 8th October 2022 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai. See you there. And for more information, visit www.indiachem.in. Indian chemical and petrochemical sector is a key pillar of the economy. This sector accounts for 7% of India's GDP. India is the 6th largest in the world in chemical sales, and it contributes nearly 3% of the total global chemical industry. Indian chemical and petrochemical industry is highly diversified, and it covers more than 80,000 commercial products, plays a vital role in facilitating the growth of several downstream industries, employs more than 2 million people. It has witnessed a healthy growth over the years and is expected to surpass $300 billion by 2025. To highlight the true potential of Indian chemicals and petrochemicals industry and to showcase the investment opportunities in petroleum, chemicals and petrochemicals investment regions,
Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry are jointly organizing 12th Biennial International Exhibition and Conference, India Chem, from 6th to 8th October 2022 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai. Vision 2030, Chemicals and Petrochemicals Build India, theme of India Chem. India Chem is one of the largest composite events of the chemicals, petrochemicals and process and plant machinery industry of the Asia-Pacific region. The key highlights of India Chem 2021 were Global CEOs Forum, India-US Chemical and Petrochemical Forum, India-Japan Chemical and Petrochemical Forum, India-EU Chemical and Petrochemical Forum, Conclave on Specialty Chemicals, Conclave on Petrochemicals, Conclave on Agrochemicals. More than 100 plus national and international exhibitors, 10,000 plus business delegates from 25 plus countries, and FICCI Chemicals and Petrochemicals Awards. 12th Biennial International and Conference India Chem from 6th to 8th October 2022 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai. See you there. And for more information, visit www.indiachem.in. Indian chemical and petrochemical sector is a key pillar of the economy. This sector accounts for 7% of India's GDP. India is the 6th largest in the world in chemical sales, and it contributes nearly 3% of the total global chemical industry. Indian chemical and petrochemical industry is highly diversified, and it covers more than 80,000 commercial products, plays a vital role in facilitating the growth of several downstream industries, employs more than 2 million people. It has witnessed a healthy growth over the years and is expected to surpass $300 billion by 2025. To highlight the true potential of Indian chemicals and petrochemicals industry and to showcase the investment opportunities in petroleum, chemicals and petrochemicals investment regions, Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry are jointly organizing 12th Biennial International Exhibition and Conference, India Chem, from 6th to 8th October 2022 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai. Vision 2030, Chemicals and Petrochemicals Build India, theme of India Chem. India Chem is one of the largest composite events of the chemicals, petrochemicals and process and plant machinery industry of the Asia-Pacific region. The key highlights of India Chem 2021 were Global CEOs Forum, India-US Chemical and Petrochemical Forum, India-Japan Chemical and Petrochemical Forum, India-EU... Ladies and gentlemen, may I have your kind attention? I would request everybody to kindly take their seats. We would request you to carry your cups to the tables so that we can move ahead with the proceedings of the next session. We request everyone to kindly carry their cups to the table so that we can go ahead with the next session, which is a panel discussion session on policy landscape for flourishing agrochemicals industry. accounts for 7% of India's GDP. Ladies and gentlemen, and now for the next session, which is a panel discussion on policy landscape for flourishing agrochemical industry, I would like to invite our eminent panelist. May I invite Mr. Ashok Verma, partner PwC India,
Let's put our hands together to welcome him. Also inviting on the stage Mr. Rafael Del Rio, Chairman Syngenta India Private Limited. A very warm welcome to you, sir. Inviting Mr. Shubhra Jyoti Roy, Senior Vice President, Jubilant Ingrevia Limited. A very warm welcome to you, sir. Inviting Mr. Puneet Singh Thind, Director, Northern Farmers Mega FPO. And also inviting Mr. Angelo D. Quiroz Mauricio, Agriculture Attaché, Embassy of Brazil. So ladies and gentlemen, at the back, I would request everybody to kindly take their seats. You can please carry your cups to the tables. आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने स्थान ग्रहण कर लें. आप चाय कॉफी के कप्स अपने टेबल पर लेके बैठ जाएं. And ladies and gentlemen, to begin the panel discussion on policy landscape for a flourishing agrochemicals industry, we begin with the opening presentation by Mr. Ashok Verma, partner PwC India. He leads the agri and social sector advisory practice in India, has over 24 years of progressive experience of working with prominent clients from the public, private, and the development sectors. He has led several engagements in the areas of policy advisory, capacity building program design, large-scale program management, transaction advisory for PPP, risk management, institutional strengthening, governance, monitoring and evaluation, and implementation of large engagements in the agriculture and the livelihood sectors. And may I now invite Mr. Ashok Verma, partner PwC India, for his opening presentation. But before he begins his presentation, once again requesting everybody to be seated. All our guests at the back are kindly requested to take their seats. And over to you, sir, for your presentation. Can I use it here? Good afternoon, everyone. As I think our MC requested, we would like to request you to sit and maybe we could start the session. Thank you. Good afternoon. Dignitaries present on the dignitaries present here, Mr. Rafael, Chairman, Syngenta India Private Limited, Mr. Shubhra, Senior Vice President, Jubilant Ingrevia Limited, Mr. Puneet, Director, Northern Farmer Mega FPO, Mr. Angelo, Agriculture Attaché, Embassy of Brazil. I would like to first thank FICCI for giving us this opportunity. So we were the knowledge partner for this event. We were also the knowledge partner for the last event, which was the 10th summit, which we had on the agrochemicals. So it's wonderful to be back here and sharing this dais and also sharing our views on this aspect. So I think most of the inaugural session speakers have already talked about the importance of Indian agriculture sector. Because if you look at the Indian agriculture sector, so it still has roughly over 50% of population, our citizens are dependent on agriculture. And that's something which came out much more, I would say, reinforced when we went through a spate of lockdowns, stringent ones, easy ones, flexible ones. All of that impacted our economy. When we talk about manufacturing and the services, both these sectors were suffering because of the lockdowns, the constraints which we had in the supply chain, the issues which we had because of the large pandemic-inflicted challenges.
During that period, Indian agriculture, in fact, actually showed the resilience and was one of the sectors, I would say primary sectors, which performed well and was able to, I would assume, that cushion that entire impact which would have had on the rural economy because of the challenges which we faced during the pandemic. So there is no need for me to reinforce the importance of agriculture which is there in the Indian economy. What are some of the key challenges which we are facing in agriculture today? So the low yield, which also has been highlighted by the previous speakers, I would say Mr. Agarwal, and also Soumya also talked about the challenges which we are facing on the yield side. And the yield is also going to get impacted significantly, at least in our part of the world, which is getting impacted significantly by the extreme climate events. It could be on also erratic climate events, which could be extreme weathers, extreme heat wave, extreme rain. All of these are impacting the agriculture in India. Apart from that, the low yield is also something which is getting, I would say, accentuated by all the new kind of pests which come in, resistance to some of the already existing general molecules which we are using as part of the agrochemical pesticides, insecticides and herbicides. All of this is actually impacting agriculture. So one of the other challenge which we are facing is, which everyone knows, is the small and decreasing land holding. And every year the land holding is only going to come down because of the way our traditional passing on the lands to the next generation is something which is going to happen. So that is something which is going to be there, and that's a problem which we have to deal with. And some of the policy level initiatives like collectivization of the farmers, farmer producer organizations, farmer producer companies, these are actually helping us to overcome some of the subscale activities which is happening in the agriculture and the farming sector. So I talked about the climate risk. I would also like to talk about the low investment in R&D. So there are a lot of investment which is happening on the emerging technologies. We see a lot of agtech. We see always when we talk about technology, it comes in only the digital or emerging technology. But there is an ag technology which is much, much different from the only emerging technologies. We have to start thinking about even the agrochemicals, which are a very equally important part of the entire farming and agri input side. How much R&D is happening on that side? How much R&D is happening on the allied sectors like fertilizer? Those are the things which is going to also define the way agriculture sector is going to transform in future. Just giving an overview of the agrochemical industry, I think most of you who are already familiar with this industry, we have close to around 50% domestic consumption and 50% export. So it's also an opportunity which is there for India to become the global agrochemical hub in future. And to make it happen, there's definitely a need for policy and regulatory push, which we will talk about in the subsequent slides. And some of the trends which we see, again, if you look at the agrochemical industry, and I think my previous speakers also talked about that very low per capita use of agrochemicals in India. Despite that, if you look at the amount of news, media, articles, and also debate which is happening around the use of pesticide, it's happening largely because of maybe, I think, very rightly pointed out by our guest of honor today, Mr. Samplaji, that maybe we are overusing it. We are not effectively using the agrochemicals, or we are not using the right ones, which is very important. And related issue which we are going to see in future, because most of the, I would say, the entire global economy is trying to look at sustainable solutions. And one of the biggest element which is going to come under the sustainable solution is the environment. And within that environment, we look at water as a very, very key element which we need to actually protect. And today, if you look at globally and also in India,
70 to 80% of the water which is available is getting used for irrigation or agriculture purpose. And there is a competing demand which is going to be there from the large urbanization which is happening. There would be large segment of residential population would be vying for this share of the water in future. Similarly, the industry also is going to look at a larger share or proportion of water to be coming to them. So that is something which is again going to create a challenge for us. So the entire sustainable agriculture is something which is going to be a thing which we need to address as a part of our industry as well. So that is where I think there is a need to relook at the regulations, relook at the policies, which is going to help us not only, I would say, increase the yield and productivity in agriculture sector, but also contribute to the sustainability and environmental issues which we are facing as a country. Some of the challenges which we already aware and was also brought in by our chief guest, Mr. Samplaji, when he said about the awareness, because everyone believes that more use of something can actually lead to a higher yield, is where there is a need for a behavior change. And he talked about changing the मानसिकता. The मानसिकता तभी change हो सकती है जब आप उसको अच्छी तरह से समझा सकें, farmers को हम समझा सकें कि मतलब how they are going to actually use the pesticides, insecticides and herbicides and all the agrochemical elements judiciously. And that is something which is very important. And that's one of the very clear reason that we also see a lot of adverse media around the agrochemical industry. So that is something which needs to be addressed. We also have high reliance on general molecules, and many speakers also already talked about the archaic regulatory processes which is actually not helping the registration and formulation of new molecules which is to come to the market. And Mr. Agarwal ji talked about that at least it takes maybe 3 to 7 years for a molecule to come to the market. And that's something which is very, very, I would say, sad story. If we can actually get vaccine for COVID in 1.5 to 2 years, why should we be looking at a 3 to 7 years wait for any molecules which is going to come to India? So I think it is possible to be done, but the right kind of policy instruments, rules, regulations need to be put in place. And the ease of doing business in terms of how the registration process can be streamlined and how technology could be used for doing this. We talked about also the counterfeit products. That's another challenge which we are seeing in this industry. And counterfeit products also, if we can use technology, and today with the mobile penetration, any farmer can easily scan a QR code. So is it possible for us as an industry to come up with a standard where every package or every container of the pesticides or we are using, it can be scanned and we can actually clearly indicate that this is a genuine product and not a spurious product. So is it possible for us to adopt some of these technologies which is going to improve traceability and also aid us to get the right product to the farmers? And we can use the same medium also to educate the farmer, because the mobile penetration being high, it is possible for us to actually provide the farmer with the correct usage procedures and processes, the health precautions which they need to take into account when they are actually using our product, is something could be done through a technology. So I believe the technology and innovation is something which need to be brought in, not only when we are talking about formulating new molecules, but also how this is getting used as a product by the farmers. Most of us are aware that there are two regulations, I would say the Act, 1968 Act and the 1971 rules, largely govern the use, storage, manufacturing, registration, monitoring of insecticides. It used to be insecticides. Now we are putting it larger umbrella into pesticides, is being governed by this.
The new bill, which is already in public domain for debate and also passed on to the parliamentary committee to look at, already covers most of the same, I would say the similar aspects in terms of the elements which was covered under the Insecticide Act 1968. Some of the new things which has been brought in also is to look at government has a now control over or right to regulate the prices. It also has a fund which can actually help get the penalties and fines which is imposed on erring manufacturers, distributors and others to put into a fund, and which could be used for compensating people or victims of some of these issues. So that is something which is a new thing. But the policy, I would say the act and the rules which is going to come is largely going to address some of these aspects. What is required here is a policy which is going to maybe spur and provide that catalytical growth to this industry. That is only going to come not as an act or regulation, but more as a policy level, I would say, intervention, where the policies can be clearly formulated to look at different aspects which we talked about. So one aspect which is in terms of the investment which is coming to this particular sector. One aspect is also the R&D or innovations which is going to be happening in this sector. How this could be spurred through a policy level change. And similarly, I think Mr. Agarwal also talked about some of the things which can spur the growth is also the right kind of maybe tax structures, or also the mechanisms which could be put in place for the ease of doing business to reduce the cycle time which is going to be there from registering to actually start using the product. So we believe there are 4 elements which we can think of. The first one is definitely to bring in awareness, and that awareness needs to be built in across the value chain. Definitely the biggest challenge which we face is to build that awareness at the farmer level, and how we can actually use some of the existing institutions, and also maybe the private sector can actually put in more investment to do those agri extension if it is not working effectively in a government enabled institutions. So the ATMA, which is like Agriculture Technology Management Agency scheme, which is already being implemented at the district level by most of the states. If it could be spurred and it could be partnered by the private sector organizations also to push this entire awareness to the customer. The second one, definitely, as I said, the regulation is something which is going to be very similar to what we had earlier, but definitely one thing which we need to change is the policy level interventions which need to come in, which is going to help the investment to come in, and also the new technologies to come in. So the mechanisms which we're talking about, ease of doing business, again could be done in a much better way if we can actually use the digital technology. So that's something which we should be talking about. And the last one, definitely, if you look at the entire ecosystem, there are new players who are emerging in this entire value chain. The farmer producer organizations are such an institution which is emerging in that entire agri value chain. So there are a lot of FPOs are getting the license to run their agri input shops, and that is something which is heartening to see, and which is going to definitely maybe I would say crunch that entire long value chain which we have in the agri value chain in terms of the supply chain when we talk about as an agrochemical industry. And that's something which is going to be definitely useful for further growth of the industry. And some of the other things like continuous investment in the areas of the storage, warehousing, which includes the agrochemical as well, is something which is going to help us. So that's broadly, we thought that as one of the key recommendations to address the challenges which is being faced by the agrochemical industry. Thank you. Thank you very much indeed, sir, for that opening presentation. And ladies and gentlemen, now we have the
panel discussion, session 1 on policy landscapes for a flourishing agrochemical industry. And on the stage we have with us Mr. Rafael Del Rio, who is the chairman, Syngenta India Private Limited. And sir, may I ask you that how do you see policy landscape for agrochemicals in context of the industry? If you could just throw some light on that. Hello everybody, can you hear me? Yes? Well, first I would like to do a kind of introduction. I'm Rafael Del Rio, I'm from Chile, from South America. I have been working 30 years already in the agriculture area and been living in many countries, in Brazil as well. So I have seen a lot, and I can tell you, what I can see in India is opportunities, opportunities, and opportunities. You have the size, you have the resources, and the world needs India. That is the first thing that I can say. The second one is about what we need to do for really be a hub for agrochemicals for the world, and also to be a food exporters. That is what I think that we need to put an eye on. India needs to have better policies, upgraded to be competitive. We need to have better roads. We need to have better cold storage. Here, you know more than me that farmers are very small. So FPOs are key for success, where you can do aggregation of the produce and then export. I see the government really working hard to bring the right policies, but we need to put an eye in some of them. And I will touch one of their points. First, in the industry, for doing registration for a new product takes double of the time that it takes in other countries. That means that the technology arrives to India, but it takes too much time to make it available for the farmers. The other thing is about investment. All of you that invest, you want to protect your investment. And there is no data protection that I call innovation protection for the regulatory data for the new products that you are bringing in. That should be there. Worldwide, it's about 5 to 14 years of protection. We are not asking more than 5. And it's fair, because if you invest money, you want to recover the money that you invest. And this is for the whole industry. Yeah? The other thing that I see that is important that is coming is the artificial intelligence. You have been talking about that. Drones is one of it, but you need to look to soil health. You need to do analysis of all the information that is coming, because we are not taking decisions with information. We are taking decisions because of our past knowledge. We need to analyze and to do the right thing. It's very important that India needs to understand that going to be a global player needs to follow the global rules. That is the way that you can compete. And this country has everything. I have been traveling 4 years in this country, from Kashmir to Kanyakumari, all around the country. And the only thing that I see is opportunity for all of you. So I see the government working very close with the privates, but it still is missing the right policies. One more that is really important, in the pesticides management bill, is still a minor offense can lead you to imprison. And that is totally unbalanced. We need to review that. The mistakes needs to have the right punishment, but cannot be in prison the minor offenses. So there are a lot of things to do, and I will encourage you to really work close with the government and with the privates, because we are going to make this country successful. Nobody else. Thank you. Thank you very much indeed, sir.
And ladies and gentlemen, on that note of Mr. Rafael's about policy changes in our country, we understand that agrochemical sector at Brazil has grown significantly over the last decades. So we would like to ask Mr. Angelo de Quiroz Mauricio that which areas of intervention enable these changes? Good afternoon, everybody. The good thing, as I used to say, the good thing about being together with such eminent and august speakers and speaking after them is that most of the important things have already been said, so it makes things easier. Well, anyway, Brazil is a big producer and consumer country with different realities from the north to the south, different realities of soil, of weather conditions, of availability of water, vegetation, population, just as India is. And this means that we need to cope with different scenarios, different needs, and different demands. And indeed, Brazil, the agrochemical sector in Brazil has grown a lot, hugely, in the last 30, 40 years, as well as the demand for food, as well as the productivity. Actually, they have grown more or less in the same, with similar rates in the past years. But how to put together all these aspects and come out with a good solution for all this? Actually, I don't have the magic formula, but I can tell you what we have done and what we are doing, what we have been doing this time, which is heavily invest in research, development, and innovation. We have prioritized the research in agriculture in the last 40 years. We have invested a lot, both in public and private research centers, and we have been encouraging them to work together, actually, because they need to work together. Both the public and the private sectors, they need to work together, they need to engage. We have been encouraging them to engage into joint projects, to work together, to come out with solutions. And that's pretty much what happened in Brazil in the last 40 years, that changed completely the scenario from importer to exporter, to a major exporter. So we have been investing in research and development and innovation. But not only that, there is a need for a following step, because once the new products arrive out of the research, there is a need for, let's say, assessing them. And people use this expression fast track. I would prefer to use the expression effective track, because there is a need to analyze, to assess those products, those new products that are coming up in a more effective way, in a more quick way. And we've been establishing the parameters for assessing this and prioritizing the assessment. And this is really something that needs to be done if you want to make use and to take advantage of all those good technologies that are coming out. So that's pretty much what we have been doing in the last, years. So it's been more than almost 4 decades that Brazil has changed Sir Sera's policy in agrochemicals. And from here we move on to Mr. Puneet Singh Thind, who's been a farmer himself. So how have you seen the usage of agrochemicals by farmers develop over the last decade? Good afternoon to all. First of all, thank you to the FICCI team for having me here representing Farmer Producer Organization. Northern Farmer Mega FPO, we are a federation of FPO in Punjab and Haryana. And we see a new modern cooperative, a farmer cooperative, as a tool to aggregate, to link farmers to the market. It's a solution, I think, we need to have before any other solution in the country as far as agriculture is concerned. And rightly, my co-speaker already mentioned about it. As far as agrochemicals are concerned, in the first session, Agarwal ji rightly mentioned that agrochemical
industry is facing a challenge about the image. कि हमारी जो एग्रीकल्चर एग्रोकेमिकल को लेकर जो एक इमेज है वो बड़ी आई वुड से डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन उससे भी बुरी बात क्या है कि जो फार्मर की इमेज है एग्रीकल्चर और एग्रोकेमिकल को लेकर वो उससे भी ज़्यादा खराब है. I mean, even in the first session, I was in fact very surprised to see this is not the platform where we should, only mention कि सारे देश में पता नहीं हम कितना गुनाह कर रहे हैं खेती करके, वो उड़ता पंजाब काइंड ऑफ इम्प्रेशन. इवन हमारे चीफ गेस्ट साहब भी पंजाब से आते हैं. पंजाब में आई डोंट नो कि पिछले 10 साल में उन्होंने फार्मर को कितना चेंज होते हुए देखा है. The question you mentioned, how agriculture usage and practice have changed. They have changed drastically. And thanks to social media, connectivity, things are not too far where we exchange best package of practices, best molecules. So especially related to agrochemicals. Exactly. I mean, we share a lot of practices which each other. But my concern is that farmers are changing. And this is the 11th agrochemical, conference, and we are listening the same response for us as a farmer. So, कहने वालों का impression change नहीं हुआ. Farmers are changing. It shows कि either we are not connected to the farmers at the roots, and we are not able to see what changing is actually happening on the ground. So, ये जो एक होता है ना कि बड़ा easily हम तोहमत लगा देते हैं. And states like Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, look at the global average of wheat, rice, basmati. We match with the best yield in the world. हम 3 फसलें लेते हैं. Our crop intensity is best in the world. So, जब हम bulk कर लेते हैं ना, सबसे बड़ी गलती mistake we make in India, we try to do everything in bulk average. So, what is Punjab average is altogether different from somewhere in the central and east part of India, and we need to have a model for different states, and different model can coexist in India. But when we talk in bulk, we make a lot of mistake, and they are actually evident in the policy. Look at the government or Ministry of Agriculture policy for farmers. They tend to consider all geographical area, all microclimate zone as the same. They don't take in consideration the social fabric, how farmers can mobilize in a particular area. So these are the gaps which we need to identify and connect. One thing which again our chief guest said कि कोई भी नई चीज है वो forcefully आप impose नहीं कर सकते. और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट को फार्मर ने ही समझाया है. So एग्रीकेमिकल्स का यूज आपने पिछले 10 साल में बढ़ते हुए कैसे पॉजिटिवली नेगेटिवली कैसे देखा है? पॉजिटिवली आई वुड से कि फार्मर की जो प्रैक्टिस है ये इम्प्रूव हुई है, बट आई कांट सी दैट रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन कमिंग फ्रॉम द different sector for the farmers. They should appreciate what is happening on the ground. Thank you, sir. So, ladies and gentlemen, moving from the farmer's perspective towards the industry perspective on agrochemicals, I would like to ask Mr. Subhrajyoti Roy that if he could highlight the opportunities in AgChem business for Indian companies. Good afternoon to all of you. Thank you for the invite. I think in my view, we have got a golden run for next 1 decade and a half moving forward. Now, why do I say so? I mean, the earlier speakers have indicated, the various aspects that would influence the growth of Indian agrochemical industry. So let's take a look from a 40,000 feet view. Let's start talking about the food security part of it. So, in 2006, the world has had, 5.5 billion people. Today, it's close to 7.7, and it's estimated that by 2050, we are going to have 10.5 billion people, which means that the food that is currently grown around the world has to go up by 1.5 times. Now,
The problem is that globally the land mass is constant, okay? And these are fully utilized except for the pastures in Brazil and the African subcontinent, right? And therefore, what is important that we get into the integrated pest management, judicial use of products, newer products, and then in a country like India where the consumption of agrochemicals is significantly low in comparison to the Western world or our neighboring country, Pakistan, for instance. I mean, Agarwal ji had indicated 340 grams per hectare as against in China 13 kilos, in US is 7 kilos. So there's a huge opportunity for domestic consumption. That is point one. Point two is the madness that is happening in China. So you have environmental stringencies that has led to shutdown of thousands of factories, and India has been historically very dependent on imports of raw materials from China. So that is one area that India can focus on. Second is that we have been bulldozed by Chinese companies with respect to cost aspect of it. I mean, they have been extremely competitive, but what's been happening is that investors in China is now demanding organization to display profitability. And in light of the current labor cost going up, utility cost going up, the prices are increasing, and therefore it gives a bit of a level playing field of Indian manufacturers to kind of compete with Chinese manufacturers. The other important thing that came of late is the US-China trade war. So there has been tariff which has been imposed on imports of Chinese goods, and India must take advantage of that. The last but not the least point, which is to do with the intent of innovators, Syngentas, Corteva, FMC, Bayer, BSF, and generic multinational China plus one approach. They are looking at, they wouldn't like to put all the eggs in one basket, which has been historically been China. So they're looking at India to be one of the key geographies that will help in synthesizing the product they want. So I think, as I said, Indian manufacturers should be concentrating on building capacities. As I understand, historically over last if I talk about early, mid 2015, 2016, the overall investment in the industry, chemical industry, has been 30 to 40,000 crore. I mean, and industry takes a cognizance of what's been happening around. And as I speak today, the overall investment going is 1,500 crore. That's a huge money. So, so India is going to take the center stage as we move forward. Thank you, sir. And ladies and gentlemen, in his opening presentation, Mr. Ashok Verma gave an overview of the policy landscape in context of agrochemicals and policy recommendations. So in the current policy landscape, where do you think policy interventions can significantly improve the profession of agriculture sector? I think, is it audible? Yes, sir. I think if you look at the regulatory landscape, it is something which is still going to be very similar to what it used to be earlier. Only thing, I think some of the points I think Mr. Rafael also talked about, like we need to differentiate between a minor offense and a major offense which is going to be there, and that's something which is very important. Otherwise, it is, because the Act is going to provide a framework, but the rules and the institutions which is actually going to implement may look at it in a very different manner. Act may be very good from an intent purpose, but the way it is going to get interpreted is always going to be different. But I believe that at the policy level, there can be a lot of changes which can be done, and which include how R&D is going to be, or research and development innovation is going to get promoted in this sector, how we can make this industry more global. So some of the principles, I think, again, Mr. Rafael talked about in terms of protecting the data, IPR,
all of those things are going to become very clearly important. So those are things need to be coming through a policy separately, and also maybe something to aid the industry in terms of a production linked incentive or an incentive which is actually going to aid this sector to grow in future is something which is important. Thank you, sir. And coming back to Mr. Rafael, so we would like to ask you which areas of agrochemical sector can improve significantly through policy interventions, do you think? Well, before I address the question, I would say I have been listening about the consumption of agrochemicals in India. That is 300 grams per hectare, and in China, 13 kilos. What the industry is looking for is for policies that allow us to bring our last technology for the farmers. We are not looking for increasing consumption. We are looking for increasing yields, quality in a sustainable way for farmers. If that brings that they need to use a little bit more product, is welcome. But it's not our aiming. You need to understand that we are here because we want the right policies so we can bring our innovation, last products, immediately to India. That is what we are talking about, okay? So that is very clear. What I think that things that the industry needs. In all new products, you register the process of the formulation. But during the product life cycle, processes are improved. In most of the countries in the world, that is called minor changes, and you don't need to register again the molecule. In India, you need to start from zero. That means that it's a huge delay for us to bring new technologies. All the new improvements cannot come because you need to do a full registration, what in all other countries are called minor changes. That is something that we need to address now. About this minor offense that you already talked, Ashok, is absolutely right. It's not possible that because there is a misbranding mistake, the legal representative of a company goes to jail. That can happen in all industries, and it's a mistake that can be fixed. So there needs to be a balance there. The other thing that we need to work, as I said, and I will repeat, is innovation protection. That many of you talk about data protection. What we are asking is that for all new products, the regulation data that we send needs to be protected at least for 5 years. And that is fair because we have invested millions of dollars on the new technology that we want to bring. So those things are minor things that needs to be changed, but will change the landscape and also will facilitate the industry to bring new products. With this, I will finish. Worldwide, we have approximately 1,200 molecules. In India, we work with 270, but most of the products are only in 75 products plus mixtures. What about all the other technology that is not here that can come? That is what we are talking. How we facilitate that 1,000 products that are not in India come here to help farmers, because we are looking for more yields, better quality, and being sustainable. That is the key for the future. Thank you, sir. Mr. Rafael spoke about sustainable solutions, and keeping sustainability in mind, I would like to ask Mr. Angelo Mauricio that which areas should any government focus upon to ensure growth of the agrochemicals? Well, that would be pretty much the same answer. And the way we see it, it's a rather simple equation, actually. First, invest in research, development, and innovation. And let science, let good science, good and sound science, provide new solutions for old problems, new and safe solutions for old problems. That would be the first thing. Plus, of course, a new mechanism, a new strategy to
evaluate and to assess those technologies, those products that are coming up from the research, and try to assess them in a quicker way, in a more feasible and reasonable way. But not only that, the third thing would be to invest also in rural extension services, so the products the technologies that were developed and registered can actually reach the farmer, because the farmer and the consumer are the very reason for all this work. So these technologies that were developed and after that assessed and registered, they need to reach the farmer. So there is a need to invest also in extension services to provide, to allow the farmers, to allow the consumers to have access to all these technologies. This is, I know that this is not as easy as I speak here, but anyway, it's rather simple. It's a simple equation. Thank you, sir. And that's what we've been doing, trying to do at least. And you have done it successfully. And when we speak about policy and policy interventions, I would like to ask Mr. Shubhra Jyoti Roy that what are the current challenges they face and what is the support they seek from the government? The industry, basically. So first of all, from the sustainable point of view, I think government has done quite a bit in the last several years. First and foremost, the business responsibility and sustainability report, which increases the transparency and accountability while you are disclosing information. And while you do so, you are expected to offer substantial data to make sure that you are demonstrating your intent, that you are looking at significant carbon footprint reduction. That is point one. There has been strict mandate from the center as well as state government from the standpoint of energy consumption and energy reduction. National Green Tribunal in tandem with MOEF has been working hard to make sure that there is a proper effluent management and sewage treatment standards. However, from the standpoint of what would ask government from a sustainable point of view is that there is less availability of green fuels, be it biogas or biodiesel, and the current prices are not affordable, so government should be looking into to see how to reduce that. Second is that green tax imposition to the polluting industry, and the mandate is very clear that should be very clear that if you pollute, you'll be taxed, and at the same time there should be tax rebate that should be given to industries who are very compliant. Thirdly, I believe that there should be green investment subsidies, tax rebates for lower carbon energy consumptions, for example, EV, solar panels, and renewable energy. So these are the several points I believe that government should look at to address sustainability. Thank you, sir. And ladies and gentlemen, we now would like to end this discussion with the last question to the farmer on the panel, Mr. Puneet Singh ji. We would like to ask you that what are the key challenges the farmers face in the terms of purchasing and using of agrochemicals? In different parts of the country, as I earlier mentioned, things and supply chain challenges are quite different from place to place. In general, farmer face challenge the supply chain issues when a particular chemical is either in shortage or there is a pest attack in a particular part of the country. Now, FPOs, as I mentioned, they help farmers in selecting the right chemical at the right time. We collectively, as we call it, demand aggregation, we aggregate our demand and we normally contact to the right officers in the company, so that not only we can get the genuine quality of the chemical when it is urgently required, and also we ensure the delivery part is taken care well on time before it is too late. So in India, even in the FICCI committee, we have studied a few years back
around 25 to 30% of agrochemicals which are either not registered, substandard, fake. So when farmer require a chemical, so these agents became quite active, and that's the loss, net loss to a farmer. And unless we don't have a mechanism to control these unregulated agents, I mean, we really don't deserve ourselves to compare with a country like China. So look at the figure of 13 kg or more than 10 kg vis-a-vis what we are consuming today. Imagine if we have a same system and we are proposing more than 2 and 3 times of chemical, what will happen to the farmers who have no way to buy a genuine input? And second challenge farmer face is a credit sale. We call it interlocking. So the person who is selling agrochemical on a credit, now he make the farmer bound to sell his crop back to him, and he give again the credit for the next crop. So one way he is interlocked. So when farmers interlock with someone who is working only for the sake of commission, so he is not bothered. He is recommending Syngenta or Dhanuka or any genuine product. He will sell what he is earning most of a chemical. And new technology, of course, is a challenge in adaptation is taking a lot of time. So first we have a farmer who are progressive, they adopt a new technology, then the fellow farmer, they observe the result, and then the other farmer follow. So in a FPO and cooperative, we can connect this dot by, covering more area, more number of farmers in a given time. These are the basic challenges which farmers are facing in terms of fertilizer and chemicals and new solutions. Thank you. Thank you, sir. So I think that was a genuine concern or a challenge that all the farmers are facing as far as agrochemicals are concerned. But ladies and gentlemen, the time is over. We have a very eminent panel here. I wish we could have some more discussions with them, but we are running short of time. So I would like to thank each one of you for those wonderful inputs we had, some valuable inputs we had from all of you, and close this session. And we would now break for lunch, ladies and gentlemen. But I would request everybody to be seated back by 2 o'clock, as we have the Honorable Ministers, the Agriculture Minister and the Honorable Minister of State for Chemicals and Fertilizers joining us post-lunch. So once again, requesting everybody to be seated back at 2 o'clock. Thank you. Sixth largest in the world in chemical sales, and it contributes nearly 3% of the total global chemical industry. Indian chemical and petrochemical industry is highly diversified, and it covers more than 80,000 commercial products. Indian chemical and petrochemical sector is a key pillar of the economy. This sector accounts for 7% of India's GDP. India is the sixth largest in the world in chemical sales, and it contributes nearly 3% of the total global chemical industry. Indian chemical and petrochemical industry is highly diversified, and it covers more than 80,000 commercial products. Plays a vital role in facilitating the growth of several downstream industries, employs more than 2 million people. It has witnessed a healthy growth over the years and is expected to surpass $300 billion by 2025. To highlight the true potential of Indian chemicals and petrochemicals industry, and to showcase the investment opportunities in petroleum, chemicals and petrochemicals investment regions, Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry are jointly organizing 12th Biennial International Exhibition and Conference, India Chem, from 6th to 8th October 2022 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai. Vision 2030, Chemicals and Petrochemicals Build India, theme of India Chem. India Chem is one of the largest composite events of the chemicals, petrochemicals and process and plant machinery industry of the Asia-Pacific region.
The key highlights of India Chem 2021 were Global CEOs Forum, India-US Chemical and Petrochemical Forum, India-Japan Chemical and Petrochemical Forum, India-EU Chemical and Petrochemical Forum, Conclave on Specialty Chemicals, Conclave on Petrochemicals, Conclave on Agrochemicals. More than 100 plus national and international exhibitors, 10,000 plus business delegates from 25 plus countries, and FICCI Chemicals and Petrochemicals Awards. 12th Biennial International and Conference India Chem from 6th to 8th October 2022 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai. See you there. And for more information, visit www.indiachem.in. Indian chemical and petrochemical sector is a key pillar of the economy. This sector accounts for 7% of India's GDP. India is the 6th largest in the world in chemical sales, and it contributes nearly 3% of the total global chemical industry. Indian chemical and petrochemical industry is highly diversified, and it covers more than 80,000 commercial products, plays a vital role in facilitating the growth of several downstream industries, employs more than 2 million people. It has witnessed a healthy growth over the years and is expected to surpass $300 billion by 2025. To highlight the true potential of Indian chemicals and petrochemicals industry, and to showcase the investment opportunities in petroleum, chemicals and petrochemicals investment regions, Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry are jointly organizing 12th Biennial International Exhibition and Conference, India Chem, from 6th to 8th October 2022 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon, Mumbai. Vision 2030, Chemicals and Petrochemicals Build India, theme of India Chem. India Chem
So, ladies and gentlemen, very warm welcome to the technical session on measures to strengthen the ambit of agriculture ecosystem and debunking myths about pesticides. We would like to invite on the stage our eminent speakers for this session. May I invite Mr. Mukund Dusad, who is the Regional Market Director, APAC, Novocare, Agro, Solvay's Innovative, and his presentation will be on Solvay's Innovative and Sustainable Solutions for Agriculture. A warm welcome to you, sir. Inviting Dr. Suresh Misra, Professor Public Administration and Chair, Professor and Coordinator, Indian Institute of Public Administration, IIPA. May I invite you, sir, to kindly grace the stage. And ladies and gentlemen, joining us virtually in this session is Ms. Mihela Claudia Pon, who is Program Management Officer, United Nations Environment Program, UNEP. Once again requesting everybody to be seated. Ladies and gentlemen, the Honorable Ministers would be joining us shortly. Meanwhile, I would like to invite for the presentation on insights on ways to minimize environmental and health impacts of pesticides and fertilizers. On the virtual mode, we have with us Ms. Mihela Claudia Pon, who is the Program Management Officer, United Nations Environment Program. And as a Program Management Officer, she primarily focuses on the provisions of project and program management on the prevention, minimization, and environmentally sound management and persistent organic pollutants. So, ladies and gentlemen, I hand over to Ms. Mihela Claudia Pon for her presentation. Ma'am, can you hear us? Yes, I can hear you. Can you hear me back? Yeah, over to you, ma'am, for your presentation. Thank you so much. And good afternoon, distinguished delegates. Ma'am, I would request you if you could kindly conclude in 10 minutes as the Honorable Ministers would be joining us. Yes, sure. Yeah, thank you. Thank you. Over to you. Thank you. So, good afternoon, distinguished delegates. It's an honor for me to represent the UNEP organization within this conference. So, I will start my presentation. Basically, I will do a short introduction of one of the UNEP reports which relates to pesticides and fertilizer. So in early 2017, member states at the third session of United Nations Environmental Assembly, which is the governing body of UNEP, underlined the importance of avoiding and minimizing the risk posed by harmful chemicals for human and environment health, including biodiversity. At that time, they agreed upon a number of measures, recommendations to address them, including adopted a UNEA resolution which requested UNEP to present at the fifth meeting of UNEA a report on environmental and health impacts of pesticides and fertilizers and ways on minimizing them, given the lack of data in that regard. So the decision also requested that the report to be developed in close collaboration with World Health Organization, Food and Agriculture Organization, and other relevant organizations. The report also encouraged research institutions to widely share the results of the epidemiological and other relevant studies, including environmental monitoring and assessment, so that decision-making can be informed in their decision-making process. So at the fifth meeting of UNEA, which took place in February 2021, UNEA presented the summary for policymakers on pesticides and fertilizers, which focus on the information that is required for policy decision at the global level. It also talks about the diversity of the drivers, actors, and policy that are shaping the use of pesticides and fertilizer, but also look at current and projected patterns of use and minimizing the adverse impacts of pesticides and fertilizer use.
And not least, it tackles the importance of ambitious collaborative action to achieve the objectives of the global community in this field. So at the second session of UNEA, fifth meeting, which took place this year in February, UNEP presented a longer synthesis report on pesticides and fertilizer, which is going more in depth than the details that were included in the summary for policymakers. So the synthesis report is a condensation of a comprehensive compilation of scientific information. It consists information on key findings and options for action, but also on global drivers, actors, and policy affecting the pesticides and fertilizer use. Not least, provides information on status and trends, regulatory and policy environmental and health effects, impact of use, and risk reduction in risk management aspects. So the report puts forward 6 key findings. Among these, I will focus on just 3 of them today at this conference. So pesticides and fertilizer provide a wide range of benefits, but due to the lack of effective management, this comes at the cost of a range of adverse impacts on the environment. Pesticides and their degraded products, for example, are frequently found at levels exceeding their legal and environmental standards, and the adverse impacts of fertilizer are mainly caused by their excessive and inefficient use. There is still a huge knowledge gap that exists and hampers the full understanding of some of the harmful impacts of pesticides. But still, the available evidence provides sufficient justification for additional public and private actions. To achieve a chemical-safe future with minimal adverse impacts from pesticide and fertilizer, both incremental and transformative actions are required. The transformative actions are the broader sectoral developments and improvements. The main types of priority transformative action the reports talk about are displayed here on this slide. Alongside these general transformative actions, 2 sets of priority actions are given in the report, which are focusing on strengthening pesticides and fertilizer and nutrient management aspects, which include like capacity building or risk assessment of certain chemicals, but also policy making type of decision. So the trends and opportunity presented in the report point in one direction. While stakeholders in the value chain and agri-food systems are contributing to minimize adverse effects of pesticides and fertilizer, government, including regional and local authorities, private sector, research institutions, and other stakeholders are encouraged to scale up their commitments and action to advance the sustainable use of pesticides and fertilizer through collaborative action. This can also be scaled up through targets and roadmaps. So, for example, this roadmap could develop on specific topics or themes, such as advancing adoption of sustainability standards, minimizing the effects, the adverse effects of highly hazardous pesticides, for example, or reducing pesticide and fertilizer runoff. They could also be elaborated at the national level to set specific goals and targets that needs to be achieved in a country on its path towards sustainable pest and nutrient management. So this is my concluding slide. So I thank you very much for this opportunity. I'm letting here on the slide the link to the 2 reports that I was talking about. So I wish you a fruitful discussion throughout the conference. Thank you so much. Thank you very much indeed for that wonderful, informative presentation. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for Ms. Claudia for the wonderful presentation we had from her.
And now I would like to invite Mr. Mukund Dosad, who is the Regional Market Director for the Agriculture's Specialities Asia Pacific Business of Solvay, based in Singapore. And he will be presenting on Solvay's innovative and sustainable solutions for agriculture. Please put your hands together to welcome him. Thank you. Good afternoon, everyone. Respected chief guest, ministers that couldn't join, but I guess would be joining shortly, Mr. R.J. Agrawal and Mr. Dr. Mishra. Very honored to be here at this stage talking about my organization, Solvay, and look forward to a very, very good session here. And would like to thank FICCI for giving me this opportunity to speak about the organization. Can I open this presentation? Okay. So I think the topic of today is very relevant in the current times, and as we have seen several speakers talk about the challenges to feed an ever-growing population, but with a declining acreage. And then we have this myth about the pesticides. And I think it's a fact that without the usage of pesticides or integrated pest management, we cannot feed this population. So the need of the hour is to have sustainable, innovative solutions that can be used by our farmers. And here we have a company like Solvay that has been in this field for several years. So we are a science company born in 1863. It's about 160-year-old organization, and we have technologies that are part of everyone's daily life. So from the daily morning, whatever you use, the products, in each of those products there is Solvay present. Globally, we are about 10 billion large company having about 100 plants and presence worldwide with about 21,000 employees. Sustainability is something that we wear on our sleeves. 53% of our business comes from the sustainable solutions. And the group basically seeks to create sustainable shared value for all. And we have a program which is called as the Solvay One Planet program, and through which basically we work around the 3 pillars. So one is the climate, resources, and basically working towards the better life. We have been present in India since a very, very long time, since 1950s. So even it's a Belgian MNC, but we are, as we call it as global, one of the banking companies coined that word, global plus local. And I was just sharing with Mr. Agrawalji that we have a very long history that we are in India. And today we have about 5 sites, one world-class R&I center based in Vadodara, and almost 500 employees, and with a revenue of about 1,200 crores. We have a joint venture with MP Birla Group Company for our Guar derivatives program that we use extensively in our products, mainly in agrochemical formulations as well as the home personal care products. So these are our Solvay One Planet goals. So very ambitious objectives that are centered around the 3 pillars as I just mentioned. Climate, so fight against the climate crisis. Resources, so embed the circular businesses. And better life, so improved quality of life. And here basically the key ones that we work around are the greenhouse gas reduction of the greenhouse emissions, which is in line with the Paris Climate Agreement. Increase our sustainable solutions. So today we are at 50%, but we want to go up to 65% by 2030, and increase our participation in the circular economy. As for the better life, of course, safety remains a prime concern for us, inclusion and diversity, and gender equality. I think one of the good examples of gender equality is we are the only company probably in the world, or maybe one of the few companies that offer a 16-week paternity leave. 16-week paternity leave for the fathers. Through our presence in India, we have this sustainable guar program because we use a lot of guar. Guar gums are primarily produced in Rajasthan, and 95% of the world's guar production happens in India. And this is a very dry and arid area.
And we realized that at the beginning of the value chain are the farmers that really do not benefit from this entire things. You know, this whole value chain that gives the guar gum to the retailers, to the distributors, and it comes to Solvay. And then we make our products, and then we sell to companies like P&G, Unilever's, L'Oreal. But we realized that at the beginning of this, at the front end of this value chain, the farmers remain poor. And then we thought, you know, something should be done about this. So we then tied up with an NGO, which is called TechnoServe. And then we tried to, you know, work towards improving the lives of the farmers, working towards the women empowerment, and then working towards the environment. So basically, the farmers were taught best agriculture practices and educated about the safe use of pesticides, how to increase the yields. Women were empowered, they were educated, and they were brought at par with the men so that they can also be employed, they can also develop their own kitchen gardens. They were taught about hygiene, they were taught about several other things. And then in terms of environment, we started working on soil preservation and also committed ourselves to use less of water. So this is one of the very nice programs that's always working on. Sorry. So we take a break? Okay, no problems. Sorry, okay, so we take a break as the ministers are here. Okay, thank you. Thank you very much indeed, sir. So ladies and gentlemen, the honorable ministers here. Please welcome our honorable chief guest would be joining us virtually any moment now. Yeah. Can you please check the audio from the minister's office? आपको आवाज आ रही है सर? Audible? Am I? Yes sir, आपको सुन सकते हैं. आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, इधर आ रही है. धन्यवाद सर, धन्यवाद. Thank you. Ladies and gentlemen, joining us any moment now on the virtual mode is our Honorable Chief Guest, Shri Narendra Singh Tomar ji, Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare.
और स्वागत करेंगे माननीय मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। आपका हार्दिक स्वागत है सर। Ladies and gentlemen, we welcome our Honorable Chief Guest, Shri Narendra Singh Tomar, Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, to the 11th Agrochemicals Conference 2022 organized by Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, FICCI, and being supported by Department of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, and Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India, on the theme Policy Landscape for Flourishing Agrochemicals Industry. और सबसे पहले निवेदन करना चाहेंगे श्री आरजी अग्रवाल जी से कि वे माननीय मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के स्वागत में कुछ शब्द कहें। नमस्कार। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंत्री भारत सरकार कृषि व कृषक कल्याण, और आज के सेशन में हमारे साथ भगवंत खूबा जी ज्वाइन करने वाले हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन केमिकल फर्टिलाइजर। आज के सेशन में मिस्टर प्रोफेसर सुरेश मिश्रा जी और मेरे इंडस्ट्री से कलीग मिस्टर दुसाद, आए हुए सभी वैज्ञानिक, इंडस्ट्री के कलीग्स, फार्मर्स, मीडिया के सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कृषि के क्षेत्र में हम सब लोग जानते हैं कि विश्व में कितनी तेजी से बदलाव हुए और उन बदलाव का फायदा धीरे धीरे भारत सरकार की नीतियों, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में और माननीय हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने देश में लागू की है। मैं उन बहुत सारी नीतियां मैंने सुबह प्रेजेंटेशन में बात की थी, लेकिन उसका फायदा आज देश के किसानों को हो रहा है। और जब किसान को फायदा होता है तो ऐसा सर्कल है कि पूरी इंडस्ट्री, पूरा सर्कल किसान की आमदनी के ऊपर चलता है। लेकिन आज हमारे कार्यक्रम में हमारे स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर कैलाश चौधरी जी ने ज्वाइन किया था अभी पिछले महीने, और उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, बहुत छोटी सी कहानी है। उन्होंने कहा जब हम एक गांव में कहानी बात करते थे बचपन से, तो जब एक सेठ की बात करते थे तो कहते थे एक गांव में एक अमीर सेठ रहता था, और जब किसान की बात करते हैं तो कहते हैं कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता है। तो ये किसान के साथ गरीब का शब्द कब तक लगा रहेगा? क्या आज शहरों में ही तरक्की होनी चाहिए, गांवों के किसानों के बीच में नहीं होनी चाहिए? जो आज हमारे नए भारत का सपना है, उसका रास्ता खेतों और गांवों और किसानों के बीच से होकर ही गुजरेगा। अगर आज गांवों में किसानों की तरक्की नहीं होती है तो शायद नए भारत का सपना, जितनी तेजी से हमारे प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया है, वो शायद पूरा ना हो। तो आज दो चार छोटी छोटी बातें मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखूंगा कि आज हमारे किसान बहुत मेहनत करते हैं, हमारे किसान बड़े मेहनती हैं, लेकिन विश्व के जो प्रगतिशील देश हैं उनके मुकाबले हम प्रति हेक्टर पैदावार देखें तो हमारे देश की पैदावार काफ़ी कम है। और पीछे 2015 में कृषि भवन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोलते हुए कहा था एक कार्यक्रम में कि हमारी प्रति हेक्टेयर पैदावार धान की 2 टन है, जो हमें बढ़ाकर कम से कम विश्व एवरेज के बराबर 3 टन करना चाहिए। ये 2015 की बात है, आज काफ़ी बदलाव हुए हैं। आज मैं सारे देशों से तो कंपेयर नहीं करता, लेकिन लेटेस्ट जो FAO का डेटा
चाइना का है और हमारा है। आज हमारी कृषि भूमि चाइना से 30% ज्यादा है, रेनफॉल चाइना से 60% ज्यादा है, लेकिन अगर जीडीपी की बात करें तो चीन के मुकाबले करीबन करीबन हमारी 1/3 जीडीपी एग्रीकल्चर से बैठती है। एफएओ का जो पिछला डाटा था उसके हिसाब से हमारी 460 बिलियन डॉलर की जीडीपी थी और वहीं चीन की करीबन 1004 बिलियन डॉलर की इनकम एग्रीकल्चर से थी। तो आज प्रश्न उठता है, क्या चीन का किसान किसी और प्लेनेट से आया है? मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, चीन के किसान भी इसी प्लेनेट से हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमारे मंत्री जी बड़े अपने काफ़ी बिजी हैं और उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन फिर भी मैं ये कंपैरिजन के साथ कि हमारे किसान को क्या मिल जाए तो विश्व के बराबर उत्पादकता वो ले सकता है। आज हमने कंपेयर किया, चाइना में फर्टिलाइजर हमसे दुगना इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड जो चाइना में इस्तेमाल होता है उसका शायद 3% भी हम इस्तेमाल नहीं करते, जबकि हमारे देश में परसेप्शन लोगों ने बना रखा है कि हम अंधाधुंध पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। जहां चाइना में 13 किलोग्राम पेस्टिसाइड प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल हो रहा है, वह हमारे देश में 340 ग्राम पेस्टिसाइड प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल होता है। आज इसका मतलब नहीं है कि हम अंधाधुंध फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का प्रयोग करें। जहां जैसी जरूरत है, जरूरत के हिसाब से हमें साइंस के बेस के ऊपर इनका इस्तेमाल करना है। तो आज हमारे किसान के पास सबसे बड़ी चीज है, ज्ञान नहीं पहुंच रहा। आज गांव में जाके किसानों से पूछें कि भाई आपको ज्ञान देने के लिए कोई आता है, तो कहता है कि प्राइवेट इंडस्ट्री के लोग तो आते हैं लेकिन सरकार से कोई नहीं आता। और आज जिस देश में 14 करोड़ किसान और 6.5 लाख गांव हो, तो ये आसान काम नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इस समस्या को हल किया जा सकता है। दूसरी हमारी किसान की समस्या है, उसको मार्केट में सही प्राइस नहीं मिलता। पीछे सरकार ने 3 अच्छे कानून बनाए थे कि आज किसान के लिए क्या जरूरी है कि एपीएमसी एक्ट में उसी मंडी में जाके माल बेचे। आज सबको छूट है कि वो अपनी माल के अपने प्राइस तय करे और कहीं भी अपना माल बेच सके। तो आज जिस क्षेत्र में भी कंपटीशन आया उस क्षेत्र में तरक्की हुई है। तो आज एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ के लिए हमें कंपटीशन लाने की आवश्यकता है। हमारे माननीय केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री खूबा जी पधारे हैं, मैं चाहूंगा कि आप सब उनका भी तालियों से स्वागत करें। तो आज मैंने एक समस्या बात की, किसान को ज्ञान, टेक्नोलॉजी, और सरकार ने जिस तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी इतने फास्ट क्लियर की है। अब हमारे को पायलट्स की प्रॉब्लम है, यहां ड्रोन्स डिस्प्ले पे है, अब पायलट्स के बिना ड्रोन चल नहीं सकते हैं। तो ये एक काम के साथ छोटी मोटी समस्याएं हैं, उसका भी हम समझते हैं सरकार से जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरी मैंने बात कही, किसान को सही मार्केट और सही प्राइस मिलना चाहिए। तीसरी समस्या वाटर। आज चाइना से 60% पानी हमारे पास ज्यादा, लेकिन बारिश में हम उस पानी को स्टोर नहीं कर पाते। और अभी जो प्रधानमंत्री जी ने हर जिले में 75 तालाब बनाने की स्कीम शुरू की है, और हमारी कंपनी ने भी 2005 में जब हम अपनी कंपनी की सिल्वर जुबली मना रहे थे तो हमने नारा दिया था, खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। और हमने राजस्थान में अलवर और सीकर जिले में 6 चेक डैम बनाए और कई तालाब हमने बनवाए। तो आज जरूरत है कि पानी के बिना कल नहीं है, भविष्य नहीं है। तो आज प्रधानमंत्री जी का जो ये सपना है कि हर जिले में 75 बड़े तालाब बने, तो इससे 2 समस्या हल होगी।
एक तो जो वर्षा का पानी एक्स्ट्रा बह के बाढ़ लाता है वो कम होगा, और जब ड्राउट होता तो पानी इरिगेशन में इस्तेमाल होगा। और अगर इस पानी के लिए हम ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन से इस्तेमाल करें और उसको चलाने के लिए भगवान सूर्य देव की रोशनी आज बहुत इजीली जो सोलर पावर है उससे चल सकती है। तो यही ज्ञान और विज्ञान, जब ज्ञान विज्ञान की बात आती है तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम जरूर आता है। 2015 में भी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे विज्ञान भवन में, तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया था। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी की बात होती है तो जय जवान जय किसान की याद आती है। और इसमें जब जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा था 2002 में नेशनल साइंस कांग्रेस IRI में बोलते हुए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री आज के जो एक ऐसे लीडर हैं जिनको वर्ड एक्सेप्ट कर रहा है, उन्होंने 2019 में नेशनल साइंस कांग्रेस में बोलते हुए 2019 में जोड़ा था जय अनुसंधान। तो आज ये बातें, इनका फायदा कितनी तेजी से हम किसानों तक ले जा पाते हैं। एक समस्या है किसान की, उसको सही क्वालिटी के एग्री इनपुट्स नहीं मिल पाते हैं। आज गांवों में क्या हो रहा है, खास तौर से जो बैकवर्ड इलाके हैं, ईस्टर्न यूपी चले जाएं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वहां बहुत ही बुरा हाल है। और जो हमारी पैदावार 1/3 है चाइना के मुकाबले, उसमें क्वालिटी इनपुट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो आज ये 4 चीजें हमने रखी। और दूसरा लास्ट बात मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं माननीय मंत्री जी से कि आज जो भारत सरकार की स्कीमें आती हैं उसका फायदा बड़े किसानों को मिलता है, छोटे और मार्जिनल किसान वो फायदा नहीं ले पाते। आज भारत सरकार फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी बजट इस साल शायद बढ़कर 2 लाख करोड़ को भी पार कर जाएगा। तो ये सरकार जो किसानों को सपोर्ट कर रही है वो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन पेस्टिसाइड के ऊपर जो इंश्योरेंस का काम करता है वहां 18% GST लगाना, एक तरफ सरकार इंश्योरेंस को प्रमोट कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान इंश्योरेंस योजना शुरू की है, इसका भी फायदा बहुत से किसान ले रहे हैं। पेस्टिसाइड में 18% GST अगर फर्टिलाइजर के मुकाबले 5% हो तो और ज्यादा किसान इसको यूज करेंगे। और लास्ट बात है कि नई टेक्नोलॉजी देश में कैसे आए। आज हमारे देश में किसी पेस्टिसाइड की टेक्नोलॉजी रिसर्च नहीं हुई। एक तो हमारा कहना है कि हमारे जो NCL, CSI या दूसरे सेंटर हैं वो पेस्टिसाइड पे रिसर्च करें और भारत सरकार से उनको इस बारे में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और जो नए पेस्टिसाइड देश में लाना चाहते हैं, जो विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों के पास है, और एक पेस्टिसाइड की रिसर्च में पीछे जो विदेशी कंपनियों ने डेटा दिया था 2000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, 10 साल का समय लगता है जब एक नया प्रोडक्ट आता है, और उसकी लागत मल्टीनेशनल कंपनियां भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो देखिए बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियां ड्यूपॉन्ट, बायर, मोनसेंटो, वर्ल्ड में कितने एग्जाम्पल है कि जहां इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हुआ। तो इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और हमारे डॉक्टर JP सिंह जी बैठे हैं, सेक्रेटरी CIB-RC, तो सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए। आज हम फरीदाबाद जाते हैं तो उनका पोर्टल नहीं चलता, उनके पास मैन पावर की कमी है, तो इससे पैनी वाइज पाउंड फुलिश हो जाता है। अगर नई टेक्नोलॉजी चाहे कीटनाशक के क्षेत्र में है, चाहे फर्टिलाइजर, चाहे बीज, आज बीज में बड़ा डिस्प्यूट है। ये साइंस का क्षेत्र है और उसमें सिर्फ साइंटिस्ट लोगों की बात मानी जानी चाहिए और ब्यूरोक्रेसी का साइंस के साथ इंटरफियर नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत से वाइस चांसलर बैठे हैं, इसके बाद उनका सेशन भी होगा। तो मैं इसी निवेदन के साथ जो किसान की तरक्की में रुकावटें हैं
अगर उनको दूर कर दिया जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है 5 ट्रिलियन टोटल 2024-25 तक और 1 ट्रिलियन एग्रीकल्चर से, मैं कहता हूं कि ये एग्रीकल्चर क्षेत्र में हमारा इतना स्कोप है, ये $1 ट्रिलियन को भी क्रॉस करके $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। इतना हमारे देश के अंदर पोटेंशियल है। तो इसी पोटेंशियल को हमें हार्नेस करना है। इंडस्ट्री के और सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी का, वो इतने बिजी थे, उनको सडन प्रोग्राम बना, वैसे तो उनको सुबह इनॉग्रेशन सेशन में यहाँ फिजिकल होना था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि इतने बिजी समय के बाद भी उन्होंने समय निकाला और वो वर्चुअल हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका, आपने मुझे ध्यान से सुना, समय दिया, और नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए मैं फिक्की की टीम को इनवाइट करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हार्दिक धन्यवाद सर। और हमारे साथ जुड़े हैं वर्चुअल मोड से हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय कृषि मंत्री, और अब आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय मंत्री जी को कि वह सभा को संबोधित करें। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं माननीय मुख्य अतिथि जी। ओवर टू यू सर। सभी को नमस्कार। आज 11वां एग्रो केमिकल्स कॉन्क्लेव संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर उपस्थित आदरणीय श्री राम गोपाल अग्रवाल जी, फिक्की से जुड़े अन्य पदाधिकारीगण और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित विद्वज्जन, इंडस्ट्री से जुड़े महानुभाव और अन्य उपस्थित सज्जनों, इस 11वें एग्री केमिकल कॉन्क्लेव में मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आदरणीय अग्रवाल जी ने काफी पहले कहा था और मेरी इच्छा भी थी कि मैं आप सबके बीच में आज उपस्थित रहूं, लेकिन किसी कारण से मुझे हिमाचल राज्य में आना जरूरी हो गया था। इस वजह से सुबह मैं आप सबके मध्य उपस्थित नहीं हो पाया और विलंब से आप सबसे जोड़ रहा हूं, और इस विलंब से जोड़ने के लिए आप सबसे मैं क्षमा भी चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का बड़ा महत्व है। इसलिए कृषि अच्छी हो, फायदेमंद हो, स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, यह बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि कृषि के क्षेत्र में मुनाफा लोगों को आकर्षित करे। यह मुनाफा बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, खर्चे कम हों और फसलों परांत जो नुकसान किसान को होता है उसमें भी कमी करने के प्रयत्न करना आवश्यक है। आप सबको ध्यान में है कि पिछले दिनों भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर अनेक योजनाओं पर काम किया गया है, जिसमें किसान की सीधी आय सहायता भी देने का काम हुआ है। किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सके और वो महंगी फसलों की ओर जा सके, उसके उत्पादन में एकरूपता आ सके, उसके उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ सके, उत्पादन
और उत्पादकता दोनों पर ठीक प्रकार से काम हो। इस दृष्टि से 10,000 नए एफपीओ बनाने का काम भी देश में प्रारंभ किया जा रहा है और जहां जहां वो काम हो रहा है वैसे वैसे निश्चित रूप से किसान और किसानी को फायदा होते जा रहा है। साथ ही साथ आज आवश्यकता इस बात की भी है कि देश ने, किसानों ने, सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी सोचना चाहिए। हॉर्टिकल्चर की तरफ थोड़ा तेजी के साथ पैर बढ़ाना चाहिए और इसके लिए सरकार भी निश्चित रूप से सहायता कर रही है। जो आवश्यकता हमारी है उस आवश्यकता के अनुरूप हम उत्पादन कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें, इस दिशा में भी निश्चित रूप से कोशिश है। खाद्यान्न की दृष्टि से हम संतोषजनक स्थिति में हैं। दलहन और तिलहन की दृष्टि से मिशन मोड पर भारत सरकार काम कर रही है कि कुछ दिन पहले ऑयल पाम मिशन लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से लॉन्च किया गया। उस पर भी देश भर में काम करने का एक सद प्रयत्न शुरू किया जा रहा है। जब खेती की बात होती है तो स्वाभाविक रूप से उत्पादन और उत्पादकता ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उत्पादकता निरंतर बढ़े इसके लिए अनुसंधान की जरूरत है, यह एक पक्ष है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे साइंटिस्टों ने काफी इस दिशा में काम किया है, लेकिन अभी काम करना और बाकी है। अनेक देश ऐसे हैं जिनके साथ हमें चलना भी है और उनको सामने रखकर हम अपने यहाँ की उत्पादकता बढ़ा सकें, इस दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है और मुझे लगता है कि उसका सद परिणाम भी सामने आएगा। जब उत्पादकता का विषय आता है तो उत्पादकता के लिए नए बीज का अनुसंधान यह एक पक्ष है और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का सीमित उपयोग, पेस्टिसाइड का सीमित उपयोग और उसके उपयोग के महत्व को जानते हुए उपयोग करना यह अत्यंत आवश्यक है। अभी मैं ऐसा मानता हूं कि देश भर में बड़ी संख्या में, जैसा आरजी अग्रवाल साहब कह रहे थे, कि छोटे किसान तक बहुत सारी चीजें नहीं पहुंचती हैं और इसलिए जो उसकी फसल का नुकसान होता है उससे वो पीड़ित भी होता है और फसल को बचा भी नहीं पाता है। इस मामले में सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से प्रयत्न करती है। आत्मा योजना के माध्यम से जगह जगह पाठशालाओं का आयोजन किया जाता है, उसके कारण अवेयरनेस बढ़ भी रही है। कृषि विज्ञान केंद्र भी इस दिशा में काम कर ही रहे हैं, लेकिन यह सही है कि निजी क्षेत्र के लोग भी सरकार के साथ जुड़ जाएं और मुझे लगता है पेस्टिसाइड एसोसिएशन इस मामले में कुछ होमवर्क करके दे कि कैसे निजी क्षेत्र के लोगों का सहकार सरकार के साथ हो सकता है, जिससे वो पेस्टिसाइड की दृष्टि से जागरूक भी हों और जिस बड़े क्षेत्र में भी पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं हो रहा है और किसान को उसका नुकसान हो रहा है तो ये उपयोग भी बढ़े। इस दृष्टि से कोई सामूहिक प्रयत्न हो सकता है तो मैं समझता हूँ करने की जरूरत है और आज इसकी आवश्यकता भी है। वैसे पेस्टिसाइड इंडस्ट्री ने काफी काम किया है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारे यहाँ पेस्टिसाइड का अंधाधुंध उपयोग नहीं है, लेकिन जो विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए तो कम से कम वो तो सबको मालूम होना ही चाहिए और जो लोग उपयोग ही नहीं कर रहे हैं वो अगर उपयोग करेंगे तो उसका भी फायदा होगा। साथ ही साथ कुल मिला के हम लोगों को बायो पर भी काम करना चाहिए क्योंकि आज ऑर्गेनिक में, नेचुरल फार्मिंग में भी लोगों की रुचि बढ़ रही है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देश में और दुनिया में पसंद भी किया जा रहा है। इस दृष्टि से भी जो वैकल्पिक पेस्टिसाइड हैं
उन पर भी इंडस्ट्री विचार करे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। जहां तक आरजी अग्रवाल जी ने जीएसटी का विषय कहा है, तो मैं समझता हूँ जीएसटी का विषय जीएसटी काउंसिल के पास है। निश्चित रूप से आपकी भावना से मैं वित्त मंत्री जी को मिलकर अवगत कराऊंगा और यदि वो उस पर विचार जीएसटी काउंसिल को ही करना है तो क्या होगा ये तो मैं अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन आपकी एक वकील के नाते जो मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने बात रखना चाहिए वो मैं जरूर जिम्मेवारी के साथ रखूंगा। आज इस अवसर पर मैं आप सबके मध्य उपस्थित नहीं हो पाया, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं और मुझे आप सबके बीच में ये कहना है कि कुल मिला के इस 11वें एग्री केमिकल्स कॉन्क्लेव में जो चर्चा और विषय हैं तो निश्चित रूप से विमर्श होगा ही। कई विद्वत लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इसके जो निष्कर्ष आएंगे वो जरूर आरजी अग्रवाल जी मुझे अवगत कराएं, मैं डिस्कस करूंगा और सरकार की दृष्टि से कैसे उसको आगे बढ़ाने पर काम कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। आप सबको इस अवसर पर मैं इस कॉन्क्लेव की सफलता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और भगवत खूबा जी भी इस मौके पर उपस्थित हो गए हैं तो उनकी उपस्थिति को भी नमस्कार करता हूं और सभी आयोजकों को भी मैं इस अवसर पर नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय भारत। हार्दिक धन्यवाद सर। एक बार पुनः माननीय कृषि मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं उनके संबोधन एवं मार्गदर्शन के लिए। आपने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला सर और हम सभी के बीच वर्चुअल मोड में उपस्थित हुए। एक बार पुनः आपको हार्दिक धन्यवाद। और इसी के साथ स्वागत करते हैं हमारे माननीय अतिथि श्री भगवंत खूबा जी का, Honorable Minister of State, Ministry of Chemicals and Fertilizers and Ministry of Renewable and Renewable Energy, Government of India. And I would request Shri R.J. Agarwal ji to welcome the Honorable Minister of State with a green certificate. So this green certificate is a green initiative of FICCI where we plant and I would request R.J. Agarwal sir, if you would like to say a few words to thank the Honorable Minister. अभी समय कम है तो वोट ऑफ थैंक्स मंत्री जी के लिए देने की जिम्मेदारी मुझे ही दी गई है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं कि इतने बिजी होने के बावजूद भी उन्होंने हिमाचल में सोलन में हैं फिर भी हमें संबोधन करने का समय निकाला। उनकी 2-3 बातें बहुत अच्छी रही। उन्होंने कहा जहां कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं होता है बैकवर्ड एरियाज में वहां उसका इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से होना चाहिए ताकि किसानों का नुकसान ना हो। ये भी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अंधाधुंध पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं है। तो ये जो गलतफहमी है लोगों की ये दूर करने में इंडस्ट्री एसोसिएशंस का भी बड़ा रोल है। जो उन्होंने किसानों के लिए कहा एफपीओ बना रहे हैं। सुबह के सेशन में हमारे थीन साहब भी थे जिन्होंने एक हरियाणा पंजाब का एफपीओ बड़ा बनाया है। तो इस तरह पूरे देश में एफपीओ बनाने के माध्यम से जो किसानों तक ज्ञान या नई तकनीक नहीं पहुंच रहा वो पहुंचेगा। और जो हमारे उनसे निवेदन था जीएसटी के लिए उन्होंने कहा कि वो एज ए वकील हमारी बात जीएसटी काउंसिल जो है डिसीजन लेती है उन तक पहुंचा देंगे। तो उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। और आखिर में उन्होंने कहा कि इस सेमिनार के जो डेलिब्रेशंस हैं जो इसकी आउटकम है वो उन तक पहुंचाए जाएं और उसके ऊपर वो विचार करेंगे।
तो ये भी हम करेंगे। और आज हमारे पास मीडिया के भी कुछ लोग बैठे हैं और वो आज के इस कार्यक्रम के ऊपर कुछ मैगजीन्स स्पेशल अपना इशू निकालना चाहते हैं। तो आज जो भी प्रेजेंटर्स हैं, अगर वो अपनी प्रेजेंटेशन फिक्की को दे देंगे तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी मैगजीन इस प्रोग्राम को कवर करना चाहें, क्योंकि आज खेती की महत्ता को हम सब जानते हैं कि आज हमारे फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं है, लेकिन जिस प्रकार आज वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी का इशू है, लंका के हालात हैं या दूसरे देश हैं जहां खाने को नहीं है। माननीय मंत्री जी ने ऑर्गेनिक की बात करी, बिल्कुल ठीक है, आज ऑर्गेनिक के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सुबह भी मैंने कहा था, आज हमें हर जैसे इलाज के लिए यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सभी विधियां हैं, तो जिसको जो सूट करता है वो इस्तेमाल करे। इसी तरह खेती में भी जिस किसान को जैसा ऑर्गेनिक सूट करे, उसका पेट भरे ऑर्गेनिक से, तो जरूर ऑर्गेनिक करे। लेकिन देश में फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं आना चाहिए। जो भी है, हमारे वैज्ञानिक जो बैठे हैं वो इस बात का ख्याल रखेंगे, और जो यूनिवर्सिटी से वैज्ञानिक लोगों से रिसर्च होकर बातें आती हैं, मेरा यही निवेदन होगा सबसे कि कृषि एक साइंस का विषय है, तो जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग कहें उसके साथ हमें जाना चाहिए, बजाय किसी की सुनी सुनाई बात के ऊपर हमको जाना चाहिए। मैं पुनः हमारे भगवंत खुबा जी जिन्होंने ज्वाइन किया, और दूसरे जितने भी सभी लोग आज मंच पे, प्रोफेसर मिश्रा बैठे हैं, मेरे इंडस्ट्री के कॉलीग दुसाद साहब, और आप सभी लोगों का एक बार मैं फिर से धन्यवाद करता हूं, और यहाँ प्रोग्राम में आने के लिए आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। Hardik Dhanyavad, sir. And now, ladies and gentlemen, we would like to continue with the presentation on Solvay's innovative and sustainable solutions for agriculture, which was being presented by Mr. Mukund Dusad, Regional Manager Director, APAC, Novocare Agro Solvay. And may I once again invite you, sir, to carry forward the presentation. Thank you. Can you put together the presentation? Yeah. So we resume back from where we left off. I think after a very interesting speech by the Minister, Narendra Singh Tomar ji. And I think I would like to emphasize as a multinational Solvay, even though we are a multinational, but we are fully committed to the development of agriculture in India, and all our sustainable, innovative solutions are fully available in India. And I think this is in line with our Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of Make in India. So today there's 90% of the technologies that we make globally are fully available in India. So this program that we were talking about, improving the Goa farmers' livelihood, and I think just some figures to show that how many lives we have impacted positively. So we're working in 36 villages. We have worked with more than 7,000 farmers, of which 1,500 were women. We've developed almost close to 1,000 kitchen gardens, and we have planted about 70,000 trees in the area. Talking more about the solutions for agro, I think we have various solutions. We have a long history. We were part of the Ron Polank agrochemical company, and we were one part that were working with the development of the agrochemical formulations. So we work on the foliar sprays, on targets, and on the seed applications. And some of our products that are very well known in the industry, we are the inventors of soprophos, which are the TSP ethoxylates. We are the leaders in the green solvent arenas. And today I think green solvents is one of the areas where globally there is a lot of regulation, and to limit the use of carcinogenic solvents like NMP, CYC, etc. Even though in India we don't have a regulation as such, but I think we are fully prepared,
And today Solvay is the only company to have a footprint in Asia. We have a large plant producing about 10,000 tons of green solvents in Asia. Then we have tank mix, I think, which are very much aligned with the new drone invent, and the government of India is fully adapted and fully prepared to launch their drone systems, and we have been working on this arena for the last several years, because the other countries have moved a bit faster, but I think India is ready to catch up, and here we have several offerings. So some of the innovations, as we spoke about, the green solvents, which we work through our lab of the future, which is based in Bordeaux in France. And here we have a robotic platform that works on thousands and thousands of blends. And because there was this misnomer that these conventional solvents could not be replaced. NMP is excellent in terms of solubility, but a very, very bad profile in terms of environment. So we have worked through for replacement for all of these solvents, and these can be fully used. You name it and you have it, like all the fungicides, pesticides, insecticides, and herbicides. So we have certain examples of several formulations where these can be used. So these are green, these are clean, and of course these are environmental friendly, and on top of that, these are having a better cost in use. So these are not expensive. Aromet 320, this is one of our drift control adjuvant for drones, and I think drones, as we said, are emerging as a game changer in the agriculture practices. And there is a big impetus of using drone for precision agriculture. And with the drone, there is a problem of drift, and there is a problem of deposition. So our adjuvants work here, and they ensure that there is drift control, and they work on the particle size of the droplets, and basically ensure that the right deposition is there on the leaves. And we have several tests around the world to ensure that we have tested all of these products. So like Aromet 320 is one of our blockbusters, and very, very successful in entire world. Seeds, we have a product called Agro S Boost, and this is primarily used to basically ensure against the crop loss. India is a country where we have not very even rainfall, and it is more drought prone. So in these conditions, in very stressed conditions, I think these kind of products ensure that you will have a minimum yield guaranteed, and it will work on a better germination, it will work on a better root growth, and finally the yield would be much better. Finally, one of the last innovations that I present is Agro N Protect, and this is basically for the application on urea. So urea contains about 46% nitrogen, and when it is applied to the soil, it has a tendency to lose nitrogen. Most of the nitrogen is lost in the air, or through volatilization or through leaching. And Solvay's technology ensures that all these losses are cut. And in the end, the result is that you can use 20% less of urea. And there's this nice success story that we have it in Indonesia. We went to a oil palm plantation company that has about 1 million hectares of land. And with that 1 million hectares, they were using 300,000 tons of urea. And we went to them that we can save you 20% of urea, which means 60,000 tons of urea saved. And minus the technology cost, they could still save about $15 million of money, which is big money. And if I apply the same thing to Indian context, we are using 30 million tons of urea. So just imagine the best case scenario. With this technology, we can save about 5 to 6 million tons of urea, which is great for the subsidy, which can save the government billions of dollars. It is great for the environment. For sure, this is under proposal, and this is under approval at the FCO. Meaning it will take a bit of time, but my only request to the government would be, if we can clear this kind of technology very quickly, then I think it would be very, very advantageous to India and its farmers. Yeah, I think that's it from my side, and thank you very much again for this opportunity. Thank you.
Thank you very much indeed, sir, for concluding that presentation. We are extremely sorry we had to intervene in between for the presentation. And now, ladies and gentlemen, I would like to invite Dr. Suresh Mishra, Professor Public Administration and Chair Professor and Coordinator, Indian Institute of Public Administration, IIPA. He's an expert on consumer issues, and I invite you, sir, to kindly share your views with us, with the August House present here. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome him. Honorable Minister, respected Agrawal sir, distinguished ladies and gentlemen, I am the odd man here. I have nothing to do with chemicals, nothing to do with fertilizers, but my focus is on the consumers that you have. I come from the Indian Institute of Public Administration. That's the institute that trains the senior bureaucrats in the country, central government and states also. We are nowhere responsible for their performance, what they do. We also have a Center for Consumer Studies that essentially is set up by the Department of Consumer Affairs, where we take up a lot of issues of consumer interest in various sectors. We do a lot of research, evaluation. One of the main objectives of our institution is to provide policy inputs to government, and we work currently with almost all the ministries and departments that we are doing. We also run the National Consumer Helpline. We have around 700 industries, manufacturers who are part of our convergence program. We receive around 85,000 complaints every month, and that's the volume of complaints that we have been handling. My presentation essentially talks of a research study that we did on the fake products that are available in the rural areas. I had the privilege to share it with Mr. Agarwal, and he said that I should share it to a larger audience of क्वालिटी गुणवत्ता की सभी बात कर रहे हैं. हम लोगों का भी यही कहना है कि जो भी बिकता है बाजार में उसकी गुणवत्ता मेंटेन होना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन होना चाहिए. That is all the so I'll just make a presentation and see. We all, the bulk of the population still lives in the rural area, and the aspiration is on the rise. I would not say that there is no money flowing in the rural areas. People have money. They are ready to spend money for good quality and standardized products, we are saying. It's no more that they don't know what is good and what is not good. Those days are gone because the penetration of satellite TV has made them much aware about what is available, what is being used, the kind of products and services that are coming. Though they still continue to have low purchasing power, they buy in small quantities, not bulk. Majority of the small and marginal farmers, if you look, they really don't buy huge stocks and keep it, but they buy whatever is needed immediately and use it. Easy access to low-cost products, that is one study that we did. This was also run by the DNA of Z News. It was a half-an-hour program, and they had highlighted this study. Now we are all talking, the Honorable Prime Minister talks about 5 trillion economy. You must have read the reports yesterday also, which they are saying, subject to certain things like oil price and others. It's not possible that we can touch it by 27, 28. So the big dream can be realized that farmers की income को double करना, that's the, and I'm perhaps coming from a policy institute. We really feel that the 3 laws not really being materialized is a great setback to agriculture. That's there. Farmers need to protect it because they are the ones
who were the backbone. And maybe it was, as the Honorable Prime Minister said, that it was not communicated well, so withdraw karna pada. So isliye farmers continue to be the focus, and therefore quality and standards of agri products need to be ensured. We did a study on the awareness of fake products in rural markets, to what extent, and the study, it covered 9 states of Assam, Gujarat, Haryana, Himachal, Karnataka, MP, UP, Odisha, and Telangana. It was a random selection, not based on a specific report. So, sample size was 5,400 respondents from 360 villages spread across 36 blocks, 18, and 9 states that I said. Now, if you look at availability of fake products, so a lot of it is available at the village level, village shops. So those are small shops which you have. Even if you look at, it did cover agri products also, pesticides, fertilizers, and other products that are there. So these covered. Lot of it is bought in the open. In the small quantities they buy, and so easy to adulterate, easy to mix with things. And so the study, showed that a lot of these, whether you call them fake, lookalikes, duplicates, whatever, by whatever name you call, it's not much difference is there. Now, consumers hardly check products before they buy. That's one reason why a lot of fake is also bought. The shopkeepers find it very easy. The retailers find it very easy to sell it off. Because people just don't really spend much time even to find out the manufacturing date, expiry date, and other dates that are compulsory. So that's the issue, especially in the rural areas, because they don't really focus on those. About popular brands, quite many they are aware. That's because mainly of the media and television and advertisement that's have reached the rural. So the manufacturers have been able to communicate with the rural audience much better than what they were able to do. It's all there today. Now, what is surprising is 65% of the respondents, they said they have purchased fake products. And what is more interesting is they purchased it knowingly, majority of them. So they know that it's a fake product which they are buying, but still they buy. That's something very strange. And what inspires them to buy is essentially price and availability. They're cheaper, and it's very easy to convince. Even when we go to buy a geyser or anything, and one is ISI marked, standardized by BIS, other is not, but the shopkeeper is able to convince us that ये उससे भी अच्छा है, सस्ता भी है, बेहतर है, and we do buy non-standardized products also. So price is one factor that because a lot of fake products are being bought. And what is surprising is that we did talk to many of the manufacturers also during this study. And they said that इसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते. You need lot of force, you need lot of money चाहिए. And one of them said, कोई बात नहीं, हमारा brand पहुँच तो जा रहा है, नाम पहुँच जाता है हमारा. So whether it is fake or it is genuine, हम तो उस बाजार में है ही हैं. So that's the kind of response that we got. So now action taken. Many of them just did not do anything. They ignored because they thought that it's not worth going because there is no exactly level at the local, any such mechanism at the local level where they can file a complaint and get redressed. Even in the consumer commissions, you see in states where the agriculture is high rate, you find a lot of complaints being filed in the district commissions of
seeds that have not germinated, pesticides that are duplicate, fertilizers, they have been adulterated. So you find all the various kinds of complaints, but then the redressal is not really good. So there is no mechanism. If they go to the concerned officers, nothing really happens so far, the mechanism. So if you look at the perception of the consumers, users of these products, they said, well, if you really sum up, it comes to more than 50-55% that is fake. You go to the rural markets and you see every product that is available has a fake there, and they're selling fake. Borolin will be Boroline, but it looks same. You just can't make out that it is not. I'm sure that you have seen brands of your own pesticides look very similar to it, and it's not easy to, but it's cheaper. So the farmer who really does not have much paying capacity, he finds this to be much easier for him to buy that. So more than that, 50-55% they are buying. Strategies, well, we talked to a lot of people, and laws, you know, they want more laws. The laws are already there, so many we have, but it's question of regulation. Even in 2-3 days in the newspapers, you have been reading how the laws are being. Companies to take action, but I'm sure many of the companies really don't take much action because it's not an easy part. And so these were some of the strategies that people and the experts also suggested that should be made. So these fake and spurious products, lookalikes, obviously is lost to the farmer. If you buy seed, even from authorized agents, the seed sometimes they're not germinating. And then they blame the farmer that he has not followed the due procedure. उसको इतनी ज़मीन में डालना था, उसने ये नहीं डाला, उसने इस सीजन में के पहले, all that is there. So it essentially results into loss. And imagine a farmer, if he loses his one harvest, what happens to him? Risk to public health, compromise user safety, make quality of the merchandise suspect, penalties for trading counterfeit goods are low or non-exempt, hence no deterrence. It's very difficult to really prove. Action from regulators must be multi-layered and encompassing. Now, way forward is laws and regulators are too many but need to be more effective. I think enough. We really don't need more laws. We have already laws. The government has already finished 1,800 laws. More laws are being identified which are more a hindrance than really solving a problem. So you need the regulators to be very effective and ensure that the high action is taken and then penalty is high, where it acts as a deterrence. Putting somebody in jail for 2 months and then getting him out because that's his livelihood, he will produce much more spurious because he knows the results are to him. Industry to play a lead and more proactive role. Our study, we did talk to a number of industries who have been to it. They essentially shy away from this problem. I don't know why, but they really don't take it so seriously that they need to address, even though their own products are being imitated and faked and brought into the market in their own name. And we were there in Karnataka in one of the districts where we bought some of the products from the same market and some of the food products, and we tested it with the FSSI app, you know, they have where you can immediately check. And the shopkeepers just left after some time the meeting because they were the ones who were selling those fake. Partner with government agencies, you need to do that. Technology innovations, a lot of new ways are coming. How do you ensure that one comes to know whether a product is fake or not? I think that has to be taken care of. Involve and mobilize community awareness. We have seen that there's hardly awareness by any of the manufacturers at the local level. They really don't try to mobilize the community, invest in that. I think that's a
good idea where they should invest more in creating awareness, ensuring that people get the right thing and they are able to make the best use of their money, because that results into use of multimedia for publicity, convergence platform for various stakeholders. Even the agriculture universities, look at the extension programs. It's not the kind it used to be earlier. They used to be part of the farmer committee, but that's not so today because of many other reasons also. So friends, this is all that I wanted to share. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, Anrit sir. And now, ladies and gentlemen, I have the proud privilege in inviting a very special guest, Shri Bhagwant Khobaji, the Honorable Minister of State, Ministry of Chemicals and Fertilizers, and Ministry of New and Renewable Energy, for the special address. एग्रोकेमिकल्स कॉन्फ्रेंस 2022 फिक्की के ओर से थीम पॉलिसी लैंडस्केप फॉर ए फ्लोरिशिंग एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर उपस्थित श्री मुकुंद दुसद जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर सुरेश मिश्रा जी और श्री आर.जी. अग्रवाल जी, और इस सभा में उपस्थित सभी मान्यवर और माध्यम के मित्रों। विषय किसानों की है। हम सब का प्रयास किसानों के हित की है, या इनोवेशंस हो या प्रोडक्शन हो, इंडस्ट्रीज या साइंटिस्ट हो, सारे के सारे हमारे जिम्मेदारी किसानों के हित की बात करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण केवल विषय नहीं, जरूरी है। बढ़ती हुई आबादी को खाद्य का सुरक्षा देना और किसानों के हित के लिए कम से कम लागत से उत्पादन हो, उसी के साथ पर्यावरण का बचाव भी हो और सही मायने में एग्रोकेमिकल्स की हो या फर्टिलाइजर की हो, उसको उपयोगिता की महत्व किसानों को समझाने का अवेयरनेस प्रोग्राम हो। फिक्की की ओर से यह महत्वपूर्ण सभा, मैं पहले ही फिक्की को मैं बधाई देता हूं कि आपने देश के कोने कोने से, अंतर्राष्ट्रीय से भी इस विषय को महत्व समझते हुए आज के इस कार्यक्रम का आपने रचना की है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार किसानों की सरकार है, इंडस्ट्री फ्रेंडली सरकार है, व्यापार फ्रेंडली सरकार है, और जरूरत पड़ने पर रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक्ट्स की अमेंडमेंट हो
या उसको निकालना हो। पिछला 8 साल में लगातार मोदी जी का सरकार इस क्षेत्र के अंदर काफी हद तक हमने काम किया है। किसानों का आय दुगनी होना सरकार की कमिटमेंट विथ कन्विक्शन भी है। तभी जाकर के आज भारत के किसान जो घाटे में रहने वाला क्षेत्र धीरे धीरे अभी प्रॉफिट की ओर बढ़ रहा है। तो हम सबकी जिम्मेदारी कम से कम कीमत वाला एग्रोकेमिकल्स के साथ नया नए इनोवेशंस के साथ में, हम सब लोग तो सिंथेटिक एग्रोकेमिकल्स की उत्पादन करते हैं। भारत कभी भी इंडस्ट्री, हमारा भारत की इंडस्ट्री कभी भी मार्केटिंग का दृष्टिकोण रखते हुए प्रोडक्शन किया है। कभी हमने इनोवेशन की ओर जोर दे करके भारत के अंदर उसका इनोवेशंस होना और प्रोडक्शन भी होना, इसकी ओर हमारा ध्यान अभी तक ज्यादा नहीं गया था। जब आत्मनिर्भर की बात हम सब में अभी बातें चल रही हैं, तो अभी धीरे धीरे देश के अंदर ही उसका संशोधन के साथ एक सोच और एक कोशिश चल रही है। इसके साथ में जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के जैसे हमारा आईपीएफटी भारत सरकार की जो संस्था है, जब मैंने वहां पर विजिट किया था तो उन्होंने काफी फॉर्मुलेशंस ऑर्गेनिक की किया था उन्होंने, और काफी इंडस्ट्रीज उनके साथ में मिलकर के उत्पादन भी कर रहा है। तो मैं इस सभा को यही मैं आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स के ऊपर भी जोर देना, क्योंकि ये तुरंत होने वाला नहीं है, लेकिन आज की जो एग्रोकेमिकल्स की ज्यादा मात्रा में उसका उपयोग होने के बाद जो दुष्परिणाम की रिपोर्ट्स हमने देखते हैं, तो कहीं ना कहीं भविष्य के अंदर इसे हमको रोकना भी है और उसका पर्याय में बदलना भी है। तभी जाकर के हम इंडस्ट्री वाले संशोधन में जोर देंगे। भले अंतर्राष्ट्रीय में कोई भी देश में हो, अगर यदि ऐसा उत्पादन मिलता है तो भारत में उसका उत्पादन भी चालू करे और उसको भारत के अंदर जोर देना के भी काम हम ही तो कर सकते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जो कोयम्बतूर के जो जग्गी वासुदेव जी ने हर सेकंड में 1 एकड़ जमीन जो नॉन एग्रीकल्चर होने जा रहा है, विश्व भर में उनका बाइक की रैली की है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसकी रोकने की जिम्मेदारी साइंटिस्ट का भी है, साथ में इंडस्ट्री की भी है और सरकार की भी है। इसी के ओर हम लोग, हमारा सोच यदि हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप में जो नकारात्मक परिणाम इंसान के ऊपर ही नहीं बल्कि पर्यावरण और मिट्टी के ऊपर भी जो हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग कम भी कर सकते हैं। और नया प्रोडक्ट अगर अपने को मिल गया तो पूर्ण प्रमाण से इसको बदल भी सकते हैं। तो इस दिशा में
अब सभी का ध्यान आकर्षित करने का मैंने प्रयास किया, तो मुझे विश्वास है कि किसानों के हित के साथ पर्यावरण और आत्मनिर्भरता का और आपका लक्ष्य भविष्य में उसको काम आप यशस्वी रूप से करेंगे, यही मेरे विश्वास के साथ आज आपने आमंत्रित किया। आप सभी को मेरे शुभकामनाओं के साथ में मेरे दो बात में समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन के लिए माननीय मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। The Honorable Minister in his address urged everybody to take care of the environment, side by side taking care of the interest of the farmers also. And ladies and gentlemen, on that note, we now close the proceedings of this session. Once again, taking this opportunity to thank our Honorable Agriculture Minister and Honorable Minister of State for Chemicals and Fertilizers and New and Renewable Energy, Shri Bhagwan Kobaji, and both our eminent speakers for their presentations. We close the proceedings of this session and we straight away move into the next session. I would request everybody to kindly remain seated while our Honorable Minister leaves the venue and we set up the talk table for the next session. Thank you. Requesting everybody to kindly remain seated. आप सभी से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। हम अगले सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगला सेशन enhancing the judicious use of agrochemicals and augmenting trade opportunities for Indian agrochemical industry. Give us a few minutes while we arrange the top table. So ladies and gentlemen, for this next session, I would like to invite our eminent speakers, Mr. Shashank Chaturvedi, CGM HIL, Dr. Vishal Chaudhary, Deputy Industrial Advisor, Department of Chemical and Petrochemicals, Government of India, Dr. A. Kupusamy, Head Registration and Regulatory Affairs, NACL Industries Limited, Mr. Jonathan Soham, Senior Consultant Analyst Agribusiness, S&P Global, will be joining us virtually. Mr. Harish Mehta, Senior Advisor, Crop Care Federation of India, and Dr. Rajiv Paul from he's Senior Scientific Officer, Regulatory and Ecotoxicology, Oxlife. So ladies and gentlemen, as you all are aware, we are running behind schedule and we have some senior government officers joining us in the last session. I would request all our speakers to kindly conclude their presentations in 5 to 6 minutes each so that we have some time for the last session where the senior government officials are going to join us. And I would like to invite Mr. Shashank Chaturvedi, CGM HIL, for his address. He has over 24 years of experience in rural agri-farm input with well-known organizations and has excellent knowledge about rural market development for agri-inputs and creating brand image. May I invite you, sir, for your address. Yeah, good afternoon to all. हमें लगता है कि मेरे बीच में कुछ FPOs भी ज्वाइन किया है उन लोगों ने, तो मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बात करूंगा। जो सब्जेक्ट है जुडिशियल यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, डाटास तो हमको सपोर्ट नहीं करते हैं,
यदि हम देखें जापान और चाइना में जहाँ 12 से 13 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से पेस्टिसाइड यूज़ होता है, वहीं इंडिया में हमारे 300 से 400 ग्राम के आसपास यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि क्या हमने अपने फार्मर्स को इतना ट्रेंड किया है, क्योंकि सबको पता है गांव में जो लिटरेसी लेवल है वो किस तरह का है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग सेशंस जो है रेगुलर होते रहने चाहिए, और इसमें HIL इंडिया लिमिटेड ने काफ़ी लीड लिया, और पिछले 3 साल के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से करीब हमने 40 फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशली जुडिशियस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड पे हमने ऑर्गेनाइज किया, और करीब जो नंबर मुझे याद है रफली करीब 40,000 प्रोग्रेसिव फार्मर्स को हमने ट्रेंड किया है अक्रॉस द कंट्री। तो कहीं ना कहीं ये बात बार बार फोरम से उठती भी रही है कि गवर्नमेंट को और प्राइवेट को इस सेक्टर में, ट्रेनिंग सेक्टर में एक ज्वाइंट एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर फिक्की के माध्यम से आह्वान करूंगा कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करे, और ये ट्रेनिंग सेशन को हम लोग और इंटेंसिव वे में और जगहों पे इसको लेके जाएं जो है। और कहीं ना कहीं ये मैंने देखा है कि यदि हम बताते हैं कि पेस्टिसाइड का यूज़ किस तरीके से करना है, तो किसान उसको बहुत अच्छे से समझता है। इसमें मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं 10th में था, मैं भी एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और उस समय मेरे ग्रैंडफादर ही वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव फार्मर्स, और लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा इनके खेती में जो है पैदावार वगैरह बहुत अच्छी होती है। मैं गांव पे गया हुआ था, शहर में फादर नौकरी करते थे, गांव पे गया हुआ था, तो उन्होंने मुझे एक दवाई का नाम लिख के दिया कि इसको शहर से जाके लेके आना। हम लोग घूमने के लिए जाते थे शहर में, गए और उस दवाई को लेके आए। आज समझ में आता है वो कौन सी दवाई थी, गैमैक्सीन, जिसको BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और कुछ सकिंग टाइप इंसेक्ट लगे हुए थे धान के ऊपर। तो मैंने अपने ग्रैंडफादर से बोला कि मैं खुद स्प्रे करूंगा। तो आप लोग को सरप्राइज होगा, ये बात होगी 88 की। उस समय हमारे ग्रैंडफादर के पास डस्टर था, स्प्रे मशीन थी पैर से चलने वाली, उन्होंने सब मशीन रखे हुए थे। और क्यूरियोसिटी में हमने जो है स्टार्ट किया, तो हवा चल रही थी उस समय, शाम का 3-4 बजे का टाइम था। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं, हवा की दिशा की तरफ, जिधर से हवा चल रहा है उसके उल्टी तरफ तुम्हारा मुंह होना चाहिए। वहाँ से एक एग्रीकल्चर का मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैंने एजुकेशन भी टोटल एग्रीकल्चर में किया। तो मैं देखता हूँ कि किसान उस समय भी जागरूक था, 88 में भी, और आज भी है। यदि हम उसको बताते हैं कि किस तरीके से दवाइयों का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, तो उसको सुनता है और समझता है और उसको प्रयोग भी करता है। तो हमारा यही कहना है कि ट्रेनिंग सेशन की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए, और इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट का टाई अप होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, यही हमारी तरफ से। Thank you very much indeed, sir. And now, ladies and gentlemen, may I invite our next eminent speaker, Dr. Vishal Chaudhary, Deputy Industrial Advisor in Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers. He's looking after all industry-related issues for the chemicals sector and is now going to present on sustainable development for agri-chemicals, agrochemicals and the green chemistry. So over to you, sir. May I request you, sir, to conclude in 5 to 6 minutes. Sure. Good afternoon, everyone. So since time is limited, I will very quickly just go through the presentation. So before that, first of all, I would like to thank FICCI for inviting me in this very important conference. I am also thankful to my department for giving me this opportunity to participate in this event and share my views in this very important conference and the platform. So when we talk agrochemicals, agrochemicals are the most very crucial and most important pillar of the bigger umbrella called chemical sector. So just quickly, I will first introduce the chemicals, bigger umbrella part, the chemical sector, and then I will come to the agrochemicals. So basically, with this slide also, we can see the importance of chemical sector. It is almost a backbone of all other sectors. Chemical industry is the raw material provider for all other sectors.
we can say that chemicals are basically integral part of our life. So whatever activities we are doing, right from morning we are using toothpaste to we are taking coffee or tea after dinner in the night, whatever things we are doing in the entire day, somewhere we are encountered with the chemicals everywhere. So that's how the important chemicals have in our life. These are the GVA contribution of chemical sector to all other sectors. I will skip that since I have a lesser time. Just for the stats and figures quickly, India constitutes 3.4% of the global chemical industry, and we stand 6th in the global chemical sales. This sector contributes around 9.5% to the manufacturing GVA, and it has a considerable market size. Indian chemical industry market size in 1920 was around 180 billion US dollars, and considering the potential of sector, it is expected that it will cross 300 billion US dollar by 2025. It has got on IIP weightage, it has got 2.54%, and this sector employs around 4 million people. Now we'll come to the agrochemicals. These definitions I will not, everybody is aware. Just the market segment scenario I will discuss. The agrochemicals are segmented as insecticides, fungicides, herbicides, biopesticides, we all know. And the market share dynamics also keeps on changing. But at present, the present scenario is that 22% of the market share is being governed by the insecticides and 27% by fungicides. At present, herbicides rules the market share, and they constitute about 44% of total agrochemical market. Others are in the 7% of the category. Then the figures for the agrochemical industry, the Indian agrochemical industry is sized at around 6 billion US dollars, or we can say 42,000 crores. Whereas the total global agrochemical market is 4.5 lakh crores. So we can say that we are having, Indian agrochemical industry is having a share of 10%, and we are the net exporter in this segment. More than 75% global market is generic, and with this view, we have a great potential. We have a trained and a skilled manpower, considering the industry in the industrial aspect. And the pesticide consumption, as earlier speakers have also told, that the pesticide consumption in India is quite low. The world average is 3 kilogram per hectare, and in India we are using only 0.4 kilogram. And if we can take the example of China, it's around 17 kgs. Last year it was 13 kg. This year they have gone up to 17 kgs. This is the pesticides trade or Indian agrochemical trade. The blue bar indicates the exports, and the orange bar indicates the imports. So it's clearly stated that we are the net exporters, and if we see the last 5 years data, our export figures have crossed from 12,000 crores to reach to 25,000 crores. So this we are the net exporters, and it's also figures are also increasing. These are the major export destination for Indian pesticides. So if we see that we are majorly exporting to Brazil, USA, France, Belgium, Japan, and Iran. And if we see that out of the total exported value, the major share, around 35% of the share, is being held by Brazil and USA. So we are the leading exporter to these countries. Import-wise, on the other side, if we talk, then these are the countries where we are majorly importing: China, USA, Belgium, Japan, Germany. If we see the total 9,000 crore import, more than 50% of import is coming from China. These are the major products of pesticides which are exported as well as imported. Among the pesticides which are majorly exported, we lead in mancozeb, acephate, chlorpyrifos, malathion, pendimethalin, 2,4-D, cypermethrin, delta, profano, and dimethate. Similarly, for the imports, we are majorly depend on importing chlorine, imamectin, cartap, imida, glyphosate, paraquat, petla, biprofizin. These are the products which we are importing. If we see the country-wise consumption of agrochemicals, then this is the last year. In the kilotons, entire year consumption, China has consumed 1,763 kilotons and has got a share of 43%. Similarly, USA 407 and 10% share. If we see in India, we have used only 58, and our share is also less than 1%, around 1%. So the importance of agrochemical sector is this sector helps in crop protection and crop production. Crop yield is increased as well as crop is protected from the attack of pests. It is only because of the availability of good quality of pesticides and agrochemicals that our food grains production have reached to 300 million tons. What it was used to 50 tons and like that. So this sector is highly important to them. Installed capacity wise production, if we see that we have got the installed capacity of 3.25 lakh metric tons, but the production is 2.1, and the capacity utilization of the industry as a whole is around 70%, if we can see.
Although it's a seasonal business, products are seasonal, but it's still because of some cheaper imports and growing preference towards low dosage is also one of the main causes. That capacity utilization is around 70%. Now the pesticides and the international conventions. There are certain international conventions which reviews, governs and monitors the pesticides. And to these conventions, Government of India is also signatory body. One such convention is Stockholm Convention, which deals with persistent organic pollutants. And this convention includes, monitors the pesticides like aldrin, chlordine, DDT, dicophol, endosulfan, heptachlor. These are the pesticides which are covered under this Stockholm Convention. Other similar convention is Rotterdam Convention, which also monitors pesticides. And this convention includes a procedure called prior informed consent procedure. If any countries want to export or import any pesticide, from Europe to any other country, they have to go through a procedure which is called prior informed consent. They have to take consent from that designated national authority. This objective is to promote this human health and environment and on the sharing responsibility basis. These are the pesticides which are covered under Rotterdam Convention. Now, World Health Organization, WHO has published and issued a document in 2019. It is a guidance document based on the UNGHS criteria. They have classified the pesticide based on their hazards category. And they have classified the classes as 1A, 1B, second, third, class 2, class 3, and U. U is unlikely to present any acute hazard. They have done the study based on the oral and dermal studies, and LD50 values for mg per kg values they have taken. For extremely hazardous, they have put in 1A, that is less than 5 and less than 50 for dermal. For 1B, highly hazardous, 5 to 50 and 50 to 200. Then class 2 is moderately hazardous, which is 50 to 2000 for oral hazard, and for dermal it's 200 to 2000. And then slightly hazardous over 2000, and unlikely to present any hazard, or you can say safe products, are 5000 or higher. SWOT analysis also I will not go into details because industry knows very well what are the strengths, what are our weaknesses, and what are our opportunities. Still that we are improving in ease of doing business. We have the skilled manpower, strong economy, agriculture dependent economy. Opportunities we have that clusters are being developed like PCPR. Department of Chemicals is already working on a PCPR policy. So these are the opportunities when mini clusters will be developed for industry, and all these industry like agrochemical and specialty chemicals which will develop on a cluster based approach, then definitely there will be there's an opportunity to grow and growth. Now this slide I will take just 2 minutes. The post-COVID strategy for sustainable development of agrochemicals. The COVID is such a pandemic that has planet Earth has not ever witnessed in last 100 years. We were not ready also, and it was such a pandemic that has not come in last 100 years. Such a pandemic has not come. But on the other hand, this pandemic has also given an opportunity to Indian industry, to India also, to be a global leader, and as well as agrochemical industry also. Provided the industry should work with some strategy and in the joint venture collaborations and some methodology approach. One such a strategy I will be discussing with my limited knowledge and my experience. I have suggested this strategy in earlier talks also. I want to discuss here also. I would suggest that the now approach should be backward integration should be adopted and maximum value chain should be covered. Just for an illustrative examples, I will take based on the chemistry only, not for the industrial purpose. Just for example, if any industry wants to set up a chlorpyrifos manufacturing facility or plant, I would suggest that the approach should be to cover the maximum value chain up to the level of PCL3. Although I know all these things depends upon the availability of KSMs and building blocks, but I am suggesting the chemistry-based approach only. The industry should explore that the value chain should be covered up the level of PCL3 or either PSCL3. So that in the same manufacturing facility, if I take DT cell and ITCP route, we can produce chlorpyrifos. And in the same plant, if I take DTC and 2-chlorophenol route, then I can produce profenofos also. And even if we start with PCL3 in the same plant with DMPAT route, we can produce acephate also. So chemistry-wise approach should be that then within the same facility, in the same single plant, we can have multi-product products. 2 or 3 pesticides can be produced within the same facility. Other such example is if industry is looking for delta methane or sapromethane plant. My suggestion would be to please see the value chain starting from saprometric acid, so that within the same facility with the methylene dichloride route you can produce delta methane, and with the sodium cyanide route you can produce sapromethane. So within the same facility you will get 2 pesticides, and also the dependence on intermediates
import dependence on the intermediates or import substitution will be done and import dependence will be reduced. Another similar and very famous example that famous fungicide mancozeb. So for mancozeb plant also I would suggest that the value chain should be explored at the carbon disulfide CS2 level. So that with the maneb and ethylene diamine route, we can have the mancozeb, and within the same facility with the 1,2,4 trizinone, we can have metribuzin. So the same plant will have 2-3 products, which will not only increase the capacity utilization, but also the availability of good quality of pesticides and products will be available to the farmer. So this is the summary of post-COVID approach, that backward integration should be prioritized. And I would suggest that industry may have joint ventures, if not on a commercial level, but to increase the research at least. 2 or 3 big players can jointly have a common R&D facility, common research, to carry out to explore such value chains, to not only to study the new molecule, but for existing also, how the value chain can be produced on a commercial level in the same plant. Such type of joint ventures can also be encouraged and can also be explored. Green chemistry, these principles I will not go into detail since time is lesser. Everybody knows that. Just I will quick explain only. Basically, green chemistry means the designing of a chemical product or a process which includes lesser usage of hazardous substances or lesser generation of any hazardous substances. So products benefits are that there will be less effluent, there will be less toxicity to the environment. Economy-wise, for this benefits of green chemistry is that green chemistry is basically promotes the lesser use of feedstock materials, hazardous feedstock materials, and also the lesser batch cycle. So when the batch cycle is reduced to produce equal amount of the product, naturally the plant capacity can be enhanced. And the lesser feedstock will also, lesser consumption of raw material will also lead to the increase in profitability of the product. So in the industrial application, just one example especially for pesticide industry, the technical manufacturers know that spent acid is one of the products which is generated in most of the pesticides, like pendimethalin. Spent acid is generated as a byproduct. And disposing of spent acid is really an issue, an environmental concern. So what I suggest that industry can, their R&D team can explore that this spent acid can be utilized instead of disposing it off. It can be utilized by a simple reaction by reacting it with cetyl alcohol and followed by the neutralization process with caustic lye. They can produce a very useful product called surfactant, which is a very useful input material for all the vegetable powder formulations. So such type of research can be explored, which have the applicability in the industry, as well as that have the benefits of green chemistry also. So these are some of the initiatives which Department of Chemicals and Government of India Chemical Fertilizer Ministry has taken to promote the agrochemical industry and the chemical industry in general. One such initiative is the department has set up industrial facilitation cell, which every Thursday, which they are meeting at 4 to 6. Unfortunately, today is we cannot meet, but every Thursday, this industry facilitation cell, we are meeting at 4 to 6. We are listening to industry, taking their issues and following up with the issues with the concerned ministries or the agencies. On the similar way, advisory forum has been constituted, which in the regularity 3 months, every 3 months they are meeting and taking the issues. Similarly, department has also set up project development cell to facilitate the investment promotion and proposals of chemical and petrochemical sectors. Then we also have a chemical promotion development scheme, CPDS, which extends financial supports for organizing such seminars and knowledge dissemination programs. Now the way forward for agrochemical industry, which I propose, I suggest, joint ventures should be encouraged with focus on research and development. I understand that with the commercially it's not at all, may not be feasible or possible, but at least at research level joint ventures should be explored and encouraged. And the formulation like nano formulations, newer formulations, new studies. Similarly, awareness among judicious use of pesticides, that also Shashank sir ne bhi bataya and already it is being done. One more idea, sir, to aap jo abhi aap bata rahe the, sir, aapke liye ek aur idea, educating dealers who in turn can educate farmers. Because हमारे क्या होता है, मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा भी बुलंदशहर के पास गाँव है, और मैं जब गाँव जाता हूँ, मैं अपने भाई बंधुओं से डिस्कस करता हूँ, उनके लिए डीलर सबसे बड़ा साइंटिस्ट है. जो डीलर बोलेगा, they will blindly faith on him and they will take pesticide. So अगर हम डीलर्स को ये अच्छे से बताएं कि कितना यूज करना है, क्या यूज करना है, इसके
Already industry are doing that, but still that can be more strengthened, and we can explore that also. R&D expenditure, that R&D, that active expenditure and the R&D focus on it should be done more. And similarly, greenfield projects with world-class technology should be explored. So these are my my submissions for the way forward. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. Thank you very much indeed, sir. Thank you, sir. Now I invite our next eminent speaker, Dr. A. Kuppaswamy, Head Registration and Regulatory Affairs, NACL Industries Limited, has more than 26 years of experience in new product development, R&D registration and regulatory affairs for India and international markets, and he's going to present on Indian crop protection regulatory process. Sir, may I request you kindly to conclude in 5 to 6 minutes, sir? Thank you. Good afternoon to all. As given very less time, I try to complete as early as possible. First of all, let me thank you, the organizer, FICCI, as well as Mr. R.J. Agarwal ji for giving this opportunity to talk about Indian crop protection overview, regulatory process, opportunities available for Indian manufacturer, challenges and way forward for a future agrochemical growth. This is my topic. See, as we all are aware that population, Indian global population is growing, there is a huge demand for food, not only in India, around the world, as this per capita calories intake is going up corresponding to the population increase. Therefore, there is a demand. There is a demand, food demand is expected over a period of time, next 20, 30 years. And in this connection, India is going to be one of the emerging food bowl for giving, for meeting the demand, food demand. This is an opportunity, value chain creation. There is a mega growth opportunities in India to meet the demand. But at the same time, in Indian agriculture, you all knows that average land holding capacity is coming down over a period of time. Similarly, per acre yield is low in India compared to other countries as well as the global average. You can see, I have given some examples of soybean, pulses and cereals. We are far, far lesser than the world average as well as in other countries like Brazil, China. And mechanization is one of the area where we can improve our agricultural capabilities. Whereas compared to other countries, we are low in mechanization, percentage of mechanization. Similarly, our pesticide consumption, already earlier speakers talk about this. Consumption is, compared to other countries, we are very less, about 0.6 kg per hectare only we are using. This may be due to various reasons. This is about, again, same thing only, crop yield in India versus rest of the world. This clearly shows that we are very less compared to other countries. There is a necessity to increase our yield to meet the growing demand, which will require better farming practices, including judicious use of agrochemicals. Crop protection chemicals helps yield improvement. As we are aware that there is a loss due to various pests, disease and weeds. If you are not using the crop protection chemicals, we will get very less yield. So crop protection chemical play a major and vital role for the yield improvement program to avoid, through avoiding the crop losses. These are the segments where various segments used for crop protection. Traditional method, which we are not following right now, conventional chemical method, which we are using regularly, insecticide, herbicide, fungicides, nematicides, insect growth regulators and others. Biologicals, yes, biopesticides, especially microbial as well as microbial of fungus based as well as bacterial based, plant based products, neem and other botanicals.
Then GMO crops introduced like BT cotton and other major crops are under research. This is an overview of Indian crop protection industry. Already we have discussed many things. I am quickly run through this. The Indian crop protection industry is roughly around 52,000 crore and it is estimated to grow at 8% CAGR level up to 2025. If you see 52,000 crores, almost it is 50-50 ratio for export and domestic consumptions. Out of 27,000 crore of domestic consumptions, almost 50% coming from through import and 50% from indigenous manufacturing products. The highlight is that India is the 5th largest producer of agrochemicals and we are the 4th largest exporter of agrochemicals. The inadequate use of agrochemical can lead to approximately about 30% yield loss. This can be reduced. Sustainable use of agriculture is essential to ensure the food security and enhance the farmer income. So I am taking through you a registration process. This is about a registration in India. More than 970 products are in the schedule. About 300 technicals already registered. More than 300 technicals are registered in India for use. In this 300 technical, some of the technical are import, some for indigenous manufacture. About 700 formulations registered in India, including 210 combinations. Many of the combinations are patented by Indian companies. About 500 formulations are recently allowed by CABRC through their notification and SOP for applying through a drone. About 46 products are banned and 5 products are manufactured for export only. 35 products are under various reviews. I have a separate slide on this subject. About 9 products are under restricted use. This is a regulation in India, Insecticide Act. This act enacted in 1968, followed by Insecticide Rule framed in 1971. Now the new bill is under discussion, that is Pesticide Management Bill 2020. This is going to be come in shortly. Mainly these acts regulated for manufacture, import, sales, transport, whatever we want to do, we need to have registrations. These are the 4 main departments involved in the product registration: Central Insecticide Board, Registration Committee, Central Insecticide Laboratory, and ICAR and FSSA for label claim as well as MRL fixation. This is the act. This is mainly to regulate the pesticides with a view to prevent risk, human being, animals and environment, as well as to make available safe and effective quality pesticide to the farmers. Based on this act is framed. And this is the structure of CIB. Actually, there is 2 board. One is CIB board, another is registration committee. Board is every 6 months this board will happen, and Director General Health Services chairman. And this board, CIB, will review the progress of various activities of CIB, Central Insecticide Board and Registration Committee, and CAL activities and plant quarantine activities. The registration committee is every monthly, once we used to have this registration committee meeting to grant registration. Agriculture Commissioner is chairman for registration committee. Under Secretary CABRC, there are 6 departments, mainly this for scrutinizing all the file, technical as well as legally. These are the steps, various steps involved for bringing a new molecule from inclusion into the schedule to the getting registrations. There are 7 levels, 6 levels to get the registration. 7th level can be a Me Too registration. Once anybody get 9(3), other company can go for a Me Too without having much data generation. RTT sample is necessary for data generation, and 9(3)B is commercialized only for biopesticide as of now. These 3 type of registration which already explained, I can skip this slide. These are the guidelines available currently for various crop protection
segments: pesticides, import, manufacture and export; biopesticides for manufacture as well as export. Recently, biopesticide allowed for export. And biopesticide under temporary registration, it is allowed for commercialization. Biocide, pheromone, public health products, household, botanical. So there are so many guidelines available, including combination of insecticide plus fungicides, and even twin packing of surfactant with herbicide also available. These are the categories. Under 9.3, there are 4 categories I classified here. New molecule, first time in India introduced under 9.3, either TIM or TA, and formulation also FIM or FI category. These 2 are first time new molecule, mostly innovator companies bringing this category. And 9.3 TIM versus FI and TIM versus TA is a benefit to the Indian manufacturer. Once the registration is granted, they will go for manufacturing registrations. TA new source is mostly from China registration. These 2 are second source in India. These are the manufacturer, there are various kind of registrations available for manufacturing. For India and international use, export only, formulation and combination, and 9.4 is chemical equivalence. Import, similarly import, there are various guidelines under 9.3 as well as 9.4, both are available. Formula, technical import, formulation import, and new source, then under 9.4 TA and FI with the consent letters. This is the process. Let me explain this. Once application submitted, goes to the pre-scrutiny. After that, it goes to 5 folders to the 5 different departments. They will scrutinize and clear the file, or they will put a deficiency. Once deficiency submitted, again it goes for scrutiny. At the end of this scrutiny, it goes to RC committee after getting a report from Central Insecticide Laboratory. A new molecule, it necessary to have a MRL fixation as well as these ICR commands for a label claim. This entire process takes 18 to 36 months approximately. Pesticide Management Bill, I already told you this, there is going to be a shift from Insecticide Act to a Pesticide Management Bill. This bill already, it is in the Parliament, and the Select Committee already submitted the report. We are waiting for this act should come into force. There are a few products which manufactured in India are facing regulatory or legal challenges globally, especially glyphosate 2,4-D paraquat. Many countries, these products are having regulatory pressure, including India. India glyphosate is restricted use only by pest control operators, which is not at all possible. Chlorpyrifos is one of the biggest product in India. It's manufactured, and now we are facing a trouble. Even Stockholm Convention is planning to put into a POP category. Imida, Mancozeb, epoxyconazole, these are all facing regulatory challenges globally as well as in India. These are the various reviews happening in India, mainly 27 pesticide proposed ban. Already Dr. TPR committee reviewed this. Industry defended very well and submitted all the additional data, and final outcome had to come. And 6 neonicotinoid products which are already studies completed, and mainly for honeybee and pollinator safety. IRA has conducted the studies. Recommendation submitted to VAC for a final decision. Similarly, there is a issue from basmati rice manufacturer that to ban tricyclosyl fluprofuscin, which are going for rice, for BPH control as well as rice blast control. These products are facing a problem now. So glyphosate is already, it is in the restricted use through PCO. These are the indigenous capabilities for India. Already Mr. Vishal Chaudhary has explained in detail. There is a growth opportunities for Make in India category. There are opportunities for manufacturing off-patent generics, which are going to be off-patent. Already there are some products are already off-patent. There is a market available about 4.2 billion value of the products.
So there is a possibilities of backward integration, which already spoke by Mr. Vishal Chaudhary. Contract manufacturing possibilities. Biopesticide, yes, biopesticide is growing, gaining importance globally as well as in India. There is a huge demand for organic food. Therefore, biopesticide export is also allowed now. And export potential need to increase because India is going to be a manufacturing hub for global requirement. This can be a good opportunity. Then digital solution in agriculture, like drone usage and artificial intelligence also gaining a much importance to this. There are about top 20 products. If you see, more than 19 products are off-patent generics. There is a growth opportunities Indian companies can target to manufacture these under Make in India initiatives. Challenges, stringent regulation is affecting the easy to do business. It is necessary that to have a fast track registration process for a new molecule approval. So migration to new crop portal is a challenge now. A whole industry is facing problem. This should be resolved immediately. Implementation time frame for label leaflet is also under discussion. Delay in regulatory approvals during the launch of new molecule, and regulatory review process should be streamlined and it should be time bound, because there are last so many years we are not able to get the outcome. Way forward, as I already explained in the earlier slides, there is a very good opportunities for Make in India, under Make in India for policy to make off-patent generics and new products. CIB should speed up the process and reduce the timeline. Backward integration of key raw materials is one of the important, this is the last slide. Backward integration is important to reduce our China import, especially under Make in India, because we should be a cost competitiveness in the global market. Fast track registration approval is necessary. 93B under commercialization is some discussion is going on. Maybe this may come for new molecule, and digital technology, artificial intelligence are going to be a game changer in the agrochemical industry. Thank you very much for giving this opportunity. Once again, thanking to FICCI as well as the organizer. Thank you very much. Jai Hind. Thank you very much indeed, sir. And now, ladies and gentlemen, joining us on the virtual mode is our eminent speaker, Mr. Jonathan Soham, Senior Consultant Analyst, Agribusiness, S&P Global, has worked in a variety of commercial and technical roles in the crop protection and seed industry for over 30 years, and is going to present the global perspective of the crop protection market. Over to you, sir. Do we have Mr. Jonathan with us? Over to you, sir. Sir, can you unmute yourself? We cannot hear you. Can you hear me now? Now, sir, perfectly. Loud and clear. Okay. Over to you, sir. Yes, I think you're running my slides for me. Yes, sir, So we'll be running your slides. Okay, I can't see them at the moment. Yes, sir, there you have your slides on the screen, sir. Okay, I actually can't see them on my screen. I can see you, but not my slides. Okay, sir, we can see your slides here. Would you kindly share your screen with the slide? I'll share my screen then, yeah? Okay, can I share my screen? Yes, sir. Okay. Okay, I need to go. Can you see that? Sir, we can see the slides. You can continue with your presentation. Okay, thank you. So thank you very much for inviting me. I'm Jonathan Soham. I'm a senior analyst with Standard & Poor. I've worked in business intelligence in the crop protection and seed industries since 1978. So I'm just going to give a quick overview of the industry, a crop protection industry. And I'll try to keep to the 7 minutes.
So a quick overview of the 2021 market, followed by some information on key trends in parallel industries that have been mentioned, biologicals, digital agriculture and carbon farming, and then a quick look ahead. So to look firstly at the review of the market for last year, 2021, the global crop protection market was 65 billion, and it grew about 5%. Of course, to that you have to add the non-crop sector, which is a further 8.6 billion, and last year grew even faster because of the bounce back from the COVID of some economies. In terms of the major regions, everywhere grew except Latin America, which was held back by a decline in Brazil. Notably, the Australian market grew after many years of decline. It had favourable weather and grew very strongly. And also Europe, after many years of decline, grew. So last year was very good for the industry as a whole. In terms of the major markets, these are the leading markets. And here you can see India is actually now number 4. It's just overtaken Japan last year. It says now the 4th largest market in the world. Brazil is still number 1. And will no doubt resume growth very soon. Sir, sorry to interrupt you, sir. Can you put on the slideshow on your screen? Yes, okay, you will see it better. Thank okay? You, thank you, sir. Yeah, so thank you. So Brazil is one, India has been promoted to number 4 in the global market. And just to give an indication of the growth of some leading Indian companies, here you can see for the last financial year, phenomenal growth of some companies. This is a sample. And in terms of exports as well, very strong growth, particularly in the value, which is the green line, and that was supported by here, but you can see the very strong crop prices, pulled through demand for products, but also although the price of some major inputs, such as fertilizer, has gone up a lot as a result of the war in Ukraine, here you can see the farmer revenue above the variable cost. For 2022, we still expect that to be high, maybe not quite as high as 2021, because the basic economics is that the crop price increases more than compensate for the increases in input prices, and so the farmer's economics looks good, which pulls through more crop protection, of course. Another major factor driving growth in the market last year and also this year is the increasing price of crop protection products themselves. And this shows for China, the export price has gone up, went up in 2021, pulling up the overall market value. So this particularly shows the price for glyphosate, the price of which has trebled over the last couple of years, although it might be coming down a bit now. And this is indicative to what's happening to prices generally. And so this has obviously been a major factor driving growth in the overall crop protection market. But there's also been volume growth. A major factor, obviously, which has been alluded to, particularly in the last presentation, is regulatory pressure. And here you can see out of the top 20 products in sales terms, eight products are under some sort of regulatory or legal pressure. Glyphosate obviously has been alluded to, but others as well, particularly in the EU, where various major products, mancozeb, chlorthalonil, glufosinate, have been deregistered in the process of the re-registration process in Europe. So that obviously creates opportunities for new products, so it's not all bad news, and the industry pipeline is very strong. So to summarize for 2021, this shows the combination of the sales of the major leading companies. Again, all have shown very strong growth, and together they grew almost 15%. And as I mentioned, price was a major factor. Normally, volume growth is much more than price growth, but last year, and probably this year as well, price growth is a major factor contributing to overall growth. So that concludes the market session. To talk some of the major topics, ESG, environment, social and governance, is a very strong driving force in the industry, although maybe a bit of pushback because of the increasing emphasis on food security now as a result of the war in Ukraine and what's happening in world agriculture. But still, there are very strong drivers, environmental awareness. This year is the 60th anniversary of the book Silent Spring, which led to the rise and formation of the environmental movement in some ways. But there are also agricultural policy drivers, for example, the European farm-to-fork strategy,
and all of those feed into push for more biological products, which was mentioned earlier, digital agriculture, and also carbon farming, farmers being remunerated for sequestering carbon. So strong ESG drivers in the industry. And if we look specifically at biopesticides here, we can see that over the last 8 or 9 years, they've grown by 60%, although they still remain a niche, maybe about 5% of the global market. Growth is strong and certainly above the overall growth for crop protection, which is more like 1 to 2% a year in terms of the long-term trends. And many drivers are pushing biologicals, social, technological, economic, political, environmental. Fast-track registration is a major one. Organic farming was mentioned as well. Moving to digital farming, obviously digital farming is a whole suite of technologies which affects all stages of the production cycle, as you can see here. And there's been significant investment with venture capital at about over $1 billion a year going in. Many startups. I just spoke to somebody this morning who came out of a startup. And he actually said that although the actual penetration of digital is increasing, it's still very hard to be remunerated. The farmers are unwilling to pay for digital services, and many companies, particularly the large ones, are giving the services away free in order to support their product sales. So Bayer is the leader in terms of paid acres. Everyone's involved, but it's not a large revenue generator, and there are very many different approaches because it's a very complex sector. Almost finished now. Carbon farming. This shows along the agri-food chain, from input companies through to the final retailers, almost every company has some sort of carbon program at the moment, has made commitments to reduce carbon, either directly or indirectly. So it's obviously still a huge topic, carbon and agriculture. So almost done now in terms of the current year. The first quarter results show that prices are still going up very strong. These are the price, volume, and foreign exchange and portfolio growth of the major companies, looking like it's going to be another very, very good year. Long term, we see growth of about 3%. There are ups and downs. We might have to revise it upwards on the evidence of recent growth. But obviously, a major factor is what's happening in Ukraine, certainly in the short and possibly medium term. Ukraine is a major exporter of corn and wheat and oil seeds, and production of all those crops is expected to decline significantly. And so, although prices have been pushed up, we expect the overall Ukrainian market for crop protection to decline significantly this year. So that's it. And obviously no time for questions, but thank you very much for your attention. Thank you very much indeed, sir, for concluding your presentation in time. It was a very informative presentation on the global perspective. And now, ladies and gentlemen, we move on to the next presenter, Mr. Harish Mehta, who is a Senior Advisor, Crop Care Federation of India, and has 4 decades of experience in MNCs and Indian corporations in marketing. And he would present on demystifying the myths about pesticide use in India. May I, sir, kindly request you to conclude in 5 to 6 minutes, sir. Thank you. Good evening, everyone. This is Harish Mehta from Crop Care Federation. I'm indeed grateful to FICCI for having invited us for this program. Basically, we have heard whole day long the presentations made by several people on pesticides, the pros and cons. I would, in a very simple language, for a common man, try to demystify certain myths or certain misnomers that we carry on pesticides. We normally don't use the word pesticides, we use the word agrochemicals or crop protection chemicals, but here, of course, for common parlance, I'll be using pesticides. Now, the first myth that I'm talking about is Indian farmers use excessive pesticides. This has been discussed throughout the day. The figures which have been taken here from Phillips McDonald, India is 380 grams kg per hectare. China is 11 kg, Japan 10.9, France, Germany 3.7, and UK is 2.8. Now, keeping all this in mind, we feel that there is enough scope for Indians to use more of chemicals, but I'm not using the word excessive, I'm trying to use the word judiciously. Even the word safe is not relevant because if you take extra sugar or extra salt, it can be fatal. So what I'm trying to tell you is that use judiciously and use it to the extent recommended by the Government of India or by the ministries.
Today, it is a matter of pride that India is number 2 in terms of agri production after China, and we have really surpassed the USA, which gives us a lot of pride and a lot of compassion that yes, we can do it. Now, other countries which have been talking about excessive uses is basically a false propaganda, and I would like to clarify here in this first slide that we use very judiciously these pesticides, and there have been no harmful effects per se. The second slide. Now, we carry a high level of residues. Now, every housewife, everyone personally feels that all the stuff that we eat, whether it's fruit or vegetables, we carry a high level of residues. This is not correct. Now, in fact, in ground operations, you would see that we use mostly water. I'll come to the next slide, which talks about 99% which is used in spraying by the farmers. Supposed to be used is about 99% water and 1% chemical. But here, of course, I'm going to stick to the findings of IRI, which is talking about 2.2%. About 2% is supposedly not meeting the specifications. MRL is the residual level, which we feel that only 2.2%, that means 98% of the samples drawn in the last 4 or 5 years by the ministry, by PUSA Institute and their lab, shows that these are all within the so-called specifications. There were almost about 75,000 samples taken from food grains, vegetables, fruits, and other fruits like egg and meat, marine and fish, oil, chili powder, spices, etc. And we feel that MRLs are legally imposed commercial standards and not safety standards. Slide number 3. Now, this is something which is a very debatable question, and I would not really get into any argument out here. I have read this on data from ICMR and also taken data from Glocoban. Now, here we are saying that among these, say, 180 or 190 countries in the world, India ranks 172 in cancer cases. That means we're at the bottom of the list. So therefore, there's nothing to worry about other countries like Australia and New Zealand, which have much lesser population, and they are figuring among the top 5. USA, Denmark. These countries are supposed to be very progressive, very advanced in even agriculture and non-agriculture, and we feel that being 172 in the rating, we are pretty safe in terms of cancer. Now, coming to some states in India, which will clarify a few points here. Mizoram, Meghalaya, Sikkim, they're supposed to be using the least of pesticides. And here you will find that in terms of their cancer cases, they are one of the highest in the country. This is a thing we must keep in mind, that these supposedly organic states or states not using pesticides have very high incidence of cancer. Punjab ranks 24th among the various states in each of these cases. Now, we have also seen that in the category 1, which is categorizing a lot of items which are used, pesticide does not figure in this category at all. Among the items listed here are basically tobacco. You would have stone dust, you will have sawdust, you will have pollution, you will have something which is to do with drinks, wine, whiskey, everything which is included here. But not a single agrochemical figures in the Group 1 list of WHO's International Agency for Research on Cancer. That's something you must know of. Now, to give you some figures in the bottom, cancer per 1 lakh people. USA 362, Singapore 233, world average is 201, and India is 106. We are not that bad at all. In fact, we feel that cancer should not be there. But here again, to get back to some figures, 70% of the cancer cases which are here basically are oral, cervical or breast cancer. There's nothing else which is trying to put us in the swap or in a position which is of disadvantage. Fourth myth which is there, we talk about accidental exposure and the drift. Now, today when we are spraying in ground, and compare with the drones which are coming in now, we are also part of the same game. We feel that 99%, you use 500 ml or 1 liter of even chemical in 200 or 5 liters of water, 200 per acre or 5 liters per hectare, you will find that the percentage is only 1%. 99% you are spraying water. You take a bath with this solution, nothing will happen to you. And if you take lethal dose, which is supposedly a higher dose, which is not recommended, that's a different issue. But as far as we are concerned, we are recommending and trying to create awareness with the farmers. Today, my purpose is to create awareness amongst you. When you go back home, you must tell them what you have heard today for just 10 minutes to see that at least the misnomer which you carry in the mind is partly removed. We are the ones who are propagating the use of extra safety kits. In the last 4 or 5 years, or even last 3 years, including COVID period, we have distributed about 1.25 lakh safety kits. We have a database of almost about 1.5 to 2 lakh farmers,
to whom we have trained and we've given the kits. We have also given kits to pandemics like locust control, etc., which have given to state governments. And we feel that by using these safety kits and using them repeatedly, the inhalation cases have come down. The case in point would be the Yamatmal case, where 4 years ago there were quite a few cases. I'm happy to say that after talking to the Maharashtra government, there's been only one case of inhalation this year. And we personally feel that it should be avoided, whether it is by drift or by inhalation. And we feel that the effect of drones, which is being done, where you'll find that the water content is just about, in a tank of about 20 liters, 18 liters would be chemical and maybe about 2 or 3 liters would be water. I may be corrected if I'm wrong, but I personally feel that the studies on drone are being conducted, and we feel the chances of drift in case of drones has to be regulated. Oh, sorry, I'll come back to the same slide. Next slide is about market being spurious. Now, we know English language. We all talk about English here. In the Insecticide Act 1968, which is our Bible, we follow that right through. Fake, spurious, illegal, duplicate, counterfeit are no words in this act. I'm repeating again, fake, spurious, illegal are no words in this particular coinage. And we personally feel that the samples which were drawn, about 3.38 samples were drawn, and I'm quoting the Minister of Agriculture, Sri Tomar, saying that 1.17 did not meet specification. The word used by him is did not meet specification, and we personally feel that this is something which you need to be on the safeguard, because it is hardly 1.17%. I've also talked to the the dealers, distributors who are handling all India sales. Their estimate is about 2% is supposed to be not meeting specification. India's water remains highly polluted. Now, we are talking about Andhra and Punjab, I'm cutting short my presentation, which have the highest use of pesticides primarily. And we still feel that the productivity, fish productivity at 6560 kg per acre of inland sea water is one of the highest in the others compared to other states. And therefore, I feel that we are of the confidence that there is no problem of pollution with the fish in the fresh water otherwise. Another sad thing to talk about is suicide. People talk about suicide, it creates a lot of impression, a lot of attention, and I personally feel that I'm taking figures from NCRB, National Crime Record Bureau. 93% of the suicides done are in the cities, and the major way of doing it is self-hanging. Now, we personally feel that suicide in any form, whether by farmer or non-farmer, is not desirable, should not be done, and they deserve equal empathy from our side. However, the main reason for suicides are basically abuse, drug abuse, illness, financial losses, bankruptcy, etc., and not pesticides. India uses pesticides that are banned in other countries. Now, on the contrary, I would like to say that pesticide banned in India, for example, I'm sure about 2 products, one is DDBP and Forate, are being used globally in all developing countries which are banned in this country. Number of registered pesticides are 290 in India, 467 in Europe, Brazil, itna. But then remember one thing, number of registrations has no bearing on the use or efficacy, because even in India, as far as my estimate goes, out of 290, the major molecules constituting your business would not be more than 60-70. And rest would be used in a much sparingly and a lower value. So therefore, number of volumes registered, number of molecules registered has no direct bearing on what I'm saying, and I still feel that India has got molecules which are good enough to take care of our entire crop segment. The 5 top crop segments are basically paddy, wheat, soybean, vegetables, and grapes. This is a controversial subject again, organic and non-organic. People know about Sri Lanka, what has happened, and we also feel that in India, globally the figure is about 1.5%. And India, my estimate is about 0.8% is organic. We personally feel that organic and non-organic chemical fertilizers, chemical pesticides can sustain together. They can go together because they have a farmer's the choice of using whatever he wants to choose. I was told in the morning also. And we feel that, but another study from Stanford University says that there is no difference in nutrition value in terms of 50 nutrients between conventional and organic produce. You pay a higher price, half the production, double the price. Last slide is talking about Indian manufacturer not able to manufacture quality. Now, I personally feel that Indian engineers, Indian technocrats are very competent. We have the idle capacity here, which is about 35%, and we feel that the Indian manufacturers, I'm putting all the Indian manufacturers together whom I represent, we feel that
80% of the exports made to about 138 countries are made by this association and made by their members and Indian companies, which is a matter of pride. And we also feel that once these have been made in India, when it becomes a production hub, the prices drop by 50 to 75%, which has been documented, and we have got almost about 10 molecules in which we have seen this over the years, what has happened here. And we also feel that the effort on the R&D by Indian companies, not in terms of maybe invention, but in terms of innovation, has been on the increase, and this can really take us through. Thank you very much. Thank you very much indeed. And ladies and gentlemen, with that we come to the final presentation of this session, for which I would like to invite Dr. Rajiv Paul, Senior Scientific Officer, Regulatory and Ecotoxicology, Oxlife, is going to present on importance of pesticides, regulatory frameworks and judicious use of pesticides for sustainable use. And sir, may I request you for 5 minutes? Yes, sure. Thank you, sir. Hello, good afternoon everyone. First of all, I would like to thank FICCI for giving us an opportunity to be standing here and present the topic that I'll be talking about. We are Oxlife, the global regulatory consultant into this business for the past 10 years, and I have been associated with Oxlife for the past 5 years. So whatever the little knowledge I have gained in the past 5 years, I would be sharing with you all. As it is very widely said that education is all about gaining the knowledge and sharing the same to the others. So I will try to do that. So we'll have the importance of pesticide regulations, exposure of pesticides, the importance of levels and sustainable use of pesticides, and certain recommendations for the farmers. So when we say the pesticides, otherwise also known as the crop protection product, the name itself is good enough to understand its role. It helps safeguard the crops from the pests. At the same time, it also befit that it is not affecting the non-target organisms, and it's not affecting any effect on the human or the environment. So the improper or the extensive use of pesticides may cause human and environmental health. So there's a government set stringent and standard regulations for the registration of pesticides as well as for the re-evaluations of any existing pesticides. So there is an enormous amount of data generation, and requirements are there. Of course, this has a basic and scientific requirements. This data generation helps identify the effects of those pesticides into the organism, which is to be understood. The regulations are very important to check the proper use of pesticides in agricultural field, and the sustainable use of pesticides is important to understand and adhere to the leveling and notifications that have been submitted. So why pesticides regulations are important? It helps check the proper quality of the pesticide so that it does not have any effect on the human and the environmental health, and also it is safe for the human use, and it will help check the efficacy of the product, to also check the residues which remain in the crops for the better export and quality of the crop will be produced. So how the pesticides are getting exposed to the different kinds of environment. It is not, as we all know, it is as Paracelsus very rightly said, that is a dose which defines the poison. Anything, even oxygen or the water which is consumed beyond the limit dose, it becomes a toxic. So even for anything which is used in limited quantity is not a poison. So likewise, it is for similar to the pesticide. If it is recommended as per the dose defined, it is not a poison, and it is beneficial for the crops. So because pesticide has the potential to contaminate and accumulate in the environment and causes surface water damage to the crop, to the organisms living in the environment, and other organisms in the soil and the groundwater. So a very important point to be discussed here is the importance of levels. We always often have seen that there is a level in any of the product that we buy. So very often we negate that and move on using the product. So adhering to the levels is very important for everyone. Even for the farmers that they are using, we must recommend that if they don't understand, they ask the people concerned, those who understand that level, to what exactly it is written. There are sometimes we have seen that the labels have come with various kind of symbols and exclamation marks. So it has got certain kind of definitions defined within it. So some farmers should adhere to that. If this is written that 8 kg per hectare has to be defined for certain kind of a crop, so farmers should not use more than that to get the proper better use. That is all myth. So we have to understand that whatever it is defined, that has to be followed. At the same time, when we follow the labels in a proper and a recommended dose, it will help not have any kind of toxic effects on the crops, and the residues will be lessened, and there will not be any phytotoxic effects on the crop, which will not minimize the crop growth and yield.
So what are sustainable uses of pesticides? Good agricultural practices are to be followed. First of all, while purchasing pesticide, farmers should know that they should buy only from the licensed or licensed vendors. They should see the instructions given in the labels or the leaflets about the expiry date, about the manufacturers, about the manufacturing date. Then while the storage of pesticides, farmers are to know that where they are supposed to be storing. If it is written, just keep it away from the light or from the children, so they should follow to that. While handling of pesticides, no farmer should transport the pesticides along with the crops, along with the food or the fodder. They should not carry the pesticide directly on the head or shoulder, so those things are to be avoided. While using pesticides in agriculture fields, proper labeling instructions should be followed. No, PPE kit should be used whenever it is required, and the desired quantity should be used. So we boils down to everything is that we must adhere to the regulatory requirements and data generation, which is very important for any pesticide registration. The labeling should be followed. It will help improve the quality of the crop. It will reduce the residues in the crop. It will help getting a better price while exporting. This can also be helpful for the farmers in using the lesser quantity of pesticides, and because of the less wastage of the same, and at the same time it will also help reduce the level of phytotoxicity, and the crops will not be pest resistant. So with that, thank you. Thank you very much indeed, sir, for that wonderful presentation, and most importantly, concluding it in time. And ladies and gentlemen, with that, before we close this session, let's put our hands together for all our eminent speakers for the wonderful presentations we had from them. And we straight away move to the next session, which is a panel discussion session, requesting everybody to kindly remain seated while we arrange the top table for the next session. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much indeed. Want your time also. Yes, sir. Hanji, sir. So, ladies and gentlemen, the next panel discussion session is on role of agrochemicals in increasing the food production. And let's put our hands together for our distinguished chair, Dr. C.D. Mai, former Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Inviting eminent panelist also, Dr. Vikas Bhale, Vice Chancellor, Dr. Panjab Rao Deshmukh, Krishi Vidyapeeth, Dr. Samar Singh, Vice YES, 3 alphabets and 1 word. So, this is not the issue to discuss. The issue is different. The issue is, if the production is increasing by using different crop protection measures, throughout the world, more than 1,300 insecticides are registered. And why India is limiting itself to 247 to 287? In some books there is written that 247. I think this is more than that. This number is registered only. There are so many good pesticides which are not of chemical origin. They are of organic origin, and they are available in the world, but they are not being used by us. What for? This is because when a pesticide comes to India, then its screening starts from zero, and it takes 8 to 9 years to come to the market.
when the same insecticide is working good on the same crop in other countries, then what is the need of investigating it for 7 years? If you want to do research on the basis of the altitude, so 2 years crop is 2 years data is enough. So if in 2 years it does good in your area, then you should allow it. So if it will be done, then I think we will be getting more molecules for the farmers to increase the production. The second point which I just want to emphasize is of the spurious material. In the market, both type of insecticides or pesticides, we call them in pesticides mainly, they are available. And the China is the country who is supplying the active ingredient of good quality and also bad quality, both. And secondly, most of our scientists, they do not research on what is there in the packet of a insecticide pack. So in some of the packs, you will find a cocktail of 7, 8 insecticides together, and the active ingredient is very less. So the problem of resistance arises. So there should be a check on this also. And this is not the case with the insecticides, weedicides. This is the case with the medicines which we use for the human beings. So this is very dangerous. And those persons who are doing this, they should be punished as per law, and the laws should be very strict. So this is the second problem. The third problem is of the language. So this language which we are using here or in different conferences, this is of no use to farmers. So information to farmer should be in his own language, not if in Rajasthani, if not in Punjabi, then at least in Hindi, so that he can understand what scientist is saying. And the booklets and information booklets should be available in their local language, so that the ready-made information is available with them. So these are the 2-3 points, and which are very, very important, which should be taken into consideration. And I thank very much to Dr. R.J. Agrawal sir for calling me here, and thank you very much. Thank you. I think Dr. Chakravarti is from Uttar Banga, West Bengal. He was earlier director of Potato Institute in Shimla. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. And very good afternoon to all the delegates. Really, it's basically was a learning experience for me. Usually we get very, very rare chance sitting the entire day through and listening to pioneers. Really we get actually rare opportunity at this stage to really sit the entire day and listen to so experienced people, and really all the lectures I think I have enriched definitely immensely, and for that I am really thankful to the chairman of the FICCI Committee on Plant Protection, Dr. Agarwal Sahab. He is a man of wisdom. From the very beginning I am listening to him, every word. It comes from his very rich experience. And of course, myself, you know, I don't have to tell, he is a distinguished, very distinguished academician, scientist as well as administrator in the field of agriculture.
And I just would like to mention one name, my very close friend, Dr. P.K. Chakraborty. He was the member ASRB. Basically, he invited me. He said, you should participate in this. And really, I'm thankful to Dr. Chakraborty. Okay, the topic actually today, the discussion is role of agrochemicals in increasing the food production. You know, food production, there is no doubt about it. We need more food. By say 2050, FAO is telling 60% more food is necessary. Recently, our member Niti Aayog, Ramesh Chandji, they had a brainstorming and they come with a publication, very good publications, India's food agriculture towards 2030. There they have mentioned clearly how much food we will need by 2030, which each items. And the strange thing is basically we are putting more emphasis on type of food which will not be required by 2030. Say for cereals, they have calculated, they have come up with a target. Cereals, there will be overproduction of 30 million by that time, 30 million tons. Vegetables will need more, 32 millions more. So that is also a strange dilemma in our country. We are putting emphasis on wrong areas. And you know, actually, for these higher food production, there is no other options but to use agrochemicals. Agrochemicals means I will consider all the fertilizer, pesticides, everything. You see, actually, in a theoretical basis, if you consider, plants are the only organisms in the life in this earth which can actually synthesize the elements, the compounds, into assimilative food, into your calorie, carbohydrate, proteins. All other forms are using that food, only the plant-based food. So plants are the only things they can use the chemicals. And if you do not replenish the soil where usually we are producing, you just leave alone this soil-less culture, aeroponics, hydroponics, all the vertical gardening, very minimum contribution. Mostly soil matrix is used. And if you are not replenishing with these elements, then definitely its productivity will be affected, definitely. So definitely we have to use fertilizer, we have to replenish the soil, otherwise there is no other options. So for more production of food, we need agrochemicals. In which form you need, say, we talk about organic amendments or organic manures. Plants ultimately only absorb through as ammonium, NH4 or NO3. So that will be broken. It is not that plant is eating the organic just like our human beings. So ultimately from which source it comes, it has to be supplied either in organic form or inorganic form. Inorganic form will be cheaper, organic form will take more time. So another way, I will just take maybe another 2-3 minutes. Another way is to increase the food production is to save what you are producing. From the morning we are listening, FAO has calculated about 40% loss, 40% total food loss due to pest. Pest actually they considers all sort of things, all species or race or biotype of plants, animals or anything, any other pathogenic things which is injurious for the plants or the plant products. So that 40%, that saving you can, if you can do, there will be huge productions, huge definitely save in the food front. So in that front, actually, we are talking about how many pesticides we have, whether we have to import or restore more. There is no questions. New molecules definitely has to come to the country. They are much, much safer. Dr. Mai was talking about what is the role. Say just two things you are very much well aware. Say there were several famines caused by the diseases, but of late we are not finding any such type of famine. Potato famine probably you have all heard, Bengal famine you have heard. The disease, the effect definitely through the agrochemicals, it has come. We have not seen that type of, even during say drought years, sometimes we are able to save the crop because of these agrochemicals. One thing I would just like to mention, somebody was mentioning about, there is a connotation, a suffix we always put pesticide, insecticide, fungicide.
this sidal part is doing a lot of harm. Sidam is ability to kill. That term, something I think globally has to be changed. My opinion, sidal is a fear. It inculcates fears in you. It is no more a sidal. Say from pathology, we were calling about disease control. We have now come down to disease management. We are not talking about control. So this sidal has to be somehow, it has to be somehow, some replacement should be there. And somebody was talking just before me, this Silent Spring, you know, this Rachel Carson's book, that has actually created a lot of fear psychosis in the mind. There was definitely some effect. But nowadays, I also come from a very remote village in Bengal. Every year I visit there, stay about 15-20 days. I know there are a lot of reversal happened. I have seen in my own eyes, the birds were in say 60s or early 70s, birds were just dying. Jackals, particularly the jackals were absent totally. They were just eliminated. Now they are coming back. So it is reversing. Somebody, the new generation, some literary people should take up this challenge and come out with a book of this reversing of the silence of spring. Birds have started singing now. So somebody should come out with such type of literary that will actually eliminate all these myths, what we are talking about. So friends, I will not elaborate much. If there is any questions, maybe we can now take it request up. Dr. Kapoor. Thank you, Dr. Mai. Well, first of all, I would like to thank Vicky for giving me this opportunity. Well, I will say a big yes. Agrochemicals have a big role to play in increasing productivity. I joined the industry way back in 1977. It's been 45 years. That time the industry size was 125 crore, all India basis. Today, the domestic consumption value is 25,000 crores. So it's 200 times increase. If we look into Government of India data, you will see that the land area or the cropping area remains fixed for major row crops like wheat, rice, soybean, but it's the production increase which has been helping to feed the growing population. Having said this, RJ sir talked about new technologies. Our Mantriji also said about new technologies. I'm very proud in saying that in my lifetime, I introduced 29 new molecules which were registered through CIBRC. And this has not only changed overall application pattern, this has also changed the agricultural practices within the country. One example is the seed treatment which we do with imidacloprid. That was the first time. Earlier seed treatment was being done only for fungi. This was basically for fungus control. Then the insecticide seed treatment was introduced. Then I was also associated with MICO for introduction of PT cotton. PT cotton, though it is considered not a plant protection, but you provide inbuilt protection to the plant from pests. So that also would be part of plant protection. And for me, for future, I see the technology advancing, and you will have pelletized seeds which will have coatings that will have all the traits, genetic trait to withstand drought, biotic stresses. They will have chemical coating, they'll have fertilizer coating, and these seeds subsequently, especially for vegetable crops, where you have high value seeds and low volume, this will totally change and revolutionize cultivation pattern also. Beside this, carbon saving, very much impressed by DSR program of our organization, PI Industries, direct seeded rice. This has also changed a lot of agriculture pattern. Already people would have read about Punjab Chief Minister adopting DSR. We had been promoting DSR for the last 12 years. It is gaining, it's a slow pace,
but it's only happening because you have the right agrochemical to do DSR cultivation. With this, I will not take much time. Anybody has questions or any other knowledge they want to gain, they are free to interact with me after the break. Thank you very much, everybody. Thank you, my panelists. Actually, because of short of time, otherwise everybody has a store of knowledge about pesticide in their area, how they are using. But one thing is, I think, very clear, that what all of them said, that it is an integral part of cultivation today, and without that, you are not able to really increase production. So that is the thing. But with this now, before we conclude, I would like to just say that in pesticide, one has to be very careful about 3 R's. One R is resistance, the second R is residue, and the third R is recurrence. If you manage these 3 R's, I think we should be able to win the war with even those who are against pesticide. What we have done in grapes, for example, not a single consignment of grape has returned back, mainly because we have a residue management system where it is at place. So likewise, if we do it, I think there will be no questions from other side that the pesticides are bad. So they are needed, but once they are needed, how much, when, what, and how to do that, and that is why I said that if we remember 3 R's, it will be very useful for management of pesticide totally. Thank you very much, madam. Hello. Thank you very much indeed, just sir. the last point. Agarwal sir, many chemical they are in the market, but they are not label claim. So many times we cannot recommend that chemical for the particular crops. So I request to the industries, let us have some solution on that. Chemical they are in the market, farmers they are spraying, they are getting response, but university cannot recommend it because it is not a label claim for that crops. So the industry should see in that way how we can make it label claim that recommendation, what are chemical in the market. So thank you very much. Thank you very much indeed, ladies and gentlemen. Let's put our hands together for that wonderful panel discussion session we had. Some very nice addresses and some very valid, important points that came out, suggestions that came out from this panel discussion session. And I would once again request all of you to kindly remain seated as we straight away move into the next session, which is a very important session with some of the senior government officers gracing the stage. Kindly give us a few minutes while we arrange the talk table for the next session. Thank you.
So, ladies and gentlemen, may I have your kind attention, requesting everybody to be seated, all mobile phones put onto silent mode. We are ready to go ahead with this very important concluding session of today's conference, which is on positioning agrochemical sector for the future growth. And may I invite Shri Susanta Kumar Purohit, Joint Secretary Chemicals, Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India, to kindly grace the stage with his presence. Let's put our hands together to welcome him. Warm welcome to you, sir. Inviting Mr. Rajveer Rathi, Director Public Affairs, Science and Sustainability, IBSL Bayer. Warm welcome to you, sir. Inviting Mr. C.S. Liu, MD Pacific Agri-Science, to kindly join us. Warm welcome to you, sir. Inviting Mr. Siraj A. Chaudhary, Non-Executive Director, NCML, a warm welcome. Inviting Mr. Deepak Bhardwaj, Director and Co-Founder, Teach World Aviation Private Limited, warm welcome. And also inviting Mr. R.J. Agarwal, Chairman FICCI Crop Protection Committee and Chairman Dhanuka Group, to kindly grace the stage. And ladies and gentlemen, our two very special guests, Shri Jaiprakash Dalal, Honorable Minister, Agriculture and Farmers Welfare, Animal Husbandry and Dairying, Fisheries and Law and Legislative, Government of Haryana, will be joining us shortly. And also joining us shortly will be Mr. Ambar Dubey, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation, Government of India. And ladies and gentlemen, we begin the proceedings by requesting Mr. Agarwal to present a green certificate to our special guest, Shri Susanta Kumar Purohit, Joint Secretary, Chemical, Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India. And ladies and gentlemen, this green certificate, once again, is a green initiative by FICCI, where the trees are planted for the tigers and the Sundarbans resorts in West Bengal, reserves. And ladies and gentlemen, our special guest, Shri Susanta Kumar Purohit, Joint Secretary, Chemicals, Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India, has 28 years of experience of working in various posts in the Government of India, and I have the proud privilege in inviting Sir for his address. Ladies and gentlemen, once again, put your hands together to welcome Shri Purohit. Good evening, ladies and gentlemen, respected dignitaries on the dais. In fact, I am really privileged and honored today to be invited to this August gathering. It's a very important occasion, and I congratulate FICCI for organizing this function. So the Indian agriculture sector plays a very important role in the Indian economy for providing livelihood to more than half of India's population. Thank you. India is blessed with rich resources for agriculture, both in terms of size and diversity, making it the largest producers of various commodities such as spices, pulses, milk, tea, cashew, jute, and the second largest in wheat, rice, fruits, vegetables, and many other items. The agricultural inputs like seeds, fertilizers, agrochemicals,
play a major role in improving the output of agricultural sector. The agrochemical industry play a very major role in improving the agricultural yields by preventing loss due to pests and diseases. As you know, the Indian agrochemical industry is valued around Rs 42,000 crores, almost $6 billion US, and is expected to grow at a CAGR of around 8%. This is an equal contribution of exports and domestic consumptions of the agrochemicals in India. High value of exports along with high domestic market consumption indicates a very strong production capacity. The agro industry is announced as a champion sector by government, and to keep this energy of the sector high and keep moving ahead, such forums act as a catalyst. It is my privilege to share with you that the Federation of Indian Chambers in Commerce and Industry, FICCI, with the support of Department of Chemicals and Petrochemicals and Department of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, has organized this 11th edition of Agrochemical Conference today with this theme, Policy Landscape for a Flourishing Agrochemical Industry. Today, through this platform, where all the stakeholders have come together to discuss and share their valuable ideas to take Indian industry to a step ahead and create opportunities for the global players to see India as an investment destination. For this, I congratulate to each one of you, and especially FICCI, who have created such opportunity and brought all of us together to this platform. The government's vision to achieve a 5 trillion economy by 2025 is a very ambitious goal for the economy and would require all the sectors to make great strides and grow at a very significantly higher rate. The agrochemicals industry will play a major role in terms of improving productivity through increased usage of agrochemicals in a scientific manner while meeting the global standards of residue level required for agricultural exports. The agrochemical industry also has the potential to directly contribute to the growth of the economy by becoming a global agrochemical manufacturing and exports hub. India's strength is low-cost manufacturing, the availability of technically trained resources, seasonal domestic demand, overcapacity, better price realization, and a strong presence in the generic pesticide manufacturing are the major factor boosting the insecticide segment growth and making India a better opportunity as an investment destination. Apart from this strength, we also have to see the work on the areas where improvements are needed. As per the industry estimate, yearly crop loss in India due to pests and diseases amounts to 15 to 25% of the total output in the country. It necessitates emphasis on crop protection chemicals, particularly insecticides, fungicides, herbicides, and other like fumigants and rodenticides to protect the crop and after harvest produce in storage and transport. However, with average consumption of pesticide in India with 0.65 gram per hectare against the global average of 3 kilogram per hectare, the agrochemical sector in India has huge unrealized potential for growth, given the presently very low level of application as compared to global norms. Indian agrochemical manufacturers have huge capacity base with innovative product portfolios to support farmers. Agrochemical industry has witnessed huge investment and mergers and acquisition, which is helping Indian companies to reduce the research and development cost, development time, and improving efficiency in R&D processes. Seasonal domestic demand of agrochemicals lead to more than 50% of production being exported. The outstanding capacities with Indian manufacturing companies creates a huge potential for further increase of exports. The growth in the sector under the vision of Honorable Prime Minister of India is the outcome of various reforms and initiatives taken by the government, namely move towards second green revolution, infrastructure connectivity, digital connectivity, reactivating urea fertilizer plants, National Mission for Sustainable Agriculture, Krishi Udan scheme,
And the 16-point action plan will revive agricultural sector, boost exports of the country, and double the farmers' income. Government of India, while taking steps on increasing agricultural productivity, is also focusing on doubling farmers' income, which demands affordable price of agri inputs. While large-scale progressive farmers can afford prices, majority of Indian farmers being small landholding farmers with around 1 to 2 acres of land who are economically not very sound, making available crop protection products at most economic price will also be a key to increase of the demand. India has relatively advanced pesticide technical and formulation research capabilities. Currently, Indian manufacturing capacities are underutilized. With more investment, it will be a great opportunity to increase its export business opportunities. Together, we all should come up with innovative ideas which can directly benefit the industry broadly. We should fight against the hunger and poverty by providing food and nutritional security. Thank you. Thank you very much. Thank you very much indeed, sir. And ladies and gentlemen, we also have the privilege that we are joined by Jai Prakash Dalalji, the Honorable Minister for Agriculture and Farmers' Welfare, Animal Husbandry, Government of Haryana, and Shri Ambar Dubey, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation, Government of India. I would request Mr. R.J. Agarwal to kindly do the honors of welcoming our distinguished guest by presenting them a green certificate. So ladies and gentlemen, once again, this green certificate is a green initiative of FICCI, where we plant trees for the tigers in the Sundarbans National Park, West Bengal. We welcome Mr. Ambar Dubey. A warm welcome to you, sir. And now, ladies and gentlemen, I would like to invite Mr. Rajveer Rathi, Director Public Affairs, Science and Sustainability, IBSL, who has more than 2 decades of experience in corporate affairs in agri-input, industry, spanning regulatory affairs, scientific affairs, government affairs, industry, public affairs, corporate affairs and communications, and agri-product stewardship. And he is going to present on international CP regulatory regime and what best practices India can adopt to improve the existing content. And over to you, sir. Thank you, ma'am. Very good evening to everyone and honorable people sitting on dais, and I can see a lot of seniors industry colleagues in the audience. And to save some time, I had prepared the presentation, but I'm not sharing it. I will not go in the repetition, and probably I'll share 6 to 7 the key areas which India can adopt, which are best practices. But before that, few of the remarks. The time will not remain the same, or the situation which was there pre-COVID. That's very clear. And there are a lot of things which has changed, and this change is good and bad. It's just not one-sided. Intensity of the current challenges, if you look at either impact of climate change, either the droughts and a lot of other things, either it's a conflict, either it's a trade war, or invasion of a lot of pests which has been reported, like fall armyworm. It's also the black thrip in chilies, which has been talked in the morning, that how much havoc it has created. So I think there is a need to revisit what existing we are doing it, how we can improve the existing practices, and also what different new set of practices which are in place can be adopted. But before going into that, let me also acknowledge and appreciate during last 3 to 4 years what Government of India has done it through various ministries. One is, of course, revisiting the entire regulatory system, and that's where it's been called 3D, which the term which has been coined by Mr. Salil Singhal. That's where it's decision, discussion, and delivery. There's a lot of work which is just going on. There's a need to speed up. Number 2, if you look at when there was a fall armyworm attack, the government has given the emergency use authorization for a lot of products, which is, I think, really appreciable. The third thing which is really,
happen or made to happen with a strong collaboration between various ministries, and I would like to mention Mr. Amber Dubey is here from Civil Aviation, where they had worked with Ministry of Agriculture, come out with drone SOPs, and thanks to Ministry of Agriculture, where they had allowed 507 formulations for its use as on ad hoc basis till the data is being generated over there. Now, coming back to the title, what are the best practices and what India can adopt? One is, of course, nothing, specific, but it's also a mix of things. One is clearly that how we can revisit the time taken by the regulatory agencies to scrutinize the file, both for new active ingredient or technical grade, as well as the formulations. There are many countries of our size, our nature, which takes out around 1 to 2 years, but the time taken in India is little more than around approximately 4 years. And if you look at the way things are changing, the way we have seen in March and the way we have seen that revised estimate, I'm just using example of wheat, I think there is also a need that how we can increase the innovation rate. So this is one, I think that's an urgency that how we can pick up the best practices and introduce the new and innovative products. The second most important thing is that often the big companies or the innovators are being, I won't say the allegations, but they have been accused that the new molecules are introduced 15, 20 years once it's being introduced in the developed countries. What industry is suggesting is that why not provide approvals for the coded compound or the new chemistries for its simultaneous testing in the country so that Indian farmer can also have a benefit of an access at the same time. The other thing is in terms of allowing the biologics, which is still under consideration, but I think that's also important. If you look at since morning, we have talked about organic, natural farming or regenerative farming, and we do support a coexistence of all forms of an agriculture, and that's where we need to empower farmer so that he has the entire toolbox, and based on his choice, based on his preferences, he can use either of them in an integrated manner, and we have seen that how best we can make use of these available tools, either it's biologics or it's biostimulants or the other new innovative green chemistries, what we call, how it can be done. The last I want to just emphasize is on the digital side of it, which is really important. And there are a lot of efforts which has been done, but there are a lot of glitches which are there in terms of data acceptance. When it comes to the regulatory, it's functioning. But at the same time, I think once we adopt the digital, there are a lot of things which needs to be done at a state level when material transfer from one district to other district. I'm just giving an example and it becomes really, really tedious. So these are, very specific to the topic. And these are the things I think if 10% is being done, I think it has a potential to increase the innovation rate, increase the introduction, and also providing access at the same time for the new technologies to the farmers on the real-time basis. So thank you so much. Thank you very much indeed, sir. And now, ladies and gentlemen, I would like to invite Mr. C.S. Liu, founder and managing director of Singapore-based Pacific Agri-Science, and he has been in the global agrochemical industry for about 44 years. And today he is going to present on leveraging mergers and acquisitions to optimize portfolio and extend geographical presence. So let's put our hands together to welcome Mr. Liu. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's so good to be back in India again after an absence of 2 years. Just want to let you know that I've been to India many times, over many years. My first trip, international business trip, was actually to India back in 1980 when I worked for Agrochemicals, which is today part of UPL. So I've been coming to India very regularly, except for the last 2 years. Like I said, I'm so happy to be back again. One of the good things about being one of the last speakers in this conference is that half of what I wanted to say has already been said. So I can really thank all the speakers before for concurring a lot with what I have to say. So before I talk about mergers and acquisitions, how the agrochemical industry in India can adopt this
mergers and acquisition practice to expand globally. I just want to give you a quick snapshot of where we stand today in the industry. So raw demand continues, although for agrochemicals, although only at about 1 or 2% cargo, compounded annual growth rate. It is still growing, but what I really want to emphasize here is that resilience has been demonstrated over the pandemic period. I mean, one would think that during the pandemic, there should be a decline in demand because of all the disruptions in supplies and logistics and whatnot. But most of the companies around the world that I deal with had been doing very well in 2020 and 2021. And food security, of course, food security issue has been heightened during this COVID period. And then this is compounded by the ongoing Ukraine and Russian war. So this is adding to the problem of food security. Domestic Indian demand has good growth potential. A number of you speaking earlier today had already confirmed that. And of course, the one highlight is the fact that India uses comparatively low levels of chemical pesticides compared to many other countries. So meeting food security and export demands, of course, will also spur growth. I was here in Delhi 3 years ago in a food conference. I was invited as a speaker, and the objective of India, one of the objectives of Indian agriculture is to export more food. And I can confirm, coming from Singapore, that in the recent 3 or 4 years, I've started to see Indian vegetables being exported to Singapore, and they are all in the supermarkets in Singapore. So, and I also picked up this morning that India now exports about $50 billion of food. So India definitely would be a food bowl of the world. So there's also growing demand for organic food. Of course, this doesn't lend support to the growth of the agrochemical industry, but that is coming, so we cannot stop that. So we have to take that into account. And because of the demand for organic food, it's there. Supermarkets are responding by increasing shelf space for organic food produce. The China factor. 3 years ago, I actually organized a conference in Singapore to see if I could get Indian agrochemical manufacturers and Chinese agrochemical manufacturers to get together to see if they could do joint ventures. Because of all the issues with supplies in China, I felt that there should be another foothold outside of China, and India is definitely poised to be a partner of the Chinese agrochemical manufacturers. And I still believe that is the case, and more so with all the disruptions that we see today, climate change, legislations, regulatory pressures, and whatnot, and of course geopolitical rivalries as well. Here I said the love-hate relationship will stay. That's between China and India. At the government level, maybe there are some issues, you know, geopolitical rivalry issues, but at the people level, Indians and Chinese have been collaborating for a long time. You know, India is buying a lot of key raw materials from China, and China is benefiting a lot from a lot of the APIs that come from India in terms of pharmaceuticals. But the overdependence on China needs fixing. You know, a lot of key raw materials, building blocks come from China. I think this is one area that India needs to address. The whole entire agrochemical industry needs to take that into account. And mindful of the Chinese pendulum, I call this a Chinese pendulum in terms of supply and demand. You know, a pendulum really swings between 4 o'clock and 8 o'clock, but the Chinese pendulum swings between 2 o'clock and 10 o'clock. I'm referring to the supply and demand situation. So this needs to be taken into account. Opportunities for Indian agrochemical manufacturers and exporters.
as I say, geopolitical issues giving rise to new opportunities, but threats as well. As you can see from the Ukraine-Russian war, when there are sanctions, when there are these sort of issues, it's so unpredictable. So you need to really do stress tests and say that if you are totally dependent on one country to supply you with a key raw material, what happens if there are sanctions, there are disruptions, right? What do you do? So you really need to do stress tests. Logistics issues, of course, during the pandemic, serious disruptions to shipping. So again, we need to learn from that situation. And this pandemic, COVID-19, is not going to be the only one. I think the forecast is that there could be more such pandemics and disruptions going forward. And the good thing, of course, is suppliers are concentrated for agrochemicals. Basically, only 4 countries, 4 regions. You know, Indians, Chinese are the 2 big generic agrochemical producers. Japanese, and also a handful of majors. You know, the Cortevas, BASF, Bayers, Syngenta, FMC. Yeah. So not a lot of players, so it's pretty concentrated. Favorable price-demand dynamics prevailing during this time. You know, ag commodity prices are way up there. And as one of the speakers was saying earlier, because of this, there's a lot of buying, a lot of demand. So high ag commodity prices actually also drive the growth in demand for agrochemicals. And the higher the agrochemical prices, the greater the demand. Of course, I'm speaking at farmers who are doing quite well. Of course, subsistence farmers may find it very difficult when there are high prices prevailing. Of course, the most important thing here to say is also that right margins will ensure responsible manufacturing. You know, we are in the agrochemical industry. We've got to be mindful of pollution. So therefore, with now more money being made due to the higher prices, I think some needs to be plowed back into ESG aspects, right? Now, what are the threats? This is one very important aspect that we need to take into account going forward. I mean, we paint a very rosy picture of, you know, supply and demand and the growth and whatnot, and we got to take into account that in the EU, there are 29 endocrine disruptors on the list, and these all could be banned in the near future. This is compounded by the Green Deal in Europe. This is a charter that has already been confirmed in the EU that they want to reduce chemical fertilizer usage by 50%, or chemical pesticide usage by 50%, and chemical fertilizer usage by 20%. This is all real. Going forward in the next 10 years, you're going to see many of these chemicals being banned. So being manufacturers of agrochemicals, you must take that into account and do your homework. And India itself, there are 27 pesticides that are listed for banning, although we have, as an industry, escaped the May deadline, you know, for banning. I think going forward, you can expect that the regulatory pressures coming from the CIB and the industry in general will still be there. So take this into account as well. So now finally, I just want to touch a little bit on the M&A aspects. The traditional agrochemical industry, be it in India or China, has this we make you buy business model. But going forward, I understand there are many more Indian players, Chinese players coming into the market that want to go into manufacturing of technical pesticides. So the demand is definitely going to grow, but there are also more and more players coming into the market. Therefore, you need to distinguish yourself from a very crowded space. You know, when there are many competitors, how do you differentiate yourself from the rest? So this we make you buy business model is not sustainable. So you need to think about going further down the supply chain and make some acquisitions so that you can gain better market access.
Therefore, I'm recommending investments in downstream international supply chain, of course, via JVs or outright acquisitions. Of course, when you talk about acquisitions, there are a landscape out there. You need to know what's out there, right, in terms of targets for acquisition. But the timing is perfect for making acquisitions. All the R&D majors are consolidating. Therefore, there are lots of opportunities in the light of that, right? The large national distributors in every given country, what I call tier 1 distributors, are being squeezed. So they have now initiated house brands for generics. So instead of just buying from all these multinationals when the patents go off, they are now starting to have house brands. And because of that, there are lots of opportunities here for Indian agrochemical manufacturers to support these generic product producers, right? House brands definitely need your support. They need to buy from either China or India, you know, to put into their local brands, their house brands. The smaller tier 2 national distributors are squeezed even more because of the big players out there, right? Margins are squeezed and market share is squeezed. So these are the companies, these are the distributors with product registrations that make fertile ground for Indian companies to go out and make acquisitions at this level. And there are more products coming off patent. I think Mr. Kupusamy had already mentioned that earlier. There's a long list of new generics coming on into the market, so there are many manufacturing opportunities. So in terms of acquisitions, you have two types of companies out there in the landscape. One is your market access with new technologies. So some of these players out there actually do not only deal in generic pesticides, but they actually have biostimulants, biopesticides. So these are the two that have double-digit CAGR growth. And these are very important going forward. Again, earlier speakers have talked about the growth in biopesticides, biostimulants. So here, with these companies, it will give you product registrations and a sales channel locally. And as I said, some of them could have novel formulations and technologies, right? Technologies in overcoming weed resistance, for instance, and also less pounds on the ground, meaning they have technologies and formulations that will reduce the number of kilograms of active ingredients that need to be put per hectare basis, right? And of course, like I said, they may have biopesticides and biostimulants. So a typical agrochemical producer may not have these, but now more and more companies in agrochemicals are also branching out to some innovation in biostimulants and biopesticides. UPL is a very good example. It's a good leadership there for a lot of you Indian agrochemical manufacturers. They have also, like I said, gone into biopesticides, biostimulants as well. And then you have finally acquisitions of companies with just generic pesticides. These are the ones that give you market access, right? Instead of you going out to register products, for instance, in a country like Brazil, it can take up to 5 to 7 years before you can get a product registered. So acquisition definitely will allow you quick market access, right? When you have made your acquisition, you have an opportunity maybe to localize some of the value adding. Instead of producing all your formulated packed products ready to go to the market in India and then ship it overseas, you could then consider doing a lot of this value adding locally in the local markets. Of course, branding and registration ownership is very important. In the traditional, we make you buy business model, you do not have that. The local buyers of your technical, of even formulation, will put it under their own brands, right? So you Indian agrochemical manufacturers have no brand recognition. Yeah, okay. So M&A will allow you that, right? Tagging your technicals to registrations that you acquired, right? So this is a lot easier than starting a new technical registration.
So taking registered products, acquire into your own global market network. You may already be strong in 10 countries, and you acquire a long list of products or registrations from another distributor or country will allow you to take those products to the existing network that you have. And of course, once you have the local registration expertise acquired, you can register more products in that given country. And finally, you will allow you to optimize and deploy any acquired assets and manpower, right? So I just want to conclude that global expansion and success need a global vision and a strategy backed by financial resources. That financial resources is what I'm talking about, acquisition, right? You need to have the financial resources. Thank you very much. Thank you very much indeed, sir. And now, ladies and gentlemen, may I invite Mr. Suraj A. Chaudhary, Non-Executive Director, NCML, who has over 34 years of experience in building, turning around, acquiring, and divesting businesses. So let's put our hands together to welcome him. Good afternoon. When Mr. R.G. Agarwal requested me to attend this conference and speak on the occasion, I was a little perplexed because I don't belong to this industry. Although I come from an adjacent industry, which is post-harvest agri-services and food processing, this was something which I wasn't connected to. But I still, I cannot refuse him. And at the same time, I wanted to use this opportunity to actually talk to you about things not related to agrochemical industries, but related to the customer that you serve, which is essentially the farmer. When I look at this industry, we've all talked about how relevant this industry is to Indian agriculture and your contribution to Indian agriculture. The way I look at it as an outsider is that if we look at the production in Indian agriculture, we have seen that in the last 5, 6, 7 years, India's production of horticulture produce has exceeded its production of cereal produce. And and also fiber, which is cotton in particular, which is probably over a longer period of time. And the key role there has been played by this industry. The important element here is that I define Indian agriculture as a tripartite agreement historically, not today, between God, government, and the farmer. God looks after the weather conditions, government looks after the subsidies and the minimum support price, and the farmer toils in the field. And if you notice in Hindi, all of them separately are called annadatas at different times. So what this industry actually has done is reduce or take out the element of risk in agriculture. Indian farmer is the biggest risk taker. Of all the industries, the smallest farmer takes a very big risk. I mean, his whole year's income, livelihood, standard of living is dependent on that one crop or two crops that he sows, and he needs to get it right. His cost of failure is very high. And if he had to take risks and go into crops which were more rewarding and which were needed by the country, which is the horticulture crops, it needed that support that this industry has provided. So I think that is, while we talk about this industry having done great service to the Indian agriculture, this is, from my perspective, the biggest service that you have allowed the Indian farmer to take more risks than he had been taking before this industry came to predominance in this country. The other reason that I wanted to speak to you was because I come from a related industry, which is food processing. And for the last 30 years, I've seen the evolution of this industry, and some of the challenges that agrochemical industry faces have been faced by the food processing industry. It was seen as an industry which was probably superfluous, was seen as, producing food which was probably not needed, had multiple operators, very little control. If you recall, 20, 30 years ago, we had so many cases of food adulteration, deaths by food adulteration. People were mixing edible oils with the wrong things. And today we don't hear of any of those things. I think some situations are similar to what you face in your industry, where we talked about, spurious pesticides and, farmers' crops getting destroyed because of using the wrong ingredients or spraying the wrong ingredients. And that is where the
the government stepped in and the industry took, confidence from that. We had the creation of an authority like the Food Safety Authority, which made it mandatory for every operator in the food space to get registered, and all food products that go out to the consumer getting tested by recognized laboratories like NABL. And at the same time, it also set its standards linked to the international standards like the Codex, which meant that when Indian food produced, which was going abroad, was aligning to the global standards, those standards were actually being met, and therefore that gave the confidence across the borders for Indian food to travel across the borders. So those are some learnings from the food industry that probably need to be brought into this sector, maybe working between the industry and the government, and that requires a certain amount of trust building. As I said, the food industry also was full of all kinds of operators, and not all of them were clean, and the industry had to self-regulate and also needed to consolidate for practices to be improved and more trust to be built between the consumer, the government, and the industry. And finally, what is happening in this industry across the globe, there is a lot of change happening, which we're seeing more in the developed world. Indian industry is still evolving, but those changes are happening in the external world. I mean, the regulatory pressures are increasing. The voice on sustainability is gaining more space. There is talk about lesser usage of chemicals. There is, while it is small, still more noise about biopesticides. All these things are, genome editing, the precision agriculture. All these elements, while they are good, are some way going to be affecting the consumption of agrochemicals. But that doesn't mean that it is bad for agrochemicals, because it will probably get the industry to strengthen its offering. It will probably provide the space for the more qualified players, the more reputed players, the more invested players to find more space. But one area which I would bring in here is that for this industry, there is a great opportunity to gain more leverage with its consumers. I see the strength in this industry lies with your ability to connect with the farmer and not just be a seller of produce to your product to the farmers, but actually take the whole portfolio of services to the farmers. There is technology coming in today. I see a drone there. There is need for financing to the farmer, which is more organized. There is the whole education to the farmer in terms of the crop, the whole cultivation practices, the good agriculture practices, and this industry, while collaborating with industries like those companies involved in, whether it's the drone, invested in drones, whether it is IoT, or it is about satellite imagery and usage of that for predicting crops and weather, and therefore the infestations that happen because of the weather changes that are happening, and then moving on to taking it forward to storage, to taking it to a marketplace. I think that collaboration, this industry has an opportunity going forward to bring a wholesome offering to the farmer, because the farmer is your key contact, and you have the ability to bring all these services to the farmer. So converting this industry from just being a seller of product to the farmers to creating value for the farmer, which I think will deepen the bond. And while all the changes that happen in the industry, as I talked earlier, I think the value that you create for the farmers will always keep you relevant for the farmer, and the industry is, of course, needed. So best of luck, and I'm sure there's a great future ahead of us as long as we keep ourselves open to the changes that are happening and keep ourselves always being future ready. Thank you. Thank you very much indeed. And may I now invite Mr. Deepak Bhardwaj, Director and Co-founder in Teach World Aviation Private Limited, to say a few words. Good evening. What I observed from this dais is that last 4 rows are not listening to what people are speaking here. So first of all, I'll say sorry to Amber sir and Dalal sir. Please give me liberty to speak before you, and please give me liberty to speak in Hindi. Thank you. तो हम लोग हिंदी में बात करते हैं. हम लोग आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. तो हम लोग गुड़गांव में, हरियाणा में हमारी फैक्ट्री है और हरियाणा बेस्ड कंपनी है.
हम दोनों गए, दीपक भारद्वाज, अनूप उपाध्याय, अनूप इज सिटिंग देयर। तो हम लोगों ने ये कंपनी शुरू करी 2017 में, और इस साल हम लोग फर्स्ट कंपनी है इस देश की जिसको टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट मिला है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। थैंक्स टू अंबर सर। ये जो छोटी सी फैक्ट्री है हमारी गुड़गांव में, एंड दिस इज आवर प्रेजेंस। सो विद आवर लिटिल हैंड्स, हम लोग जितने भी हैं, हम 20 शहरों में इंडिया के पहुंच चुके हैं, और करीबन 10 स्टेट जो नीले आपको इसको दिख रहे हैं वो हमारे कंसंट्रेशन स्टेट है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी एक ही है। हमारे 24 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क हमने बनाए हैं। हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर थोड़े केमिकल से अलग रहते हैं, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, इतने आराम से नहीं बनते हैं। तो 10 सर्विस सेंटर हमारे हैं, और 10 ही हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि फार्मर को ड्रोन की स्प्रे सर्विसेज देते हैं। हम 5000 से ज्यादा डेमो इस देश में कर चुके हैं एग्रीकल्चर ड्रोन के, उसकी एप्लीकेशन के, और 100 से ज्यादा पायलट हमारे पास ट्रेन है जो कि हमारे से जुड़े हुए हैं अलग अलग तरीकों से, और 150 से ज्यादा हमारे ड्रोन अभी भारत में उड़ रहे हैं, और ये छोटी सी टीम हमारी 100 लोगों की है। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हम स्प्रे करते हैं, कैसे ब्रॉडकास्ट करते हैं, और जो तीसरी पिक्चर आपको नीचे दिख रही है वो फार्म सर्वे की है। तो हमारा जो ये एक मल्टीपर्पज ड्रोन हमने बनाया, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर के अंदर कई टाइप के ड्रोन चाहिए होते हैं, इंटरनेशनली 3-4 तरीके के लगते हैं। इंडिया में हम सोचेंगे फार्मर 4 तरीके के ड्रोन खरीदेगा, वो मुश्किल है। तो उसके लिए हमने एक ही ड्रोन ऐसा बनाया जो सारे पर्पज को सोल्व करे। फार्मर इससे स्प्रे भी कर सकता है, ग्रैन्यूल्स को ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, फार्म को सर्वे भी कर सकता है। उसके अलावा हमने क्या किया है कि फार्मर के लिए एक बिजनेस खड़ा किया है, और बिजनेस में फार्मर जो ड्रोन लेगा वो स्प्रे करके उससे पैसा भी कमा सकता है। और उसकी मूवमेंट के लिए हमने एक बाइक ड्रोन डेवलप किया है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी ड्रोन महोत्सव में 5 किसानों को दिया भी है। दूसरी चीज जो हम लोग करते हैं, हम एक एग्रीगेटर बन गए हैं। हम विद द हेल्प ऑफ अपना जितने भी एग्रीकल्चर केमिकल कंपनीज है, जैसे धानुका है, बायर है, सिंजेंटा है, इन सब के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, और हम एग्रीगेटर बन रहे हैं क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं, इनके पास पूरे इंडिया में लाखों एकड़ है। उन लाखों एकड़ को स्प्रे कराने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, उनको हम इस एग्रीनेट एप्लीकेशन के माध्यम से जोड़ते हैं। इसमें जो फार्मर है वो भी रजिस्टर कर सकता है, इसमें सर्विस प्रोवाइडर भी रजिस्टर कर सकता है, इसमें थर्ड पार्टी भी आगे रजिस्टर कर सकती है, जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसको डेमोस देखने हैं, उस तरीके से सबके लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ उपलब्ध है। एग्रीबोट के अंदर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कुछ हमने ट्रायल्स किए हैं, उसमें से बहुत ही सक्सेसफुल कुछ एप्लीकेशंस आपको मैं दिखाना चाहता हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में हमने 4 किलोग्राम सल्फर को 4 लीटर पानी में मिला के स्प्रे किया गन्ने के ऊपर, और इतने थिक पेस्ट के बावजूद उसके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतर थे। और सल्फर लिमिटेड ने ये ड्रोन खरीदे हैं हमसे, और अब वो खुद भी ट्रायल्स कर रहे हैं। ऐसे ही चंबल फर्टिलाइजर के साथ हमने किया, चंबल फर्टिलाइजर के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, और उन्होंने भी ड्रोन्स खरीदे, और वो भारत में ड्रोन यात्रा निकाल रहे हैं। वो खुद किसानों को एडुकेट कर रहे हैं। ये एक ट्रायल है जो हमने 2018 में हमने बायर ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने और IRI-ICR ने मिलकर किया था, जिसके बेस पे हमारे देश की ड्रोन पॉलिसी बनी थी। वो सारे इनपुट इसी ट्रायल से निकल के आए थे। अब एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव स्लाइड है। हम लोग बोलते हैं कि ड्रोन बहुत अच्छा है, वो कैसे अच्छा है थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा, बियर विद मी। तो पहली चीज तो हम सेफ्टी की बात करते हैं। एग्रीबोट जो हमारा स्प्रे ड्रोन है, और दूसरा कन्वेंशनल मेथड जिसमें नैपसैक स्प्रेयर आ गया, जिसमें ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर आ गए, सारे स्प्रेयर आ गए। सेफ्टी की बात करें तो हमारा जो ड्रोन है वो 100% सेफ है फार्मर के लिए, सोयल के लिए। सोयल में आप अगर कोई इंसेक्टिसाइड फॉइलेज पे रहना चाहिए फॉइलेज पे रहेगा, नीचे जाना चाहिए नीचे जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर केमिकल जमीन में पहुंच रहा है। पंजाब में अगर हम जाके देखते हैं तो मिट्टी की क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम प्लांट की सेफ्टी की गारंटी देते हैं। प्लांट में आप जिस तरीके से केमिकल को अप्लाई करना चाहते हैं वैसा ही होगा। और सबसे जरूरी
जो इन सब चीजों से अनभिज्ञ है वो कंज्यूमर है, उसको किसान, उसको एप्लीकेटर कैसे एप्लीकेट करके क्या खिला देता है कोई किसी को पता नहीं, मगर हम लोग गारंटी देते हैं कंज्यूमर तक जैसी रेजिड्यू सरकार ने बोली है वैसी ही जाएगी। दूसरी तरफ कन्वेंशनल मेथड दोज आर अनसेफ, कोई नहीं कह सकता कि इसमें हम लोग कैसा क्या रिजल्ट देने वाले हैं। बेनिफिट्स, हमने बहुत सारे ट्रायल करे हैं, राजस्थान सरकार के साथ किए हैं, मध्य प्रदेश सरकार के साथ किए हैं, महाराष्ट्र में हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग ने देखा है कि 10 से 15% किसानों का यील्ड इंक्रीज हुआ है। कुछ किसानों ने जिन्होंने शुगर केन पे स्प्रे किया था उनके अंदर सुक्रोज कंटेंट बढ़ गया है, उनका मतलब शुगर की जो उनकी कंटेंट होता है वो बढ़ गया है, उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है, जिसको हमने क्वालिटी ऑफ क्रॉप लिखा है। लास्ट थिंग, क्रॉप का लॉस दैट बिकम्स नेग्लिजिबल, जो कि अगेन कन्वेंशनल मेथड में लिमिटेड है, इसके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, हमारे ड्रोन से जब स्प्रे करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी मेथड हैं उसमें आपको बेस्ट रिजल्ट्स ड्रोन से ही मिलने वाले हैं। ये हमने हर तरीके से करके देख लिया है, सरकार ने भी किया है, बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट ने किया है, और ये रिलायबल है फॉर एक्सपोर्ट क्वालिटी क्रॉप। जैसे कि हमारे यहाँ से अपने दावत है, दावत यहाँ से जो जीरी है उसको एक्सपोर्ट करती है नीदरलैंड और यूएसए में, उसको एक रेजिड्यू की एक वैल्यू है, उससे ऊपर जाएगा तो उसको वो सारा वहां पे डंप करना है। तो हम लोग गारंटी लेते हैं कि ऐसे डंप करने की नौबत किसी की नहीं आएगी। ऑन द अदर हैंड कन्वेंशनल मेथड्स में दिस इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। रिसोर्सेज की बात करें तो स्प्रे के अंदर अगर आप ड्रोन यूज करते हैं आपको 7 मिनट लगते हैं 1 एकड़ में, और पानी सिर्फ 10 लीटर चाहिए आपको 1 एकड़ के लिए, जो कि जनरली कन्वेंशनल मेथड्स में 120 मिनट लगते हैं और 120 से 200 लीटर पानी लगता है। इनकम, तो इस इनकम की जहां तक बात करें, ये हमारा मिशन है आई-टेक वर्ल्ड का। हम लोग इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला है कि किसानों की आय दुगनी करनी है, हमारा मोटिव यही है बेसिकली। जो भी हमारा ड्रोन लेगा उसकी इनकम हम दुगनी, तिगनी, चौगनी और 10 गुना भी करेंगे। ऐसा हमने करके दिखाया मध्य प्रदेश में। जिन लोगों ने हमसे ड्रोन खरीदा है, किसी किसान ने 5 ड्रोन खरीदे तो यहाँ आप ही जैसी एक मतलब नोबल कंपनी से हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट कराया 1.25 करोड़ रुपए का 1 साल का, तो बंदे ने जहां 40-50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए उसको साल को 1.25 करोड़ का काम मिल गया, और जो हमने उसको और 1.25 करोड़ का एक और एग्रीमेंट करा दिया है 2.5 करोड़ का। तो एक किसान को अपने ही खेत में, अपने ही शहर में, अपने गांव में 2.5 करोड़ का काम मिलना मध्य प्रदेश में एक ठीक चीज होती है। हरियाणा में शायद लोग सोचेंगे इसमें ओडी आती है। एग्रीबोट कैन स्प्रे, सर्वे एंड ब्रॉडकास्ट। जैसे मैंने बताया कि एग्रीबोट 3 काम करता है, ये सर्वे करता है, ये स्प्रे करता है, ये ब्रॉडकास्ट करता है। तो आप इस ड्रोन को जो भी खरीदेगा वो अगर इसे एग्रीनेट पे रजिस्टर करता है तो हम लोग गारंटीड तो नहीं कह सकते सर, मगर हाँ 50,000 मिनिमम हर किसान को हम लोग पर ड्रोन आय करा के देंगे, जो कि कन्वेंशनल मेथड्स में लिमिटेड है। अगेन कोई गारंटी नहीं है, और इसमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े कुछ बहुत ही महान है, मगर इसमें बहुत बड़ा जो योगदान है वो भारत सरकार का है, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स का है। अब ये हमारे रिलेशंस है, हम लोग IRI, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, SKN जॉबनेर, NDAT अयोध्या, ये सब हमारे ड्रोन्स यूज करते हैं। उसके बाद हमारे रिसर्च पार्टनर्स हैं जो कि IHBT है, CSIR NAL है, DRDO है, इसरो है, और अब नया नाम आ गया महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, जो कि करनाल बेस्ड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, और VC साहब बैठे हैं, और VC साहब के साथ मिलकर हम लोग RPTO खोल रहे हैं। ये भी हमारा एक काम है, क्योंकि हमारा टैगलाइन है कि वी डेवलप ड्रोन इकोसिस्टम। तो हरियाणा सरकार के साथ मिलकर हम लोग एक RPTO खोलना चाहते हैं, जिसमें किसानों को बहुत ही वाजिब दाम पर पायलट ट्रेनिंग कोर्स अवेलेबल कराया जाए। उसके बाद हमारे एग्रीकल्चर कंपनीज जो रिसर्च पार्टनर भी हैं, कस्टमर्स भी हैं, और कुछ हमारे को गाइड भी करते हैं। धानुका है, सिंजेंटा, अडामा, चंबल, सल्फर मिल्स, लिस्ट बहुत लंबी है, मगर ये कुछ नाम है जो मैं आपको बताना चाहता था। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि माननीय कैलाश चौधरी जी जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हरियाणा इंडिया के, उनके साथ हमने राजस्थान में किया था। आई थिंक दैट वाज 2019 जब लोकस का अटैक हुआ था, और हमारी टीम ने जाके ये POC कैलाश चौधरी जी के साथ राजस्थान में किया, और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और भारत पहला ऐसा देश है जिसने ड्रोन से लोकस कंट्रोल किया। अगेन credit goes to a lot of people actually. First is Ministry of Civil Aviation, then Ministry of Agriculture, Kailash Chaudhary ji, and Rajasthan government, a lot of people. Thanks to all of you. Thanks.
Thank you very much indeed, sir. And ladies and gentlemen, we have the privilege of having with us today Shri Ambar Dubey, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation, Government of India, who is looking after the drones, aerospace, manufacturing, MRO, flying schools, IT and skill development, etc. He is also the acting Vice Chancellor of the Rajiv Gandhi National Aviation University, Amethi. And let's put our hands together to welcome him. Over to you. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मंच पे आसीन सभी सीनियर मिनिस्टर साहब एंड सीनियर ऑफिसर्स और हमारे साथ जो बैठे भाई बहन ऑन द फ्लोर। वैसे तो आप लोग काफ़ी थक चुके होंगे, सुबह से आप लोग भाषण सुन रहे हैं, तो इसको थोड़ा लाइट रखेंगे। मैं भी थोड़ा हिंदी में ही बात करूँगा। और दूसरा, इसको ऐसा करते हैं, मेरे पास एक 50-60 स्लाइड की प्रेजेंटेशन थी जिसमें मैं सोचा आपको अच्छे से और बोर कर दूं इससे पहले कि जब बियर बोतल खुलेगी। तो अब सारा प्रेजेंटेशन तो हमारे युवा साथी हैं भारद्वाज जी, वो सब सारा कहते हैं इज टेकन द बैंग अवे फ्रॉम दी प्रेजेंटेशन। तो फिर मैं वो प्रेजेंटेशन अपने जेब में रखता हूँ और बातचीत से ही करते हैं, थोड़ा सा लाइट हार्टेड टॉक भी कर लेते हैं। दिन भर से आपने बड़ी सीरियस टॉक करी है, बड़ी टेक्नोलॉजी सुनी, फाइनेंस, मर्जर एंड एक्विजिशन सब सुना। इसको थोड़ा वैसा भी कर सकते हैं, इंटरेक्टिव। मैडम अगर थोड़े से कुछ माइक वाइक, एक्सक्यूज मी मैम नीतू जी, ये कोई माइक वाइक दिला सकते हैं, थोड़ी बातचीत करें, टू वे तो ज़्यादा मज़ा है। मेरे पास 5 मिनट का एलोकेटेड टाइम है, तो कुछ सवाल ले लेते हैं तो उसमें थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा। आप भी सब बोर हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे अभी व्हाट्सएप खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहा है, तो हाँ इधर भी एक माइक पड़ा है, ये भी ले लीजिए, तो थोड़ा चर्चा करते हैं, थोड़ा मजे करते हैं। ना तो बैठ के मैं आपको दे दूं एक लंबा सा भाषण, सरकार आपके लिए कितना काम कर रही है। शॉर्ट रखिएगा और बिल्कुल, ताकि खूब सारे नेशन वांट्स टू नो की तरह करते हैं। पर बात करनी है। हाँ बोलिए। दीपक जी से मैं प्रोग्रेसिव फार्मर हूं। दीपक जी का टाइम खत्म, मेरा टाइम शुरू, मेरा अपना टाइम आएगा। जो ड्रोन से स्प्रे करते हैं ना 10 लीटर पानी में जी, क्रॉप कैसे पूरी कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। चलिए नेक्स्ट प्लीज। सब इतने थक गए, हमारे युवा साथी बैठे हैं सब, आप लोग भी कुछ पूछ लो यार। हाँ जी चलिए दौड़िए, अंकल जी वहाँ पूछेंगे। हाँ भी है क्या? हाँ पूछिए। आपकी आवाज़ तो करनाल तक जा रही है। हाँ बोलिए। बिल्कुल सही कहा, असल माल खरीदिएगा, बिल्कुल सही बात। अभी बताता हूँ सब, 10 रुपए निकालिए, अभी बताता हूँ। अच्छा चलिए, और कोई सवाल है? चलिए इसको सिंपल कर देते हैं। सी ड्रोन्स का बड़े अच्छे सवाल थे, ड्रोन से कैसे स्प्रे होता है। ये बड़ा इवन स्प्रे होता है, माइक्रोस्कोपिक स्प्रे होता है, और वो उसको एटमाइज कर देते हैं। तो वो जो स्प्रे इतना महीन है कि उसकी उर्वरता और गुणवत्ता बहुत अच्छे से स्प्रे होता है, तो इसलिए आपको 10 लीटर में काम हो जाता है। और जैसा दीपक भाई ने बताया 120 से 200 लीटर यूज होता है, तो आपका स्ट्रेट 90%। और इस पर भी प्रधानमंत्री जी जब आए थे हमारे भारत ड्रोन महोत्सव में, अभी बस 2-3 हफ्ते पुरानी बात है, तो काफ़ी इंप्रेस थे। और उसमें इनके एग्रीबॉट वाले 4 यूजर्स थे, 2 लेडीज़ भी थी जो करनाल में, और एक लेडी शायद MP से आई थी। तो वो लेडी फार्मर्स खुद यूज़ करती हैं, और ये उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, किताब पढ़ के दे दिया या यूट्यूब पे या कहीं हॉटमेल से सीख के बता दिया। ये एक्चुअल प्रैक्टिकल हिंदुस्तान में हो रहा है। तो 90 से 95% पानी बच रहा है, जो पानी बहुत कीमती है। और एग्रोकेमिकल्स भी आपका 15-20% कम यूज़ हो रहा है। तो उससे धानुका के अग्रवाल जी तो बहुत दुखी हैं, बट लेकिन जो उसका किसान की जो जेब कम हो रही, खर्चा कम हो रहा है, और जेब में उसकी आमदनी बढ़ रही है, उससे वो और ज़्यादा धानुका साहब का माल खरीदेगा। तो ओवरऑल इट्स वेरी गुड। आपका सवाल था कि मैं नक्कल माल असल माल कैसे पकड़े, तो बड़ा सिंपल सा है। आज हर चीज़ ऑनलाइन है, मोदी जी के डंडे से हर चीज़ अब ऑनलाइन हो जाती है, डिजिटाइज हो जाती है, ऑनलाइन हो जाती है। तो आपको सिर्फ हमारे डिजिटल्स का एक प्लेटफॉर्म है, वो 1 स्टॉप शॉप है, एक मतलब मंडी जिसमें सारा ज्ञान, जैसे आरा मंडी चलती ना हमारी, वैसे ही सब है। तो उसमें आप डिजिटल्स का प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, और उसमें सारे ड्रोन्स लिस्टेड है, सारे UINs लिस्टेड हैं। कोई भी नक्कल माल मत खरीदे। जैसे गाड़ी खरीदते हैं ना, कोई ट्रैक्टर खरीद रहे हैं या कार खरीद रहे हैं, तो RTO से बोलते हैं जाके चेक करवा लो, या कोई एजेंट है वो आपको जाके चेक करके बता देगा कि भाई वाकई गाड़ी उसी कोई शर्मा जी के नाम पे, तो शर्मा जी के नाम पे, कोई नागालैंड से चुरा के नहीं लाई। तो इसी तरह सारे UIN जो हैं हमारे यहाँ लिस्टेड हैं। और फिलहाल तो अभी मोनोपोली है, ये जो दीपक साहब हैं, इनके अगर कंपनी में शेयर्स मिल रहे हैं तो अभी ले लो, अभी लिस्टेड नहीं है। जब ये लिस्ट हो गए तो सब 1 का 10 होगा।
मैं तो अग्रवाल जी से भी यही कह रहा हूँ कि एग्रो केमिकल्स में तो 10 का 11 हो जाएगा, अगले साल 10 का 12 हो जाएगा। अगर 10 का 100 करना है तो दीपक जी के यहाँ पैसे लगा लो, ठीक है ना। इनको एक एक्स्ट्रा बियर पिलाइए, अभी वो सब लग रही बोतलें खुल रही हैं वहाँ पर, और जब नशे में अच्छे से धुत हो जाएं तो इनसे कुछ ना 1-2% ले लीजिए, सब आपके बच्चों का अमेरिका की एजुकेशन सब निकल आएगी उसमें से, ठीक है ना। तो ये तो हो गई लाइट हार्टेड टॉक। सो हमारे वो वेबसाइट, और कोई भी खरीदेगा ड्रोन तो उससे पहले टाइप सर्टिफिकेट होता है। जैसे कोई भी गाड़ी, मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर या ट्रक कोई रिलीज करते हैं ना, टाटा मोटर्स या मारुति सुजुकी की कोई नई आई, तो कोई भी नई कार वो रिलीज करते हैं तो उसका सर्टिफिकेशन होता है सरकार के द्वारा, जिसमें उसके सारे इंजन, गियर बॉक्स, ये सब वो सब, एयर बैग्स, सीट बेल्ट, ब्रेक वेक, जितने भी उसके एसेंशियल पार्ट्स हैं उसकी सबकी टेस्टिंग होती है, वो सर्टिफाई किया जाता है। उसकी 10,000 साइकिल्स, 20,000 बैटरी की 50,000 साइकिल्स, वो अलग अलग टेस्ट होते हैं जो प्रेस्क्राइब टेस्ट है। सारी मोटरसाइकिल कारों को उसी को फॉलो करना होता है, सरकार के नियम बने हुए हैं। तो उसके बाद उसको टाइप सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट क्या है, वो पैसा छापने की मशीन है कि एक बार आपके पास टाइप सर्टिफिकेट आ गया तो जैसे आपके पास स्विफ्ट डिजायर है तो अपने डिजायर के अनुसार जितनी चाहे डिजायर निकालता रहे, दिन की 10, दिन की 100, दिन की 1000, उसी टाइप की होनी चाहिए। हाँ, अब उसका कल को ब्रेकिंग सिस्टम या इंजन, गियर बॉक्स चेंज होगा तो फिर वो नया टाइप होगा, तो उसकी अलग से सर्टिफिकेशन होगी। कुछ कुछ वैसे ही है, बड़ा सिंपल हमने सिस्टम रखा है इसमें। कानून अभी सब मोदी जी के डंडे से सब सिंपल हो गया है। तो इसमें ड्रोन का भी यही है कि आपका जो भी उसका सिस्टम है, उसके जो फ्लाइट कंट्रोलर है, बैटरी है, मोटर है, प्रोपेलर है, जितने भी उसके पार्ट्स हैं, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, रिमोट जिसको बोलते हैं, उसका जो रेडियो है, उसके तमाम चीज़ों की टेस्टिंग का एक प्रोसीजर है, वो सब नोटिफाइड है। वो कोई ऐसा नहीं कि अलग अलग आदमी की शक्ल और उसकी जेब देख के हम और उसकी साइज देख के हम डिसाइड करते हैं कि क्या इससे कितना निकलवाएं। उसका एक बिल्कुल नोटिफाइड गजट ऑफ इंडिया में सर्टिफिकेशन स्कीम 26 जनवरी इसी साल 2022 में लॉन्च हुई थी। उसके अनुसार आप आइए, आप और उसमें जैसे RT-PCR टेस्ट है वैसे ही हमने इसमें भी कर दिया, पूरा प्राइवेटाइज कर दिया। अब इसमें आपको किसी सरकारी बाबू के सामने आके, हम जैसों के सामने आके हाथ पैर नहीं जोड़ना, ना कोई की दिवाली, हैप्पी दिवाली, सर जी बहुत हमें हैप्पी दिवाली करते हैं और हैप्पी न्यू ईयर पे मिठाई देते हैं। इनको हम कई बार समझाते हैं, सर आप क्यों तकलीफ देते हो, ये कई गरीबों में बांट दो। कहते गरीबों को तो बट ही रहा है, जो असली गरीब उनको हम दे रहे हैं, हम तो आपसे भी ज्यादा गरीब है, ठीक है ना। तो आ रहे सर आपका तो कोटा हो गया, 10 रुपए दिए थे आपने। सो टाइप सर्टिफिकेट जो है इसके लिए किसी सरकार के पास नहीं आना, कोई हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी दिवाली नहीं करना, और सिर्फ ऑनलाइन आइए और अपने सारे जो भी रिकॉर्ड डेटा है, हमारे सिंपल से 5 फॉर्म, पहले 25 हुआ करते थे जस्ट अगस्त पिछले साल तक, तो फिर वो ऊपर से डंडा आया तो वो 25 में से 20 फॉर्म हटा दिए गए, अब सिर्फ 5 फॉर्म रह गए। जैसे गाड़ी का होता है कि गाड़ी का सर्टिफिकेशन है, उसके बाद D2 फॉर्म है आपका रजिस्ट्रेशन का, D3 फॉर्म है ट्रांसफर करना, जैसे गाड़ी ट्रांसफर करते हैं, D4 फॉर्म है पायलट लाइसेंस का, और D5 फॉर्म है अगर आपको ड्रोन स्कूल खोलना है, जैसा अभी RPTO बोलते हैं, रप्टो नहीं है, वो रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली ड्रोन स्कूल। जैसे मोटर ड्राइविंग स्कूल होता है वैसे ही पायलट स्कूल होता है, उसको ड्रोन पायलट स्कूल समझ लीजिए, ड्रोन स्कूल कह लीजिए, या उसको टेक्निकल टर्म जो लीगल है वो है रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये केवल अब सिर्फ 5 फॉर्म रह गए। फीस भी हजारों की हुआ करती थी, 72 टाइप की फीस होती थी। जब 25 फॉर्म होगी तो 72 टाइप की फीस भी होगी, साइज के अनुसार ये सब वो सब, हर फॉर्म की अलग, हर फॉर्म के लिए आपको एक नए साहब के सामने जाके हैप्पी दिवाली करना पड़ेगा। तो वो सब जब 20 फॉर्म हट गए तो कई बेरोजगार हो गए हमले से, दिन भर खाली बैठ के मक्खी मारते हैं, ये वाली मक्खी मारे कि वो वाली मारे, तो अब वो भी काम हमारा काफी कम हो गया है, ठीक है ना। तो बड़े दुख के दिन है सरकार के लिए, बट आपके लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। तो अब 72 टाइप की फीस से अब सिर्फ 4 टाइप की फीस हो गई है, ठीक है ना, और वो भी हजारों रुपए की होती थी, अब वो 100 रुपए हो गई। तो 100 रुपए में तो 10 समोसे मंगा लोगे तो 100 रुपए उसी में खत्म हो जाते हैं, उतना ही सरकार मांगती है आपसे। और पायलट ट्रेनिंग अगर आप स्कूल खोल लें जिसमें पर स्टूडेंट 10,000, 20,000, कुछ तो 50-60 हज़ार तक ले लेते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप की दुकानें हैं, 5 रुपए की भी चाय मिलती है बाहर ताजमान से, इसी होटल में 700 रुपए की भी मिलेगी, मजे सब देते हैं। तो उसी तरह ट्रेनिंग भी अलग अलग साइज की, लेकिन हम सिर्फ 1,000 रुपए मांगते हैं, वो भी 10 साल के लिए, तो उसमें भी पर एनम 100 रुपए फीस हो गई। तो सरकार का इससे अब क्या ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या हम कम्युनिकेट करें कि ये ड्रोन इंडस्ट्री, हम लोग दीवाने हैं इसके, इसमें हमें बहुत सपोर्ट करना है क्योंकि इसका अल्टीमेट फायदा आपके पास है, ठीक है ना। और ये जो बार बार PM साहब कहते हैं कि वो जय जवान जय किसान, तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जय विज्ञान भी है। और जय विज्ञान अगर किसान जो हमारे टेबल पे खाना रखता है, अभी हम मस्त वो बिरयानी वो सब चापेंगे, तो वो भी कोई किसान ने बनाया है। और जय जवान, तो अगर विज्ञान जो है वो किसान जो हमें खाना खिला रहा, अन्नदाता हमारा, और जो जवान जो हम यहाँ बैठे हैं मजे से बियर पियेंगे, वहाँ पर कोई अभी भी ठंड में या गर्मी में खड़ा होगा राजस्थान की बॉर्डर पर, या लेह लद्दाख की ठंड में, अपने परिवार, बच्चे की तबीयत खराब होगी लेकिन वो जा नहीं सकता अगले 11 महीने तक, तो फंसा होगा कहीं
सियाचिन पे या कहीं लद्दाख पे या नागालैंड बॉर्डर पर, ठीक है ना। तो अगर हमारा विज्ञान इन दो लोगों को नहीं की सेवा करता तो विज्ञान बेमानी हो, फिर रिसर्च है, पेपर निकालते रहो, छापते रहो और डॉक्टरेट और डबल डॉक्टरेट ले लो, बट उससे देश का कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारी सब युवा लोगों को ये बार बार सरकार समझा रही है कि आप बोलो आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। हम आपका काम सिंपल कर देंगे, आपको बाबुओं को हैप्पी दिवाली और अग्रवाल साहब को कभी दोबारा किसी को हैप्पी होली हैप्पी दिवाली करने की जरूरत नहीं होगी, और आप सिर्फ R&D करो, सिर्फ रिसर्च करो, क्योंकि हम बेवकूफ थे। क्योंकि अमेरिका जब हम सो रहे थे और यहाँ पर ये मंदिर मस्जिद और दुनिया भर का ये क्या हम आजकल खोल रखा है हमने, ये अग्निवीर अग्निपथ पे ट्रेनें हम जला रहे हैं तो देश उससे आगे बढ़, वो अमेरिका हमसे 40-50 साल आगे निकल गया है जब हम यही सब कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद। और चाइना जिसने भी जस्ट 2002-2005 के आसपास ड्रोन्स पे उसकी आंख खुली थी, उसको लगा भाई वेस्ट तो बहुत आगे निकल रहा है, ये तो चमत्कारी जादुई यंत्र है, इसको अगर हमने मिस कर दिया तो हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे। वो तो हर चीज में अमेरिका को देखता है, उसको इंडिया से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इंडिया तो सिर्फ बुद्धू सा एक मक्खी मच्छर है जो आके परेशान करता रहता बिन 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 बिन। तो उसका फोकस यूएस पे था, तो वो खुल गई उसकी आंखें 2005 में, वो हमसे 20 साल आगे निकल गया और हर रोज वो हमसे 3-4 महीने आगे निकल जाता है जब हम ये आलतू फालतू की चीजों में फंसे हुए हैं। तो इसलिए जब हम लोग की आंखें खुली 1-2 साल पहले और जब अच्छे से डंडा पड़ा मोदी जी का, और ये चाइना वाला वो गलवान वाला भी जब हुआ था, तो उसके बाद में नजर खुली। फिर ये टिड्डी अटैक हुआ था, मुझे याद है इसी समय हुआ था, ये अभी मई जून का आसपास का मुझे टाइम याद है। इंडिया में बैंड था ये पेस्टिसाइड्स को आप ड्रोन से कर ही नहीं सकते थे, तो यही मई का एंड का ही टाइम था। और एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी कैप्सेक में, 7-8 लोग ही थे हम लोग उस रूम में, और ये ऑर्डर किया गया था कैप्सेक साहब ने कि सब कुछ झोंक दो, ऊपर का ऑर्डर है सब कुछ झोंक दो, इसमें एयरफोर्स डाल दो, ये डाल दो, इधर से स्प्रे उधर से स्प्रे, ग्राउंड से राजस्थान गवर्नमेंट के साथ मिलके। और ये कोई ये ड्रोन करके नई चीज आई है भाई, सिविल एविएशन आप भी डालो इसमें। और उस समय 4-5 कुछ कंपनियां थी जिनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी, और उस समय पूरा कंट्री में लॉकडाउन था। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, 2 साल पुरानी बात है, ऐसा लगता है जैसे सालों अभी बस कल की बात हो। और उसके बाद हम लौटे हैं, ये सब 11-12 बजे मीटिंग हुई है, 3 बजे इमरजेंसी मीटिंग कृषि मंत्रालय में हुई, तुरंत बोला गया कि भाई इसको अलाउ करो। और हमारे यहाँ तो अलाउड ही नहीं था पेस्टिसाइड से स्प्रे करना, तो ये 11 बजे सुबह मीटिंग हुई, 3 बजे कृषि मंत्रालय में हुई, 5 बजे अतीश चंद्रा जी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और अभी पीएमओ में एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से चिट्ठी आई थी, तुरंत ही फाइल प्रोसेस हुई है। और फर्स्ट टाइम राजस्थान के लिए सिर्फ टिड्डी के लिए ये चीज अलाउ कर दी गई। रूल 160 जो हम कभी यूज नहीं करते, मतलब उसमें पूरा उसको एग्जम्प्ट कर दिया जाता है, वो रूल कभी यूज नहीं होता एयरक्राफ्ट एक्ट में, वो यूज किया गया सिर्फ एग्रोकेमिकल्स। और ये टिड्डी दल की ये जो इतनी आपदा आई थी 93 के बाद, ये मेगा स्वाम आया था 27 साल बाद। और ये 8 बजे हरदीप पुरी साहब हमारे मंत्री थे तब, 8 बजे रात को उनके यहाँ गई, सुबह 9:30 बजे मैं ऑफिस आया हूँ तो मेरे टेबल पे पड़ी थी फाइल। तो इस स्पीड से देखिए सरकार काम करती है। और हमारे यहाँ वोगा बोलते हैं, वोगा होगा तो अच्छा होगा। वोगा मतलब होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, सारी गवर्नमेंट एक है। अब हमारे वो ये फालतू के ये मंत्रालय और डिपार्टमेंट जो बन रखे हैं, इसको हम ज्यादा इस चीज से हट चुके हैं। तो बस आप समझ लीजिए, मैंने आपको पूरा बता ही दिया। 11, 3 और रात के 8 बजे मंत्री जी के यहाँ गई, सुबह 9:30 बजे फाइल आ गई, और उसके बाद अगले तुरंत ही टेंडर करके सब बाईपास करके रूल्स, और विद इन आई थिंक 6 या 10 जून था जब ये भारद्वाज जी और इनकी टीम, उनके कहाँ जीजा जी अनूप उपाध्याय जी और इनकी टीम और यंगस्टर्स पूरे देश से, कोई कोचिन से आ रहा है, कोई भुवनेश्वर से आ रहा है, कोई नागपुर से आए थे, कुछ दिल्ली से लोग गए, हरियाणा से लोग गए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट थी, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोडी एक्सेट्रा। और उसके बाद जो उन्होंने जंग किया, उससे ड्रोन्स के बारे में पहली बार नजर पड़ी लोगों की। नहीं तो आज से 10 साल पहले कभी कोई सिविलेशन वाला आ जाता तो लगता है यहाँ क्यों आ गए, क्योंकि शायद अग्रवाल जी को कोई जेट वेट खरीद के अपनी पत्नी को एनिवर्सरी पे गिफ्ट देना होगा, शायद इसलिए आ गए। तो अब ये माहौल इतना चेंज हो चुका है कि अब ये ऊपर से, जमीन से, ट्रैक्टर से, यंत्र जितने भी हैं, वो सब विज्ञान जो है वो सब जुड़ गया है, और वो सब अब कृषि के लिए काम कर रहा है, क्योंकि हमें एक किसान और जवान। इसलिए ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। मेरा टाइम वैसे ही 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, तो ज़्यादा नहीं खींचूंगा। और आप भी लोग थक गए होंगे, गले सूख रहे होंगे, कड़वा करने के वेट कर रहे होंगे सब। तो नेट बस समरी यही है कि इस वक्त का तकाजा ये है कि हम अपनी बेवकूफ़ियत, अपनी पागलपन को एक्नॉलेज करें। ये हमारी बेवकूफ़ी थी कि हमने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को, ये एज इम्पॉर्टेंट है जैसे मोबाइल फोन, जैसे कभी था इंटरनेट, आज से 40 साल पहले और 20 साल पहले कभी मोबाइल आए थे, कुछ वैसे ही है। तो एक बेवकूफ़ी होगा जो ड्रोन्स की, ये ऐसी चमत्कारी टेक्नोलॉजी कि इससे अपने आप को वंचित रखे, अपने किसानों को, अपने लोगों को वंचित रखे। खूब इसका प्रचार प्रसार करिए, जितना प्रसार होगा। मोबाइल की तरह ये भी आज जो 5-10 लाख का दीपक जी बेच रहे हैं, ये सब घटपिट के ना ये 50-60 हज़ार का हो जाएगा, और जल्दी होगा, क्योंकि वॉल्यूम आएंगे तो इनका भी फिक्स कॉस्ट स्प्रेड हो जाता है ना। अभी तो बस अभी इनकी जो मोटी सी सैलरी है वो सिर्फ 100 ड्रोन से निकल रही। जब वो 100 की जगह 1 लाख ड्रोन में इनकी सैलरी स्प्लिट होगी तो 54 बराबर हो जाएगी, तो अपने आप ही दाम कम हो जाएगा।
ठीक है ना। तो वही सी जैसे मोबाइल में हुआ, इंटरनेट में हुआ, उस कब के बैंडविड्थ कॉस्ट और आज की बैंडविड्थ कॉस्ट, तब का मोबाइल फोन आज का मोबाइल फोन, तब का 17 रुपए मिनट, वो भी इनकमिंग, हेलो मम्मी किया 17 मिनट हो गए, 17 रुपए हो गए। तो वो 17 रुपए आज कौड़ी फ्री हो गया, कई तो वॉइस में पैकेज में इंक्लूडेड होता। तो देखिए टेक्नोलॉजी की ये बहुत बड़ी ब्यूटी है कि जितना इसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा उतना उसका कॉस्ट गिरेगी, और जितना हम इसका यूज करेंगे उतना हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ेगी, खर्चा कम होगा, पोल्यूशन, सॉइल और वाटर पोल्यूशन, वाटर बेड जो हमारा पोल्यूशन वो कम होगा, जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती है जैसे हाथ से फेंकते हैं वो बड़ा अनसाइंटिफिक 16वीं शताब्दी का तरीका है। अब तो 21वीं से 22वीं की हमें आगे बढ़ना है, इसको करिए। और हमारी सरकार है, हम लोग सेवक हैं आपके, जो कुछ कर सके कर ही दिया। लंबी सी लिस्ट है, बहुत कुछ हुआ है पिछले 8-10 महीनों में। आप पूछते हैं कि भाई कहाँ से ड्रोन खरीदे, तो मैंने कहा लिस्ट पूरी हमारे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे, बस उसी से खरीदिएगा। उसका यूआईएन होगा, यूआईएन वाला मतलब जैसे बिना नंबर की गाड़ी तो आप खरीदोगे नहीं, उसी तरह यूआईएन का नंबर लिस्टेड है इंटरनेट पे, और कोई लॉग इन आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए आपको, वन टाइम पासवर्ड। आइए देखिए, जो पसंद है उठा लीजिए उसको, ठीक है। और ड्रोन उसका ही खरीदें, जैसे अब तो इतना सरकार हमारी एग्री मिनिस्ट्री से इतना पैसा मिल रहा है, ठीक है ना, कि किसान से लेकर किसान विकास केंद्रों को, जो आपके एफपीओज है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, किसी को 100%, किसी को 75%, किसी को 50%, किसानों को SC ST को 50 है, लेडीज को 50 है। तो भाई कभी अपने नाम से मत खरीदिए, आपको सिर्फ 40% मिलेगा, पत्नी के नाम से खरीदेंगे तो 50% मिलेगा, तो 10% एक्स्ट्रा उठाइए हमसे, ठीक है ना। तो कई सारी ऐसी स्कीम्स आ गई हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से कि पैसा डाला ही जा रहा है कि आप इसको यूज करिए खूब, तो उसका फायदा उठाइए, ठीक है। और ड्रोन हमेशा टाइप सर्टिफाइड होना चाहिए, इलीगल ड्रोन मत लीजिएगा, क्योंकि वो ड्रोन लेते ही आप बेकार हो जाएगा आपका, कभी टूटा फूटा इंश्योरेंस उसका होगा नहीं और आपका नुकसान हो जाएगा, पैसा बेकार जाएगा। और पैसे भी आपको सरकार से नहीं मिलेंगे, कि सरकार से टाइप सर्टिफाइड ड्रोन्स को ही देगी। इनको अभी नया अभी बस मिला है इनको पहला टाइप सर्टिफिकेट, और भी कई एग्रीकल्चर, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि दीपक जी की इतनी मोनोपोली हो जाए कि बस एक ही दुकान यहीं पे लाइन लगी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई वो तो 26 जनवरी को आ गया था, जिसने अप्लाई किया उसके साथ प्रोसेस शुरू हो गई, और कानून में मोदी जी ने लिखवाया कि 60 दिन के अंदर वो जो प्राइवेट लैब्स मैंने बोला ना RT-PCR की तरह, हमने 3 बहुत फेमस लैब्स हैं, टाटा क्वालिटी है, UL है और ब्यूरो वेरिटास है, और अभी और भी ऐड होंगी। तो प्राइवेट लैब्स को हमने पूरा प्राइवेटाइज कर दिया, और उनको भी 60 दिन का टाइम है, और उनका टेस्ट की पूरी एक सिस्टम है कि कैसे टेस्ट करना है, शक्ल देख के नहीं आपका टेस्ट चेंज करेंगे, उनकी फीस फिक्स्ड है। तो वो जाइए, किसी से भी आप टेस्ट करा के टेस्ट रिपोर्ट DGCA को भेज दीजिए, DGCA के पास 15 दिन है केवल, कानून में लिखा है गजट में, 15 दिन के अंदर उनको हाँ ना करनी है आपको। तो जो पहले अप्लाई कर लेगा उसकी टेस्टिंग होगी, टेस्ट अगर ठीक निकला तो आपका RT-PCR में आप कोविड नेगेटिव निकले तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको एक TC DGCA दे देगा, ठीक है ना। कहाँ उड़ाना है तो उसका एयर स्पेस मैप भी इंटरनेट पे ही हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। 90% इंडिया जो है ग्रीन कर दिया गया, ये 10% हुआ करता था 1 साल पहले, 90% इंडिया ग्रीन हो चुका है। तो अब कहीं भी आप खेत पे उड़ा रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई फौजी, पुलिस, ये वो, BSF, नक्सलवादी, कोई एरिया, DRDO, कोई एयरपोर्ट, ऐसा कोई सेंसिटिव एरिया हो, लैब्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, पावर प्लांट्स हैं, इनसे थोड़ा सा दूर रखिए बस। अब उसका खेत बगल में है तो भाई अब ठीक है, कोई हाथ से कर लीजिए, बट ज्यादातर खेत इन चीजों से दूर होते हैं। तो अगर आप इन चीजों से दूर हैं, इंटरनेट पे एक बार चेक कर लीजिए, बस आपका खेत तो वहीं कहीं उड़ के तो जा नहीं रहा, आपको एक बार देख लिया ग्रीन जोन है, बस ग्रीन है, उसमें फिर 400 फीट तक कोई हेल्प, कोई किसी की, लोग बोलते किसकी परमिशन, DM, SP, लोकल थाना, सब हटा दिया गया। ये पहले था अगस्त तक, पिछले साल सब हटा दिया गया। आपको सिर्फ वो जाइए इंटरनेट पे, देख लीजिए मैप पे, कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं। अगर आपका ग्रीन जोन में है 400, और गन्ने की इतनी ऊंची खेत हो, सबसे ऊंचा तो गन्ना है ना, तो 10-12 फीट का हुआ, उसके ऊपर 10 फीट और लगा लिया, 20 फीट से ज्यादा तो आपको उड़ना भी नहीं है। शादी वाला फिर भी थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, आपका तो ड्रोन वैसे ही 20-25 से ऊपर ज्यादा उड़ जाना नहीं, तो कोई रिस्क नहीं है। गिर गया तो 4 गन्ने मर जाएंगे, बस यही तो होगा, तो रिस्क नहीं है, ठीक है। तो इसको यूज करिए। और कहां से खरीदूं, अब देखिए सबकी ऑनलाइन आ ही रही, इन्होंने बताया इनकी वेबसाइट है, उससे आप खरीद लीजिए, ठीक है। तो जितना भी आपके सवाल हैं आप पूछते रहिए, हम लोग आपको बताते रहेंगे। आप लोग के हम सेवक हैं, हमारा काम है आपको सेवा करना, और आप आगे बढ़िए, खूब प्रोग्रेस करिए। थोड़ा 18% हमें भी हमारा कट दे दीजिए GST के नाम पे, और बस हम खुश हैं, आप खुश। जय हिंद, जय किसान, जय जवान, जय हिंदुस्तान। हार्दिक धन्यवाद। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे हरियाणा सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय मंत्री जी। के द्वारा आयोजित आज इस एग्रोकेमिकल्स की कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी महानुभाव, अलग अलग जगह से आए विशेषज्ञ,
किसान भाई, मेरे जो पहले सभी विशेषज्ञ हैं, सबने इस विषय में अच्छे खासी जानकारी आप लोगों को दी है और मैं यहाँ पर आपके बीच में एक किसान के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। कृषि मंत्री की बजाय जो किसान सोचता है वो बोलना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा। जब मैं बचपन में तो छोटा था, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मैकेनाइजेशन था नहीं, खेती बाड़ी बिल्कुल जो कोई मशीन नहीं होती थी, गाय भैंस या बैलों के द्वारा खेती होती थी और हमारे यहाँ पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का कोई उपयोग होता ही नहीं था। लेकिन उस वक़्त जो देश की ज़रूरतें थी अनाज की पूरी नहीं होती थी। संकट आया, धीरे धीरे ये नई टेक्नोलॉजी आई, मैकेनाइजेशन हुआ, नए बीज आए, फर्टिलाइज़र का उपयोग शुरू हुआ, पेस्टिसाइड का हुआ और ख़ासकर जो हमारा जो उत्तरी हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और यूपी वगैरह, यहाँ के किसान ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है और समृद्धि भी आई है। खासकर हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ कि जो हमारा किसानों का प्रदेश है और काफ़ी लोगों ने तरक्की की है, कृषि के अंदर भी की है। केमिकल का और फर्टिलाइजर का जो मैं आजकल देखता हूँ, देश का जो बहुत सारे जो विशेषज्ञ बोल रहे थे कि हमारे यहाँ देश में परसेंटेज वाइज एग्रोकेमिकल्स का उपयोग कम है। ओवरऑल देश की एवरेज कम हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब और हरियाणा में इसका बाकी देश से बहुत ज़्यादा है, कई गुना है। और गांव में या छोटे कस्बों में देखता हूँ कि छोटी छोटी दुकानों के अंदर बहुत सारा जो लोग फार्मर्स अपना पैसा इसी चीज़ पर खर्च करते रहते हैं। शिक्षित है नहीं, उनको जानकारी नहीं है और जितना उनको उपयोग में लाना चाहिए केमिकल्स, उससे ज़्यादा वो खर्च करते हैं। एक हमारे यहाँ समस्या क्या है कि लैंड ओनर फार्मर अलग हैं और ठेका प्रथा वाले किसान अलग हैं। ठेका प्रथा वाला किसान 1 साल के लिए ठेके पर अपने खेत को लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के लिए लेता है। उसका होरिजन, उसका टाइम, उसका व्यापार 1 साल का है। वो वही देखता है कि उसको 1 साल में वो अपना पैसा पूरा करना है और उस वक़्त वो जितनी खाद डालनी चाहिए उससे 20-30-40% ज़्यादा खाद डालता है। जो केमिकल डालना चाहिए वो 1 की बजाय 2 पुड़िया डाल देता है। तो ज़रूरत में हमारे जो धानुका ग्रुप हैं या और लोग हैं, पहले भी मैं चंडीगढ़ में एक बार इनके इस कॉन्फ्रेंस में गया था, मैंने यही प्रार्थना की थी कि आप हमारे किसानों को शिक्षित करिए और आपकी जो चेंज हैं, डीलर्स हैं, सब डीलर्स हैं, उनको कहिए कि वो किसान को सही मात्रा में बताएं और किसान को लालच ना दें कि ज़्यादा केमिकल डालने से कुछ ज़्यादा उपज होगी या ज़्यादा फायदा होगा। इससे किसान को नुकसान होता है, उसका पैसा इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है और कोई ज़्यादा विशेष फायदा नहीं होता। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी कंप्रोमाइज हो जाती है। और मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि पिछली बार जब चंडीगढ़ गए थे, इन्होंने 5 वैन चालू की थी किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए। एक अच्छा कदम था और इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि वो इस तरह के किसानों की सहायता के लिए अपनी जो भी CSR से या किसी भी तरह से कोई ट्रेनिंग के लिए, जागरूक करने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम करें। हरियाणा का जहाँ तक है, हरियाणा सरकार किसानों के लिए मैं समझता हूँ कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा जागरूक है, सबसे ज़्यादा योजनाएं हैं। आज हमने पानी बचाने के लिए अलग स्कीम है, हॉर्टिकल्चर के लिए अलग स्कीम है, इंडो इजराइल के हमारे पास 14 के आसपास एक्सीलेंस सेंटर हैं और हमारे पास 3 यूनिवर्सिटी हैं। HAU हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एक वेटरनरी की है, लुआस, और
विभाग भी तरह तरह के काम करता है। किसान की मदद के लिए हम हरियाणा सरकार फसलों की खरीद पर भी इंसेंटिव देती है, डीबीटी से उसकी मदद करती है, भाव टूटता है तो उसमें मदद करती है। सब्जियों के जो फसलों के रेट कई बार कम हो जाते हैं, भावांतर भरपाई योजना हमारी 20-22 सब्जियां, टमाटर, आलू, उसके भाव गिरते हैं तो उसके पैसा हम देते हैं। हमारा मकसद ये है कि किसान की परचेजिंग पावर बढ़े, किसान के आर्थिक हालात ठीक हो। किसान की आर्थिक हालात ठीक होगी, उसमें सभी का योगदान होना चाहिए। जैसे दुबे जी बता रहे थे कि ये देश किसानों का है, अन्नदाता जिसको हम बोलते हैं, अगर उसकी परचेजिंग पावर ठीक होगी तो सभी सारा इकोनॉमी का साइकिल है वो सारा ही चलेगा। अकेला चाहे मैन्युफैक्चरिंग का बेस है, कंजम्पशन का बेस है। और हरियाणा में हमने बहुत ही इनोवेटिव काम किए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमने एक देश में सबसे पहले परिवार पहचान पत्र नाम से योजना बनाई है। हम हर परिवार को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके कितने मेंबर हैं, क्या इनकम है, क्या लैंड होल्डिंग है, कितने पशु हैं, क्या उसकी इकोनॉमी है, और फिर उसको पूछ रहे हैं कि आपकी इनकम किस ब्रैकेट में आते हैं, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, और उससे आपको अपग्रेड करना है 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं। जो उसकी एजुकेशन है, कोई कहता है जी मुझे ये काम कर सकता हूँ, कोई टेक्निकल नो हाउ है, ITI वाला है, ये काम कर सकता हूँ, कोई कहता है कि मैं बिल्कुल लेमैन है, मुझे भेड़ दे दीजिए, बकरी दे दीजिए, हम उसको सब्सिडी पे उसको भेड़ बकरियां देते हैं, भैंस देते हैं, गाय देते हैं। हमारा मकसद ये है कि सोसाइटी के अंदर जो गैप है उसको कम किया जाए, और मोदी जी का जो लक्ष्य है कि गरीब से गरीब आदमी के लिए सरकार की नीतियों का लाभ उसके लिए बने, तो उस दिशा में हरियाणा में समझता हूं कि सबसे पहला प्रदेश होगा एक काम कर रहा है। एग्रीकल्चर के हवाले अलावा सोशल सिक्योरिटी के लिए भी, और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा मंडियां हमारी अच्छी हैं। अभी भी हम गन्नौर के अंदर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी 7-8 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से बनाने जा रहे हैं। यहाँ फूलों की मार्केट है, एप्पल मार्केट इधर पिंजौर में है। इसी तरह से जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, बागवानी के लिए हम इतनी स्कीम देते हैं, इतनी सब्सिडी देते हैं। हरियाणा अपने स्टेट के फंड से, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्कीम तो है ही, उसके अलावा हम अपने उससे भी किसानों की हैंड होल्डिंग करते हैं। हमने FPO बनाने का कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। मोदी जी ने 10,000 का टारगेट देश में दिया है, हरियाणा 600 FPO बना चुका है, 1,000 हम बनाएंगे। और अब जो क्योंकि विषय से अलग अलग हो गए हैं, जहाँ तक ये एग्रोकेमिकल्स का, फर्टिलाइजर का है, ये हम इसमें इस चीज़ को आज ये समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर भी जो हम टेस्टिंग करते रहते हैं, 4-5% के आसपास जो है लोगों के सैंपल फेल होते हैं। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि कुछ लोग मैनेज भी कर लेते होंगे। तो इसको टेस्टिंग को हम सुधारेंगे, और इंडस्ट्री से जो सलाह दें जिससे कि जुडिशियस सबके लिए न्यायप्रिय हो, और ये स्पूरियस जो पेस्टिसाइड है ये ना रहे, इसके लिए हरियाणा सरकार क्या मदद कर सकती है, जो भी कहेंगे हम करने के लिए तत्पर है। इसमें चाहे मैं प्रार्थना करूंगा जो मैन्युफैक्चरर हैं वो हमारी FPO से टाई अप करें, हम उनको लाइसेंस देंगे। आप जो अपने डीलर का प्रॉफिट है वो मार्जिन छोड़ के हमारी FPO को दीजिए। उससे क्या होगा कि जो ये आपके प्रोडक्ट की जो विश्वास है वो लोगों को ज़्यादा होगा, और जेन्युइन प्रोडक्ट जो है फार्मर को मिलेगा। आप हमारे आउटलेट खोलना चाहते हैं, हमारे जितने भी हॉर्टिकल्चर के एक्सीलेंस सेंटर हैं वहाँ आउटलेट खुलवा देते हैं आपके। हमारा ये है कि किसान की सहायता के लिए उसकी मार्केट, उसकी इनपुट की कोई प्रोडक्ट है, उसको किसी भी तरह की सहायता करनी है, हम करने के लिए तैयार हैं। हरियाणा बिल्कुल आगे बढ़ के काम कर रहा है, और जितने मैं समझता हूँ कि आज के दिन हमारे से पंजाब बहुत आगे होता था, लेकिन अब प्रोडक्शन में हम आगे हैं। भाव हम सबसे ज़्यादा देते हैं, गन्ने का भाव देश में हरियाणा सबसे ज़्यादा देता है, सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा सब्सिडी हम देते हैं, जो इनपुट पे भी हम सब्सिडी देते हैं। मैकेनाइजेशन के लिए हरियाणा ने मोटे तौर पर अब एक तरह से जो बहुत सारी स्कीम हमने बढ़ाई है कि फार्मर को 50% के आसपास जो मशीनें खरीदते हैं, हरो है, कल्टीवेटर है, या कोई ये मशीन छिड़कने वाली है,
और अब आजकल ड्रोन का आया है, तो ड्रोन के लिए भी हम जल्दी सबसे पहले स्कीम बनाएंगे, जिससे कि जो हमारे क्वालिफाइड, हमारी यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड लोग होंगे, बेरोजगार बच्चे, उनको सर्टिफिकेट दे करके उनको जो ड्रोन की ट्रेंड होंगे उनको फिर जो 50% या 40% हम स्टेट से भी सब्सिडी दिलवाएंगे और फंडिंग का इंतजाम करवाएंगे, लोन का इंतजाम करवाएंगे, ताकि लोगों को रोजगार मिले। ड्रोन हो या कोई और मशीनरी हो, किसी भी तरह का काम हो, हरियाणा इस दिशा में मैं कहता हूं कि सबसे तेज गति से काम करने वाला प्रदेश होगा। और हरियाणा ने वैसे भी, हमने जो राइट टू सर्विस के तहत एक लोगों की सेवा करने के लिए सरकारी मशीनरी का एक ठीक उसके ऊपर नकेल रहे, हमने बहुत सारी लगभग 500-600 सर्विसेज को नोटिफाई कर दिया है कि आपको ये सेवा करनी है, किसी का कोई भी काम होना है, कोई बुढ़ापा पेंशन का, सर्टिफिकेट का, कास्ट सर्टिफिकेट का, कोई भी है, तो इतने टाइम में करना पड़ेगा। और हाँ, जो नहीं करेगा तो उस पर हमने कमिश्नर लगाया हुआ है कि वो उसको कर्मचारी को सजा दे सकता है। अच्छा, ये स्कीम कामयाब नहीं हुई थी, अब हमने क्या किया कि ऑटो अपील सिस्टम शुरू कर दिया है। जो अधिकारी नहीं करेगा तो जो बेनिफिशियरी को अपील करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर ऑटो अपील कर देगा और उसका रिकॉर्ड में आ जाएगा कि इस अधिकारी ने, इसको 7 दिन का टाइम था, 5 दिन का टाइम था, जो सर्विस देनी थी आम पब्लिक को वो नहीं दी है, उसके ऊपर चली जाएगी। इसी तरह से वो हर लेवल पे 5 दिन, 7 दिन, 6 दिन का टाइम दिया है। ऑटो अपील सिस्टम लागू करने वाला हरियाणा मेरे समझता हूँ कि पहला प्रदेश होगा, जिससे चीजों को व्यवस्थित करना, पारदर्शी तरीके से करना और जनता के लिए हम जो जितनी भी सरकारी मशीनरी है या अधिकारी हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, लोकतंत्र में सब जनता के सेवक ही होते हैं। तो हरियाणा इस दिशा में सबसे तेज गति से काम कर रहा है और मैं समझता हूं कि आप लोगों ने मुझे जो मौका दिया है, जो भी आपके सुझाव होंगे इंडस्ट्री के, और वो हम अब जो लागू करेंगे। और दूसरा ये है कि आपसे मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप भी इस दिशा में काम करें कि हमारी किसान की आर्थिक हालात सुधरे, किसान की बाइंग पावर बढ़े, किसान प्रगति करेगा तो देश प्रगति करेगा। इस तरह से आपका व्यापार भी प्रगति करेगा, आपका प्रोडक्ट भी ज़्यादा बिकेगा, आपका पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर जो भी कारोबार करते हैं उसका हमारा ज़्यादा उसी पे है कि बाइंग पावर किसान की कितनी है। मैं अभी भी समझता हूं कि हमारे हरियाणा में तो किसानों की बाइंग पावर है, लेकिन मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में ऐसे लोग मैं देखता रहता हूं कि आज तक जिन्होंने ना तो मैकेनाइजेशन का कोई तरीका देखा है, ना कोई उनके घर में खेत के अंदर बिजली का यूज कर रहे हैं, ना कोई सिंचाई की कोई मैकेनाइजेशन है, ना उनके बिल्कुल रॉ जैसे हरियाणा में आज से 40 साल पहले खेती होती थी उसी तरह की खेती देश अभी भी कर रहा है। तो आपकी जो ये जरूर है कि मैं अपने प्रदेश के बारे में हरियाणा पंजाब में समझता हूँ कि इसका पेस्टिसाइड का जुडिशियस जो है कंजम्पशन हो, क्योंकि ओवरऑल एवरेज देश की तो कम हो सकती है, लेकिन मुझे ये हंच है कि हमारे यहाँ जो है किसान खासकर ठेके की वजह से इतना ज़्यादा वो डालते हैं पेस्टिसाइड जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होने शुरू हो गई है। और इसके लिए हमने फिर दूसरा प्राकृतिक कृषि का अलग से विंग बनाया है और नेचुरल फार्मिंग का अलग बनाया है, और उसको भी हम धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा बैलेंस बने कि जिसके अंदर दोनों तरह का प्रोडक्ट तैयार हो, दोनों तरह की मंडी हो और कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट चाहिए वो उसको मिले। और इसी दिशा में मैं आपसे अपील करता हूं कि जो CII मेन हमारे एक फोरम है, तो किसानों के लिए आप इतने ध्यान देते हैं, किसानों की चिंता करते हैं, किसानों के उत्थान के लिए आप भी समर्पित हैं, मोदी जी समर्पित हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्पित है, और प्रत्येक आदमी ये चाहता है कि किसान तरक्की करे। इस दिशा में हम मिलकर काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Hardik Dhanyavad, sir. And ladies and gentlemen, now for the summing up remarks, may I invite Mr. R.J. Agarwal, Chairman FICCI, Crop Protection Committee and Chairman Dhanuka Group. मित्रों, एक बार फिर नमस्कार। अब सब लोग घड़ी देख रहे हैं कि भाई अब चाय की जगह दूसरा टाइम
शुरू हो गया है। देखिए, मेरे को समिंग अप और धन्यवाद प्रस्ताव पेश करना है। तो सबसे पहले तो मैं अपने माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और उसमें से एक सबसे बड़ी बात टेक अवे थी जो हमने उनसे प्रार्थना की थी कि वे पेस्टिसाइड पर 18% जीएसटी है जो 5% होना चाहिए। तो उन्होंने कहा एज ए वकील मैं आपकी बात फाइनेंस मिनिस्ट्री जीएसटी काउंसिल तक पहुंचा दूंगा। तो आज हमें कम से कम उन्होंने जो एश्योरेंस दिया तो उनकी ताली बजा के हमें स्वागत और धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने ये हमें विश्वास दिया कि हम ये काम करेंगे। इसके बाद हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री जी बोल रहे थे, आज हमारे हरीश मेहता जी ने बात एक प्रेजेंट की थी, मिथ वर्सेस परसेप्शन। आज हमारे हरियाणा के भी किसान बैठे हैं, पंजाब के भी किसान बैठे हैं। आज जो अच्छे अच्छे पेस्टिसाइड हैं जो 10-20 ग्राम में यूज होते हैं और जिनका रेट होता है 10,000 रुपए किलो, तो मुझे तो नहीं लगता कि आज कोई किसान कोई इक्का दुक्का या कुछ हो सकते हैं जिनको समझ नहीं हो, लेकिन आज उनकी इतनी कीमत है कि वो कोई अनपढ़ किसान यूज कर ले, समझदार किसान मैं नहीं समझता। आज जो कीमत है फर्टिलाइजर की या पेस्टिसाइड की, आपने जो एक बहुत बड़ी बात कही कि अज्ञान है किसानों के बीच में, और आपने जो 5 गाड़ियां हरी झंडी दिखा के हरियाणा में रवाना की थी, उन्होंने हरियाणा के गांव-गांव में जाके गांव किसानों के बीच में जागृति करी है कि कोई भी सामान खरीदे तो बिल से खरीदे, बिना बिल कोई सामान ना खरीदे। तो आज किसानों को जागरूक करने का जो काम हरियाणा में माननीय कृषि मंत्री दलाल साहब की लीडरशिप में शुरू हुआ है और जो हरियाणा में तरक्की के रास्ते उन्होंने खोले हैं, उसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। तो मेरा ख्याल है हमें उनका भी तालियों से स्वागत करना चाहिए। अब वैसे तो सुबह से बहुत सारे स्पीकर हैं, लेकिन मैं कुछ बातों पर गौर करना चाहूंगा कि जिसमें लोग जीस्ट क्या है आज के डिस्कशंस का। जितने भी सारे लोग यहां बैठे हैं कृषि से जुड़े हुए हैं और किसानों के लिए काम कर रहे हैं और किसान भी हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स भी हैं, अलग अलग विभाग के साइंटिस्ट हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, मीडिया के लोग हैं। आज हमारे ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग, और यहाँ ड्रोन भी डिस्प्ले के ऊपर है जिसका सर्टिफिकेट अभी एविएशन मिनिस्टर सिंधिया साहब ने दिया था। तो आज एग्रीकल्चर ऐसा विषय है जो पीछे हमने दिन में भी बात की कि हमारे यहाँ इसमें बहुत पोटेंशियल है। हमारी एग्रीकल्चर 3 गुना हो सकती है अगर हम प्रति हेक्टेयर चाइना के बराबर पैदावार कर लें। दिन में एक बात आई थी, हम पूरे देश की एवरेज लेते हैं। हमारे थिंक साहब ने कहा था कि पंजाब हरियाणा की एवरेज विश्व की जो अच्छी एवरेज है उसके बराबर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हरियाणा पंजाब ने आज बहुत तरक्की की है, लेकिन जैसा मंत्री जी कह रहे थे कि आज एमपी चले जाओ या दूसरे राष्ट्रों में चले जाओ, तो वहां तरक्की की लहर नहीं पहुंची। और आज किसान कहीं भी है, किसी भी प्रदेश में है, लेकिन है तो भारत का किसान, तो उसको फायदा पहुंचना चाहिए। आज हर आदमी जो यहां बैठे हैं उनकी सोच यही है हमारा देश प्रगति करे और किसानों का फायदा हो। आज कुछ लोगों ने जैसे बात की कि हमारे खाने में जहर है, तो ये बात बताई गई कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने अब तक कुछ 2.5 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट करे और उनमें सिर्फ 2% सैंपल में रेजिड्यू एमआरएल से ऊपर पाया गया, जबकि यूरोप अमेरिका में भी जाएं तो वो 4% से ज्यादा रेजिड्यू मिलता है। तो आज लोगों को
इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे मिथ लोगों ने गलत परसेप्शन पाल लिए हैं। कम से कम इस किस्म के प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे कि हर स्टेट की कैपिटल में करें और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लेके जाएं किसानों के बीच में, ताकि लोगों को सच्चाई पता लगे कि सच्चाई क्या है। और फिर एक सुबह पहले सेशन में एक बहुत हमारे विजय सापला जी थे, उन्होंने पंजाब में कहा कैंसर ट्रेन। ये सब एनजीओ का बनाया हुआ एक जाल है लोगों में भ्रम पैदा करने का। भटिंडा से एक ट्रेन जाती है बीकानेर, और बीकानेर में महावीर जैन हॉस्पिटल है जहां सिर्फ कैंसर के पेशेंट का फ्री इलाज नहीं होता, उनके साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको भी रहने का और खाने का फ्री इंतजाम है। अब लोग कहते हैं पंजाब में कैंसर केसेस, आज हिंदुस्तान में मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम जहां कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं है, वहां सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस हैं। पंजाब का नंबर हिंदुस्तान में 24वें नंबर पे आता है कैंसर केसेस में, फिर भी पंजाब में कैंसर, पंजाब में कैंसर, पंजाब में कैंसर। किस किस्म की गलत प्रचार हमारे देश में होता है। और जैसे एक झूठ को लोग 100 बार बोले तो लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। और हमारे वैज्ञानिकों से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जब भी कोई इस किस्म का मिथ्या प्रचार हो तो वो लोगों के सामने सच्चाई लाने की कोशिश करें कि सच्चाई क्या है। आज हमारे मंत्री जी ने भी क्वालिटी की बात करी, कहा शायद 4-5% सैंपल खराब हो। मैं आप सब लोगों का ध्यान, हम सब लोग ज्यादातर यहां टैक्स पेयर बैठे होंगे, मैं एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। और हमारे अंबर दुबे साहब ने तो इतना फ्रैंक और सच्चाई से बात करी, नो हैप्पी दिवाली, नो हैप्पी होली। मैं उनके लिए भी तालियां बजवाना चाहता हूं कि जितना फ्रैंक और स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बात करी। लेकिन आज पूरे देश में हैप्पी होली और हैप्पी दिवाली के बिना बात बनती नहीं है। आज सैंपलिंग सिस्टम की बात करोगे, हमारे यहां सैंपलिंग कैसे होती है। इंस्पेक्टर का कोटा बना हुआ है कि आपको इस महीने या साल में इतने सैंपल लेने हैं। और जैसे इंस्पेक्टरों का सिस्टम होता है, इंस्पेक्टर राज में सब जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जब सैंपल लेना होता है, डीलर की दुकान पे जाता, भैया अब आपका नंबर आ गया सैंपल का, तो उठा के वो बायर का, सिंजेंटा का, धानुका का, यूपीएल का, अच्छी कंपनी का सैंपल आगे रख देता है और इंस्पेक्टर वो सैंपल लेके चला जाता है। अभी हमारे किसी मित्र ने कहा कि पिछले 8-10 सालों में या 5 साल में 3,38,000 सैंपल हुए, जिसमें से सिर्फ 1.17% सैंपल फेल हुए। मेरे पास आरटीआई में डेटा है जहां 90% सैंपलिंग सिर्फ देश की जो 100 अच्छी कंपनियां हैं उनकी की जाती है। तो ये टैक्स पेयर मनी के बर्बादी है और ये सैंपलिंग सिस्टम किसी काम का नहीं है। इसमें रोबस्ट बदलाव की जरूरत है अगर हम सही मायनों में किसानों के मित्र हैं। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही थी, दलाल साहब पंजाब में भी और वहां चंडीगढ़ में जब 5 गाड़ियां लॉन्च करी थी किसानों की जागृति के लिए, और आज भी आपने कहा हरियाणा में आप किसानों के लिए जो भी कुछ अच्छा है करने के लिए तैयार हैं। अगर सभी प्रदेशों में ये चीज आ जाए कि हमको सच्चाई सामने लानी है, इस सैंपलिंग का क्या फायदा है जो इतनी लेबोरेटरियों में बस जो कुछ हो रहा है वो इशारे में काफी है। ये कुछ ही स्टेट में है, सब जगह नहीं है। आज बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां बहुत साइंटिफिक काम होता है। आज सुबह भी बात हुई थी, आप किसी बात को जनरलाइज ना करें। जहां गलत है वहां गलत है और जो ठीक है वो ठीक है। आज हर किसी को गलत कहना सही नहीं होगा। जो ठीक है, आज हमारे
देश में बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां बहुत सिस्टमेटिक काम है और वहां कुछ इस किस्म की कोई गड़बड़ नहीं है। लोगों ने कहा पेस्टिसाइड से सुसाइड होते हैं, तो ये भी बताया कि 93% केसेस शहरों में होते हैं और वो लोग अपने आप को फांसी पे लटका लेते हैं। और प्रचार ये होता है पेस्टिसाइड से सुसाइड, पेस्टिसाइड से सुसाइड। अरे लोगों में जानकारी नहीं है किसी प्रकार की, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ऑर्गेनिक की बड़ी चर्चा है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग। साहब नेचुरल फार्मिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। हमारे अंबर दुबे जी ने कहा यहाँ 700 रुपए की चाय मिलती है, बाहर जाके 5 रुपए की चाय मिलती है। तो आज गरीब की रोटी के कोष पे ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होनी चाहिए। आज श्रीलंका का क्या हाल है सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे 5 स्टार होटल, निच मार्केट। आज यूरोप में, अमेरिका में कितना ऑर्गेनिक फार्मिंग है? 1.5%। हमारे देश में 1% से कम। अब जिसको करना तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करे, कौन मना करता है? तो आज हमको किसी के ऊपर कोई बात जबरदस्ती थोपनी नहीं चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसको जैसे अच्छा लगे, जिसका जैसे पेट भरे, उसको उस प्रकार से काम करना चाहिए। हमारे ल्यू साहब ने इंडियन रजिस्ट्रेशन पे सुबह हमारे कोटेबाग के जो और कुप्पा स्वामी साहब ने रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में भी चर्चाएं करी। तो आज जो हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो अंबर दुबे साहब जैसे लोग वहां बैठ जाए तो जितनी भी वो परेशानियां हैं, मेरा ख्याल है बहुत जल्दी हमारी परेशानियां हल हो सकती है। तो मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, अंबर दुबे जी को थोड़ा सा हमारा CIB-RC का चार्ज दिया जाए, ताकि हमारी जो रजिस्ट्रेशन की समस्याएं हैं वो दूर हो सके। हमारे IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सुरेश मिश्रा जी ने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था कि उन्होंने 9 स्टेट के 540 लोगों के बीच में और कितने ब्लॉक्स में सर्वे किया, और उन्होंने बताया कि कितने लोगों को पता है कि कहां कितने % नकली माल हर फील्ड में बिक रहा है गांवों में। तो आज जो शहरों के अंदर है वो ज्ञान गांवों में जब तक नहीं ले जाएंगे। अब मुझे देखो, वो भी दिखा रहे थे, जागो ग्राहक जागो। टीवी पे ऐड आता है, सोना खरीदते हुए हॉलमार्क का निशान देखो और बिल से खरीदो। मंत्री जी आपसे निवेदन है, ये जागरूकता किसानों के लिए क्यों नहीं? आज पूरे देश में जो टीवी मीडिया है उसकी पहुंच बहुत जगह है। तो अगर आज किसानों के बीच में पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाया जाए, जागो किसान जागो। इस साल 15 मई को शायद विश्व कंज्यूमर दिवस था, उस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फंक्शन किया था और हमने जागो किसान जागो प्रोग्राम शुरू किया, और उसके बाद हरियाणा से शुरुआत की, और हम धीरे धीरे देश के हर राज्य में जागो किसान जागो, हम लाखों पोस्टर लगवाएंगे, लाखों लिटरेचर बंटवाएंगे किसानों को जागरूक करने के लिए कि भाई आप धोखा मत खाओ। सस्ता रोल एक बार नहीं, सस्ता रोल बार बार, महंगा रोल एक बार। तो सस्ते के लालच में अब मंत्री जी ने कहा जी किसान दुगना डाल देता है। अरे वो सही कंपनी का तो उसको दुगना डालने की जरूरत ही नहीं है। वो नकली माल होता है, वो दुगना डाले, तिगुना डाले, 4 गुना डाले, उसका कोई भरोसा ही नहीं है। तो आज अगर असली चीज है, अगर डॉक्टर आपको कहता बुखार है, क्रोसिन की आपको 3 गोली खानी है और क्रोसिन की गोली असली है, तो आपको 3 से 6 गोली खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सही कंपनी का पेस्टिसाइड है तो रिकमेंडेड डोज ही आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। हमारे दलाल साहब बैठे भी हंस रहे हैं, हमारे थीम साहब शायद कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। सही कंपनी का माल इस्तेमाल करें तो आप बताइए, डबल ट्रिपल डोज डालनी पड़ती है या जो रिकमेंडेड डोज है वही डालते हैं? आप रिकमेंडेड डोज डालते हैं, और जब नकली होती है तो कई गुना। तो आज
हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप भी अपने गांव में किसानों को जागरूक कर सकते हैं कि सस्ते के लालच में मत जाइए। अब देखिए, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय 7:06 हो गए, नहीं मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। नहीं, देखो आप किसान भाई है, नहीं, मैं आप लोगों से बस लास्ट में सबसे यह प्रार्थना करूंगा कि हमने ये तिरंगा लगाया है, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी जिंदगी लगा दी। आज वो 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं और उनका एक ही ध्येय है कि हमको नया भारत बनाना है, देश की आमदनी $5 ट्रिलियन ले जानी है, एग्रीकल्चर की आमदनी $1 ट्रिलियन से ले जानी है, किसान की आमदनी दुगनी करनी है, किसान की आमदनी बढ़ानी है। तो जितने भी हम लोग यहां बैठे हैं, हर आदमी ये कहे कि मैं जहां पर भी हूं वहां अपना काम ईमानदारी से और देश के भले के लिए करूंगा, तो आज देखिए हमारा देश किस प्रकार प्रगति कर सकता है। हमारे देश में बहुत गुंजाइश है, हमारे पास यंग मैन पावर है, टैलेंटेड मैन पावर है। सिर्फ जहां जो कमियां हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। और हमें अगर अंबर दुबे जी और हमारे दलाल साहब जैसे लोग मिल जाएं तो ये पूरे देश का नक्शा बदल सकते हैं। पूरे देश का जो हैप्पी दिवाली हैप्पी होली है वो शायद बदल जाए। तो इसी बात के साथ मैं सबसे निवेदन करते हुए और सबका धन्यवाद करते हुए, पूरे देश से हमारे वाइस चांसलर्स, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, अलग अलग जगह से फार्मर्स, सब लोगों ने पार्टिसिपेशन किया और फिक्की ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो फिक्की की लीडरशिप और सारी टीम, होटल वालों ने भी हमें बहुत सर्विसेज दी, जितने भी स्पीकर्स आए, मैं सबका धन्यवाद के साथ अपनी बात को विराम देता हूं, समाप्त करता हूं। और जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहें, राष्ट्र हित में, किसान हित में कभी भी काम करना चाहे, मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। और जो सेवा मैं कर सकता हूं, मैं किसानों के हित में आखिर दम तक उनको सही माल मिले और नकली माल पे कंट्रोल हो, मैं काम करता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much indeed, sir, for the summing up remarks and for kindly proposing the vote of thanks. I once again take this opportunity in thanking the Honorable Minister and other dignitaries for sparing the time and addressing the August House present here. And ladies and gentlemen, with that we close the proceedings of the 11th edition of the Agrochemical Conference, inviting all of you to join us next year at the same venue for the 12th edition of Agrochemical Conference on 18th of July 2023. And may I now invite all of you to kindly join us for drinks and dinner. Have a wonderful evening ahead. Safe journey home. Good night and namaskar.